कृष्ण माता जी इस गांव में आपका प्रेम सबको मिले और यहाँ से पूरे कलकत्ता में पूरे बंगाल में आपके प्रेम की शक्ति, हमारी कुंडल माँ की शक्ति, कुंडली माँ की शक्ति पूरे बंगाल में जितने भी अमानुष लोग हैं, तांत्रिक, मांत्रिक, नक्सलवादी, माओवादी, वो सब समाज जो सबकी स्त्री है, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उन सब की विजय हो पूरे बंगाल। माँ जो हमें आपने अपने चरण कमलों से आशीर्वाद से गुरु कर दिया है और आज हमारे शरीर में कुंडली के रूप में वास करती है, रोमों से आनंदित करती है, उसके लिए वहां हमारे पास शब्द नहीं। हम कैसे किस विधि आपको धन्यवाद करें। बस हमारी एक ही विनती है कि पूरे संसार में जहां जहां भी मां तेरे प्यारे बच्चे हैं और केवल तुझको ही, अपनी कुंडली मां को ही अवतार मानते और अपने शरीर को आपको समर्पित कर दिया। जिन्होंने महादेव को ऐसा परम पद, गुरु पद दीजिए कि उनके बोलने से संसार में बदलाव आए, उनके हंसने से पूरे विश्व में बदलाव आए, उनके हाथ के खाना खाने से पूरे
पुनर्भी मानव जाति में बदलाव आए और हर गांव में, हर शहर में उन बच्चों की भी पूजा हो, उन स्त्री पुरुषों की सबकी पूजा हो जो आपको, केवल आपको ही मानते हैं, आपको ही शरण में रहते हैं। ऐसे जहां भी महायोगी हैं, योगिनी हैं, उन सबको आप आगे लाइए। जितने ट्रस्ट हैं ये सब बंद हो, जितने सेंटर हैं सब बंद हो। अब केवल वही लोग आगे आए, चाहे वो झोपड़ी में रहते हैं और चाहे वो बहन रहे, और वो दुनिया को आपने जो आशीर्वाद दिया है, देवताओं ने जो आशीर्वाद दिया है, उसको लेकर के पूरी दुनिया को बदले और पूरे संसार में अधर्म के सामने खड़े हो जाए और जो सत्य धर्म है, विश्व निर्मल धर्म, उसको आगे बढ़ाएं। और आपके इस कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए जितनी भी मीडिया है वो सब आपके चरणों में झुक जाए। जो आपके महान बच्चे हैं उनके चरण कमलों में झुक जाए और पूरे संसार में सत्य विश्वास। मां यहाँ जो भी कार्यक्रम आप होने जा रहे हैं उनमें आपका पूर्ण आशीर्वाद है। सभी देवता हम सबके साथ फूलों की वर्षा करें और उस एरिया को, बच्चों को पूर्ण आशीर्वाद मिले, जिससे वो एक महान गुरु, महान गुरु बने और संसार को सत्य में बने। हमारी पूर्ण हृदय से विनती है, देवी मां स्वीकार की, कुंडली मां हमारी विनती को स्वीकार की। हम शरणागत मां हमें शरण। बार बार जब भी आप बंधन में बार बार विनती करें, मां हमें शुद्ध इच्छा दी, पहली बंधन शुद्ध इच्छा दी, हम तेरे ही प्रेम में रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरे में मां हमें शुद्ध कर्म दीजिए, बोलने से अच्छा हो, चलने से अच्छा हो और धरती मां पवित्र हो जाए हमारे पैरों से, क्योंकि जिस इंसान के पैरों से कुंडली का बहाव रहता है वो बहुत उच्च कोटि का इंसान है, चाहे दुनिया में कहीं पर। और तीसरे में मां हमारा चित्त हमेशा तेरे निराकार रूप में हमेशा आनंदित रहे, आनंद में रहे, हमें संसार की किसी भी चीज में चित्त ना लगे। कार्य करें तो चित्त आप में रहे, कहीं चले तो चित्त आप में रहे। पहले कि मां पूरे विश्व में अब आपने पवित्रता स्थापित की है, इसके लिए हम सब हृदय से आए। श्री माता जी जो हमें सुबुद्धि दी, शुद्ध इच्छा दी और ब्रह्म ज्ञान दिया, उसके लिए हम हृदय से आए। मां जो हम सबको, पूरे विश्व को संतोष दिया है और सत्य धर्म जागृत किया, उसके लिए हृदय से आए। श्री माता जी हमें सच बोलने की शक्ति दी, सच में चलने की शक्ति दी और सच्चे लोगों को परखने की शक्ति दी, उसके लिए हृदय से आए। श्री माता जी जो हमें प्रेम की वाणी दी है, पवित्र दृष्टि दी है, पवित्र हमारे सुनने की शक्ति दी, उसके लिए हृदय से आए। श्री माता जी जो पूरे विश्व को निर्विचार करती है, हर इंसान अब तेरी तरफ देख रहा है, अपनी कुंडली मां को देख रहा है और उसी में आनंद ले रहा है, उसके लिए हृदय से आए। श्री माता जी जो हमें निर्विकल्प स्थिति दी है, हर समय हमारा सोते वक्त, जगते वक्त चित्त आनंद में रहता है, सहस्रार में रहता है। मां उसके लिए हम जन्म जन्मांतर आपके ऋणी हैं। आपने हमें चुना संसार में से अपने कार्य के लिए। अब मां हमें शरण में रखना, हम आपके अबोध बच्चे, हम अबोध बच्चे हैं मां,
हमसे कोई भी ऐसी भूल हुई हो मन कर्म वचन से यात्रा में, तो हम सबको माफ कर दीजिए। श्री माताजी प्रणाम करें। तो आप सब लोग को बड़ी मेहनत की और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ कैसे पहुंचे। तो आपके हृदय की बात थी इसलिए हम पहुंच गए। और हमने माँ को भी ऐसे देखा था और माँ ने बात कही थी कि जब आप मेरे बन जाएंगे, जब आप मेरा कार्य करेंगे, मेरे जैसे हो जाएंगे, तो दुनिया आपकी पूजा होगी और मेरे जैसी ही पूजा होगी। इस सहयोगी नहीं समझते। आज हम सब लोग बहुत उच्च कोटि के माने बैठे हैं और साक्षात अवतार में हम पढ़ रहे हैं। अगर हम आज भी ये कहते हैं नहीं पीछे बैठो, चुप रहो, बोलो, इसका मतलब हमने श्री माताजी को समझा नहीं। परमात्मा आते हैं, शरीर धारण करते हैं, अपना कार्य करके और अपने बच्चों को आशीर्वादित करके और फिर शरीर छोड़ देते हैं। अब उन बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो वास्तव में उस संस्कार में जो माता पिता ने दिया है उसमें चलते हैं या नहीं चलते। ये अब हमारा करना। बच्चे समझते हैं एक माँ को बचपन में मानता है, एक माँ पैसा दे देती है खाने को देती मानता है, एक माँ को चाहे माँ गरीबी में रहे चाहे किसी में रहे वो हमेशा ही मानता है। तो माँ जब शरीर छोड़ती है पिता तो उसको आशीर्वादित करते हैं कि तेरे लिए कभी कमी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम सब लोगों को परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। हम वास्तव में ही माँ के लक्ष्यों पे आ जाते हैं तो फिर हम ही गुरु और हम ही अपना आगे बढ़ाते हैं, हम ही अपना पूजा करते हैं। देखो उनका शरीर हो गया नहीं, जब आपको दर्शन हाथों से आते हैं उनका शरीर, पैरों से आते हैं उनके पैर, सबसे आता तो सब उनका माला किसको डालेगा, मुंह को डालेगा, कुंडली को तो पहना नहीं, शरीर तो अलग अलग दिखाई देता, फेस अंदर तो एक ही है। तो ये हमारा सौभाग्य है और आप सब लोग बहुत खुश हैं, मुझे मालूम है। और आप सब लोग इतने महान बनेंगे कि आपकी भी ऐसी पूजा होगी जहाँ आप जाएंगे आपको सम्मान करेंगे, इज्जत देगी। और उस समय आ चुका है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मीडिया पकड़ रही है सहयोग को। जिस समय पूरी मीडिया पकड़ लेगी तो आप सब लोग एक महान रूप में पूजा होगी, जैसे श्री माता जी की पूजा होती थी ऐसे ही आप लोगों की होगी। ये मैंने आज से 45 साल पहले रोक दिया था कि जैसे मेरा हम एक बार पंडित तो वहां पे वो लोग कह रहे हैं कृष्ण भगवान का मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण भगवान की बात करनी है, किसी मुस्लिम बात नहीं करनी। तो हम प्रोग्राम दे रहे थे जैसे आए हैं ऐसे सतारा की बात है, बहुत बड़ा मंदिर था। तो वहाँ सब बाल कटा के और उनकी ढहरी थी, बेचारे परेशान, कुछ जेंट्स रहे बीमार हो, वो श्री कृष्णा के मंत्र का जाप करते थे। जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमें जैसे आज आपने किया ऐसे ही बहुत सम्मान दिया। 9 शहर हुए थे वहाँ कोई शहर नहीं था और उन्होंने ऐसे मुझे एकदम माँ की याद आई कि मेरे जैसा ही सम्मान हुआ तो वहाँ। और कोई माँ नहीं चाहती मेरे जैसा हो, वो चाहती मेरे से अच्छा हो। अपनी संतान को दुनिया की माँ चाहती मेरे से ज्यादा पढ़े, मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मैं अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ा। और उन्होंने फिर हमें
हमने वहां इतना पता नहीं क्या तो बोला, और बस मैंने ये कहा हमने कि श्री माता जी आज तो डंके की चोट पे बोल रहा है आप भी, और ये जवान तेरी हो जानी चाहिए आज, ये मेरी नहीं रहनी चाहिए, ये मेरी बात खत्म हो है। क्योंकि जब बाल्टी में एक कटोरी का पानी डाल दो तो उसे उसमें पानी में निकाल लो, जो का तो निकल ही नहीं सकता, तो मिक्स हो गया। ऐसे ही जब हम समर्पित हो जाते हैं, अपनी कुंडली के अनुकूल हो जाते हैं, तो हम ये शरीर माई है, ये देवताओं का शरीर है। हमारा शरीर तो पहले था, देवता थे ही नहीं, इसमें कुंडली जो बैठी हुई थी वो देख रही थी हम क्या करना चाहते हैं, क्या इच्छाएं। तो ये भी हमें जो मिला है पहले जन्म में कोई अपार भक्ति कर गया है क्रम मिला। तो इसलिए उन्होंने मुझे इतना क्या किया क्या नहीं किया मैं बता नहीं सकता, 9 से जुड़े। और वहां पे प्रोग्राम था, हमने क्या पैगंबर साहब और क्या नहीं सब कुछ बोल दिया। जब हम लोग वो वीडियो, मेरे पास उस समय कैमरा नहीं था, तो उन्होंने वीडियो बनाया और पूरे महाराष्ट्र में घूमे। तो ये आप सब लोगों को आशीर्वाद मिला है, अब इसको बढ़ाए रखें। और ये बच्चे जो हैं ये आपके ये गणेश का युग है, इनको बस देखने की जरूरत है, अपने आप ही उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनको आशीर्वाद है जन्म से, बाई बात ही। तो इसलिए आप सब लोग बहुत अच्छा लगा, परमात्मा आपको आशीर्वादित रखे और आप एक महान गुरु बने। जब भी आप खाना बनाए कुछ भी करें तभी कहने की माँ आशीर्वाद। अब आप अपनी कुंडली माँ से करें, ये फोटो यहाँ तो है, बाकी जगह नहीं है, खेत में नहीं है, तो वहां क्या करें। तो अब हमें निराकार में जाना है, जितना आपका निराकार रहेगा अभी साथ इसको खत्म हो गए हैं, फोटो हो सकता नहीं रहे, अब हम दोबारा दे जाएंगे, फिर बनवाएंगे, या यहाँ भी कोई होगा तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कंप्यूटर पे बैठ के और उसको प्रिंट नहीं करता, ठीक है ना। और नहीं भी फोटो है तो आप आकाश को देख के भी कर सकते हैं। हाँ, सागर है। अब वो अब आपकी कोई बात हो बताए प्रोग्राम में आपने আপনি এখানে এসেছেন অতি আমাদের অতি আমরা মানে বলার কোনো ভাষা নেই, আমার আর কিছু বলার নেই। मैं देखती हूँ कि हमारे अंदर क्या पाए उनको बोलने का कोई बात नहीं है। इतना खुश है, इतना खुश है। वो तो मुझे भी मालूम था कि आपको खुशी के আমরা মনে মনে চেয়েছিলাম মাঝে যে মা বইতে যারা একবার ওদের আসে, কিন্তু পরে কিন্তু কাউকে বলার সাহস হয়নি কথাটা, কিন্তু মাতাজি ঠিক শুনে নিয়েছে মনের কথাটা, আর আমাকে সব সত্যি করে দিয়েছে। সাহস হয়নি মনে যে বলে বলে पहले दिन वो चेतन को बोले थे क्या कौन है चेतन। अच्छा ये चेतन, अच्छा मैं सोच रहा कोई जेंट्स चेतन है, चेतन बिटिया का नाम चेतन है। अच्छा तब बोले कि क्या गुरुजी को आने के बाद से पूरा रो रही थी। दीदी आप मालूम नहीं हम हर जगह जा रहे हैं, हमें ये नहीं है किसी की लंबी कार में जा रहे हैं और वो उसके घर में, मैं घर में इसलिए ताकि मुझे थोड़ा सा कब्जा कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं, लेकिन मैं होता नहीं। श्री माता जी कुछ करते थे तो, लेकिन माँ चोरी से निकल जाती थी वहां से। जब लोग आते थे ना आप जैसे कभी कभी तो रिक्शा लेकर भी निकल जाते थे, किसी को पता ही नहीं लगता था कहाँ गई है, तो हम भी देख लेते माँ और हमें ऐसे ऐसे लोग बोल देते रास्ते में बातें नहीं कर रही थी। तो एक लेडीज आई और वो कहने लगी कि मैं हाथ जोड़ के विनती है आप मेरे घर में आएंगे,
तो बहुत सारे लोग थे मेरे साथ, तो मैंने क्या आएंगे कि नहीं आप नहीं आएंगे, बड़े बड़े आदमी है ना आपके साथ, ये बड़ी जात के हैं। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं उस गांव में रहते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर है, और जब रेली खत्म होगी तो वहाँ से आधा किलोमीटर है। तो कोई बात नहीं, हम आएंगे, नाम बता दो। तो मैंने मेरे साथ गाड़ी चला रहा लड़का सेट हुई, मैंने उसको नाम लिखवा दिया। तो हम जब रेली पूरी हुई, हमने कहा भाई हम 15 मिनट में आते हैं, जरा कहीं। तो कहने लगी थी नहीं अब कहीं नहीं जाना है। तो एक दोनों लेडीज देख ली थी, तो बेचारी छोटे काम करती थी, गरीब नहीं थी एक तरह से, लेकिन उनकी नजर में गरीब थी, मेरी नजर में गरीब नहीं थी, क्योंकि जब वो बात कर रही थी तो मेरा चेतन बढ़ रहा था, तो मुझे पता लग गया तो ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो जब हम नहीं माने, हम चल दिए, तो फिर वो गाड़ी लेके दूसरे लोग भी मेरे साथ चल दिए। जब हम पहुंचे, छोटा सा मकान था उसका, और वो मुझसे देखते तो मैंने बुलाया, तो बता नहीं सकते खुशी हुई कि ऐसे लोग आते हैं किसी गरीब के घर, छोटे आप कैसे आते हैं। जब उसी से आपको चेक कर लिया मनमान छोटा है, और फिर उसके बाद में हम रात को बिछाई तो उससे छोटे बच्चे एक किराया 50 महीने और बराबर 500। आज उसका मकान बन गया और बड़ा ऐसे सामान यहाँ तो मार्केट से खरीद खा लेते हैं, चाहे कम तो उनके यहाँ गए तो एक हाथ दूध नहीं, तो कोई तो छुपा डाल ऐसे कर रहे हैं, कोई कोई आटा लेके आ रहे थे, कोई गुड़ लेके आ रहे थे, कोई चूड़ा लेके आ रहे थे, और हम देख रहे थे जगह छोटी है, भजन और हम करीब 20-25 गांव के लोग हो गए, तो सब जो बनाया वो खाया हमने। तो फिर हमने किसी आदमी से कैसे कैसे तो उसने हमें बताया, तो फिर हम देख सब जगह हमारी नजर रहती है, बताते हैं हम देखते हैं कि आपको कैसे खर्चा गया। फिर मैंने बच्चों को और वो मेरे साथ बच्चों को ये नहीं और मजबूत थे सब बच्चों के मन तो वो तो ठीक है, लेकिन हमारा तो भगवान तो इसलिए हम सब और जहाँ प्रेम से बुलाते महाराष्ट्र में फोन करते क्या हम जाना पहचाना खाना कुछ नहीं, खाना सब खाते हैं, बनाए रोटी बनाए, थोड़ा चाय बने, तो वो प्रोग्राम 11 बजे का वो कितना दिन है स्कूल प्रोग्राम ले आते हैं, फिर खाते 10 मिनट लगेगा, हमें निकलना पड़ेगा। नहीं वहाँ से जब हम आए तब उसके बाद 12 बजे से 1 बजे, 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे और एक टेबल के बाद स्कूल है। तो या तो ऐसे करें गुरुजी, अगर यहाँ से 10 मिनट का, अगर 5-10 मिनट के अंदर खा सकते हैं तो खा ले, अगर समय लगेगा तो फिर नहीं खा, टाइम तो लगेगा, तो छोड़ जाए, क्योंकि सभी लोग खाएंगे, टाइम तो लगेगा। या तो
अगर वो वेट कर ले तो ठीक है, मना कर दे। स्कूल वाले वेट करते लोकांचं चित्त इतकं आजकाल विचलित आहे। पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु अपने आप को मानते हैं वो सभी को उजाला है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और तब आपको 51,000 के टैक्स से नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तर ह्या संसाराचा सर्वनाश समोर आहे, तेव्हा आपण आजपर्यंत जे व्यर्थ वेळ घालवत असतो, परमेश्वराच्या नावावर सुद्धा आता व्यर्थ वेळ घालवला आहे। जर परमेश्वरच मिळवायचं तर का म्हणून घेऊ नये, जर परमेश्वराचं दर्शन मिळवायचं तर का घेऊ नये, असा एक आपण विचार केला। जर आपल्याला ते आहे, आपल्यामध्ये ती संपदा आहे, ते आपल्याजवळ सगळं काही असताना मग आपण आपला सर्वनाश का करूया, त्याची व्यवस्था का होऊ द्यायची? जेव्हा आम्ही समर्थ होऊ शकतो, आम्ही इतके शक्तिशाली होऊ शकतो, मग आम्ही कशाला त्या ह्याच्यात राहायचं जिथे आम्ही असे गरीब दैन्य स्थितीमध्ये काही बलहीन आमच्या पाठीने असं आम्ही काय? जर आमच्याजवळ सगळं आयुध आहे, आमच्याजवळ एवढी शक्ती आहे, तर मग आम्ही असं करायचं? असा सरळ विचार आपल्याला टाकायचा का? कशासाठी आम्ही असं करतो? कारण आम्ही कारण आम्हाला जगाच्या फालतू गोष्टींकडे आमचं लक्ष जातं, व्यर्थ गोष्टींकडे आमचं लक्ष जातं, तिकडे आम्ही आमचा वेळ दवडतो, म्हणून आम्ही असं करून घ्यायचं? कारण आम्ही मूर्ख म्हणून आम्ही असं करून घ्यायचं? किंवा आम्हाला आंधळेपणाच आवडतो, आम्हाला अंधारच आवडतो, म्हणून देत त्याच्यात अशा 3 परिस्थितीत मनुष्य त्याच्या तिन्ही बंदावरती बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की तुमच्या म्यानेतच तलवार आहे, ती काढायची फक्त ती उपसायची गरज आहे। तेवढी जर का उपसली तर तुम्ही सज्ज होणार। ती सज्जता घेण्याला तुम्ही मान्यता द्यायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी हिया पाहिजे मनाचा अगदी, त्याचा हिया असल्याशिवाय हे कार्य होणार। आता ह्या मंडळीला आपली भाषा समजत नाही, पण इथे बसून माझ्या बरोबर 2 महिने फिरणार, एक भाषा एक अक्षर समजत नाही, पण ध्यानात भाषा जरी नाही समजली तरी सुद्धा चैतन्य लहरींच्या नावावर तिथे बसलेले त्यांनी एवढी गहनता मिळवायची आणि आम्ही ह्या पुण्यभूमीत जन्माला येऊन गवतासारखं फिरून जायचं म्हणजे काय म्हणतात? सगळा देव धर्म गणपती दत्तात्रय सगळे आपल्याला माहिती आहेत, गुरु माहिती आहेत, आपल्याला गुरु नानक माहिती आहेत, आपल्याला कबीर माहिती आहे, आपल्याला सगळे माहित असून आणि आपण सगळे बेकार जाणार आणि हे लोक मात्र परमेश्वराच्या साम्राज्यात घुसत चालले। त्याला कारण आपण आता महामूर्ख झालो, हेच मला एक कारण म्हणायला पाहिजे की लोक तिकडे लक्ष देतात। इतकं उथळ चित्त आहे तुमचं, इतकं उथळ चित्त आहे, त्याला आता कसं आतमध्ये घुसवायचं हा प्रॉब्लेम आहे आणि त्याच्यासाठी कुंडलिनीचं जागरण हे झालं पाहिजे। पण ते झाल्यावर सुद्धा परत उथळ, उपड्या गागरीवर पाणी पडावं तसं सगळं कधी कधी सहयोग होतो, त्याचं मला फार गहनतेत सहयोगी झाल्याशिवाय कार्य होणार नाही। मनुष्य परिवर्तन झाल्याशिवाय तुम्ही काही करून बघा, तुम्ही राजकारण बदलून बघा, घोडे बदलून बघा, काय स्वार बदलून बघा, काय बदलून बघा, काय सगळं बाह्यातलं आहे, जोपर्यंत आतून तुमच्यामध्ये काही परिवर्तन होणार नाही काहीही बदलणार नाही। सर्व जगाचं असं झालेलं आहे, आपल्या देशातच काय आहे, आज हाहाकार माजलेला तुम्हाला असं वाटतंय, प्रत्येक देशात ही स्थिती, कोणी सुरक्षित नाही। सगळ्यांना वाटतं की आता उद्या काय होईल देवाला, त्या लोकांना जास्त वाटतं कारण त्यांना जास्त समज, त्यांना बुद्धी जास्त, आपल्यापेक्षा डोकं जास्त।
आणि आपल्याला वाटते. पण आता ह्याला जर मार्ग परमेश्वराने दिलेला आहे, तो जर मिळवायचा आहे तर त्याच्यात जमलं पाहिजे, त्याच्यात रुतलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये गेलं पाहिजे. हा इकडे विचार आपल्याकडे कमी आहे, तिकडे जास्त आहे. राजकारण वगैरे हे उलाढाली करण्यात काही अर्थ नाही, ते जाऊ द्या तुम्ही एकीकडे. त्याच्याशी काही तुमचा मतलब नाही आहे, तुमचा काही संबंध नाही. तुमचा संबंध आपल्याशी स्वतःशी आहे. आता आधी आपलं परिवर्तन करून घ्या, कारण तुम्ही अजून आंधळे आहात. जोपर्यंत तुम्हाला डोळे येणार नाही, जोपर्यंत तुम्ही बघणार नाही, तोपर्यंत तुम्ही काय बोलता, कोणत्या गोष्टी बोलता, त्या सगळ्या भ्रांतीमय आहे. त्यांना भ्रांती आणि तुम्हालाही भ्रांती. कुणी म्हणे आम्ही कम्युनिस्ट. मी म्हणते कम्युनिस्ट काय होणार, तुम्ही देणार काय दगड दोंडेनी हे. मी पक्की कॅपिटलिस्ट आहे, म्हणजे माझ्याजवळ सगळ्या शक्ती आहेत समजा, आणि त्या वाटल्याशिवाय मला राहता येत नाही, म्हणून मी पक्की कम्युनिस्ट आहे. दोन्ही गोष्टी माझ्यातच आहेत. वाटल्याशिवाय राहत नाही म्हणून प्रत्येक ठिकाणी अशी भटकत सगळ्यांना भेटत फिरते, सगळ्यांना सांगते, समजावून कळवळीने सांगते बाबा घेऊन घे. वाटल्याशिवाय राहत नाही म्हणून मी मोठी कम्युनिस्ट आहे आणि सगळ्या शक्त्या म्हणून कॅपिटलिस्ट आहे. तुमच्याजवळ शक्त्याच काय, तुम्ही वाटणार काय? हे दगड नि दोंडे, हे पैसे वाटून पैसे मिळून कुणी सुखी झालेलं नाही, हे माझं ऐकून घ्या. ही खरी गोष्ट मी तुम्हाला सांगते. ज्यांच्याजवळ पैसे आहेत त्यांच्याकडनं हेच ऐकायला तर माताजी मला शांती नाही, माझ्या घरात भांडण आहे. ज्या देशांमध्ये अत्यंत पैसे, असे 3 देश आहेत, त्या 3 देशामध्ये लोक नुसतं आत्महत्या कशी करावी हा विचार करत असतात. त्यांना आत्महत्येचे डोळे लागले. तेव्हा पैसे मिळवून आपलं भलं होईल ही अगदी खोटी गोष्ट आहे. उलट जर तुम्ही कोणाला 100 रुपये जास्तीचे दिले तर तो दारूच्या गत्त्यात जाऊन बसेल, नाही तर काहीतरी एक बाई आणून ठेवते. कधी त्याला असा नाही विचारायचा की माझ्याजवळ 100 रुपये जास्त आले, चला ह्याचं काहीतरी स्वतःचं कल्याण करूया, असा विचार. तेव्हा या पैशाने कुणाला कल्याणाचा विचार येत नाही, हे समजलं पाहिजे. सत्तेने तर मुळीच येत नाही. सत्तेत मनुष्य गेला म्हणजे कामात गेला, मग त्याला विसरूनच गेलेलं बरं. सत्ता आली म्हणजे एक खोटा आडंबर आला त्याच्यावरती, एक खोटा अधिकार आला, परमेश्वराचा अधिकार नाही त्याला. मग त्याचं डोकं खराब होतं. मग काय वाटेल ते करावं त्याला. असं वाटतं मी सत्ताधीश झालो, आता परमेश्वर तरी काय. तर सत्तेने मिळत नाही. पुष्कळांना असं वाटतं आमच्या घरातला मुलगा मुलगी चांगलं झालं पाहिजे, माझं घर, माझं हे, माझा मुलगा, माझी मुलगी, त्यांनी कॉन्स्टेबल झालं पाहिजे, नाही तर त्यांनी हे झालं पाहिजे, नाही तर त्यांनी ते झालं पाहिजे. मग ते काय झाले, मुलं बाळ म्हणजे लाथा मारतात आई बापाला. मग त्यांच्या लक्षात येतं की कशाला मरून मी यांना जन्माला घातलं, ते म्हातारपण बघण्यासाठी, त्यापेक्षा बरं नसतं केलं. म्हणजे ह्या सर्व ज्या बाह्यातल्या गोष्टी आहेत आणि मनुष्याला कधी आनंद आणि समाधान मिळालेला नाही. तेव्हा कुठेतरी आनंद आणि समाधानाची वस्तू जर असली तर ती मिळवावी असा विचार ह्या बाहेरच्या लोकांनी केलेला आहे. तो तुम्ही का नाही करावा? कारण इतकं लांबलचक जाऊन पैसे कमवून मग त्याच्यामध्ये मग असे प्रकार करून मग आत्महत्या करून त्याच्यानंतर मग क्षण बघून मग परमेश्वराचा विचार करण्यापेक्षा त्याला शॉर्ट सर्किट का नाही करून द्यायचं? त्याचा जो अरुंद रस्ता आहे पण जवळचा रस्ता आहे तो का नाही घ्या? अरुंद आहे कारण त्याच्यावर वाटचाल फार कमी लोकांची. अरुंद रस्ता असला, सुदासाने म्हटलं तेरी साकरी गली, अरुंद रस्ता आहे. मोठ्या रस्त्याने राजमार्गाने निघाले पण कुठं? नरकाकडे. राजमार्गाने जेवढे निघाले ते नरकाकडे निघाले. पण ह्या ज्या अरुंद रस्त्याने माणसं चाललेले आहेत त्या अरुंद रस्त्यामध्ये परमेश्वराचं स्थान आहे. त्याच्या मंदिरात, त्याच्या साम्राज्यात तरलं पाहिजे. ती व्यवस्था केलेली आहे. ते तुमच्यामध्ये संबंध व्यवस्था आहे आणि ती कुंडलिनी तुमच्यामध्ये स्थित आहे. फक्त तिचं जागरण करणं आणि तिचं संगोपन करणं हे तुम्हाला आणि आम्हाला मिळून काम केलं पाहिजे. आम्ही जागरण करून घेऊ, तुम्ही त्याचं संगोपन केलं पाहिजे. म्हणजे आम्ही दिवा लावून दिला आता तो सांभाळून तेवढ ठेवायचा एवढं कार्य तुमचं आहे. दिवा लावल्याशिवाय अंधारामध्ये तुम्ही काय करणार? आणि तुमचे सारे विचार सुद्धा इतके खोटे आहेत, तुम्हाला हेच माहिती नाही की खरं काय आणि खोटं काय. उद्या एखादा भोंदू मनुष्य इथे आला सरकशीतला तर त्याला सुद्धा तुम्ही गुरु समजून त्याच्या पायावरती त्याला नमस्कार दर्शन. बाबाजी लोक फिरतच असतात हातामध्ये चिमटे घेऊन. अलख निरंजन म्हटलं की झालं, सगळ्यांच्या बुद्धीला टाळ बसलं. मग विचार करणार नाही हा जेलमधनं सुटून आला की कुणी भामटाय लागले त्याच्या पायावरती. इतके तर तुम्ही धर्माच्या बाबतीत आंधळे आहात, परमेश्वराच्या बाबतीत आंधळे आहात, मग तुम्ही कोणचं असं
बहुत कार्य करू शकता. एक मेलेलं कार्य, एक दगड विटा मेलेला, आता त्यांनी एक घर उभारलं म्हणजे मेल्याचं मेलं केलं. तुम्ही काय विशेष केलं नवीन? असं कोणचं करून दाखवलं जे जिवंत कार्य आहे. अशा रीतीने मनुष्याने आपला अहंकार ओढून घेतला पाहिजे की आम्ही करतोच काय, एका फुलापासून आम्ही फळं करू शकत नाही. आम्ही बोलतो काय, स्वतःबद्दल एवढ्या आम्हाला कल्पना काय. आमच्यामध्ये जिवंत शक्ती आली आहे का? आणि ती जिवंत शक्ती तुमच्यामध्ये वाट बघू. ज्या दिवशी ह्या कुंडलिनीचं जागरण होईल आणि तुम्ही थोडासा मेहनत करून, थोडी तपस्या करून जर ती बरोबर पेटवून घेतली आणि आपल्यामध्ये त्याचा जर प्रकाश सतत नित्य सातत्याने जर बनला तर तुम्ही स्वतः साधू संत होता. तुमच्या सर्व शक्त्या जागृत होतात. तुम्ही प्रचंड पुरुष. विशेष करून महाराष्ट्रातली मंडळी म्हणजे विशेष आहे. पूर्वजन्मातल्या फार सुकृत्यामुळे या महाराष्ट्रात तुमचा जन्म झाला. गरिबी श्रीमंतीने सुकृत्य जाण्याचं नसतं. परमेश्वराकडे काय लक्ष असतं ते एवढे मोठे तुम्ही मोठे जण असताना सुद्धा तुमचं चित्त मात्र असं चित्त ठिकाणावर नाही, फालतू गोष्टींकडे चित्त आहे. आता मी येतो ते बघत होते संप 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 म्हणजे हे करून काय करणार काय मला समजत नाही. रात्र संप करून पैसे जास्त म्हणजे दारूच तर जास्त पिऊ लागलाय. कोणचं मोठं कार्य केलंय तुम्ही? आता त्या मुंबईला मी गेले त्या कामगारांच्या ह्याच्यामध्ये, त्यांनी बोलवलं होतं उदाहरण माताजी भेटायला. त्याची दुर्दशा बघून माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. ते अर्धा तास माझं रडणं थांबलं. काय दुर्दशा रस्त्यात दैन्य अवस्थेत फिरून आले. अरे म्हटलं किती पगार तुम्हाला होता, किती मिळायचं? 2000 रुपये मिळत होते. आम्ही म्हटलं 2200 द्या. तेवढ्यासाठी हे झालं. असं का? अहो त्या कलेक्टरला, आमचे साहेब कलेक्टर होते, त्यांना 30-35 वर्षापूर्वी 900 रुपये पगार होता. आजच्या कलेक्टरला 800 रुपये पगार. कलेक्टरला 800 पगार आहे. आता तुमच्या हातात 2000 रुपये पडतात. दारू पिणाऱ्या माणसाला तुम्ही जर 10,000 रुपये दिले तरी तो करणार. मी म्हणते समाधान कर. कबूल तुमच्याजवळ जास्त पैसे असायला पाहिजे, व्यवस्था व्हायला पाहिजे, पण त्याने काही तुम्हाला समाधान मिळणार नाही. आज म्हणाल आमच्याकडे चांगले कपडे पाहिजे, उद्या म्हणाल आमच्याकडे एक मोटरसायकल पाहिजे, मोटरसायकल मिळाले तर आमच्याकडे टीव्ही पाहिजे, आमच्याकडे हे पाहिजे. हे जे सर्वांना मिळालेलं आहे ते तुमच्या देशात आलेत नाही. ते त्याला काही अंत आहे का? तेव्हा ज्या गोष्टीला अंत नाही अशा गोष्टीच्या मागे धावण्यात काय? मी असं म्हणत नाही की तुम्ही आपली मागणी करू नये. तुम्हालाही व्यवस्थित सगळं मिळालं पाहिजे, सगळं झालं पाहिजे, पण आपल्या कमरा मोडू नका. कमरा मोडून ठेवलेल्या आहेत. आता ते जे मिलचे मजदूर आहेत ते मला म्हणाले आता त्याचा इलाज. म्हटलं काय इलाज सांगायचा? स्वतःच्या थोबाडात मारून घेतली, नाक कापून घेतलं, कान कापून टाकले. आता काय इलाज सांगायचा आहे मूर्खांना? मी म्हटलं त्याला काही इलाज नाही. म्हणजे तुम्ही आईला सांगा. म्हटलं मी सांगितलं तर तुम्हाला हे करायला धंदे. 2000 रुपये पगार मिळतो तुम्हाला, शांती मिळतो. किती दारू पिता तुम्ही? प्रत्येक जण दारू सोडा पाहिजे म्हणजे अर्धे पैसे तुमचे तसेच वाचले. पण ते म्हटलं की झालं बापरे, दारू म्हणजे त्यांची खरोखर म्हणजे त्यांची जन्मदात्री आई सुद्धा बेकार गेली ती दारू पुढे. तिचे गुलाम नुसतं. दारू कशी सोडणार? दारू सुटली म्हणजे कसं काय? तिची गुलामी करायला तयार. मग हे संपाचे भांडण, हे झगडे सगळे करायचे आणि शेवटी मग ती जी तुमची आई जी मिल आहे तिला बंद करून टाकली. मिलच्या मालकांना सांगितलं त्यामुळे आम्हाला काय बघायचं नाही. आता गव्हर्नमेंट घेतले, गव्हर्नमेंटला गव्हर्नमेंट म्हणते आता हे आम्ही सोडणार. म्हटलं का? कारण मिल बंद झाली. आता त्याच्यातलं म्हणे आता कापड जर बाहेर पाठवायचं तर कोणी घ्यायला तयार नाही. ते म्हणतात तुमच्याकडचे मजदूर कामातनं गेलेले आहेत, आम्हाला अशा लोकांशी संबंध ठेवायचा नाही जिथे माल मिळत नाही. त्या मिला तशाच्या तशा वाकून गेल्या. त्या सगळ्या मुंबईचं ऐश्वर्य संपलं. आता बसा ओरडत. ते 200 रुपये कशाला पाहिजे? ते दुत्यात जायला ना. काही सारासार विचार जर माणसाला राहिलाच नाही तर मग तो असा वागायला. माझं हे म्हणणं नाहीये कधी तुम्ही ऐश्वर्यवान होता. पहिल्यांदा सहयोग करा, लक्ष्मी तुमच्या घरी नांदणार. लक्ष्मीचं राज्य आणलं पाहिजे. पण ही जी पैशाची हवा ही टाकली, नुसत्या पैशाच्या मागे लागलेले लोक आपल्याला अनर्थात घालून देतात. त्याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगते की आज 20 लाख कामात न गेले रस्त्यावर भीक मागत आहेत. तेच तुम्ही करू नये. परमेश्वराला पहिल्यांदा मिळाल्यावरती तुमचं सगळं व्यवस्थित होईल. पहिल्यांदा परमेश्वराला मिळून फालतू गोष्टींमध्ये आपला सारा वेळ घाल, फालतू गोष्टींमध्ये आपली सगळी शक्ती घाल. जी खरी शक्ती ती आधी मिळवून घ्या. म्हणजे तुम्हाला सारासार विचार आणि तुमच्यात इतक्या प्रचंड स्वतः शक्ती आहे की पुढचा मनुष्य तुम्हाला बघूनच म्हणाल की अरे आम्ही काय करतो. जेव्हा असं घडेल तेव्हा समानता आपल्या देशात मध्ये येणार आहे. आणखी दुसरी कोणतीच पद्धत समानता येण्याची जबरदस्ती करून कधी समानता येणार.
आपल्यामध्येच तुम्हाला शक्ती जागृत केली पाहिजे. एक सांगायचं म्हणजे एक गृहस्थ आमच्याकडे फार गरीब होते ते, त्यांना जबरदस्ती म्हणे तुम्हाला आम्ही एक म्हणे झोपडी बांधू. एका माणसाची जमीन घेतली जबरदस्ती, त्या जमिनीत झोपडी बांधू. थोड्या दिवसात झोपडी पडली, ती जमीन गेली, झालं, संपलं, खतम झालं. आता पुढे काय बसले ते माझ्याकडे आले, माताजी आम्हाला मिळालं तर फुकटचं ते गेलं, आता मात्र काय करायचं. म्हटलंय बघा तुम्ही पहिल्यांदा जागृती होऊन तुम्ही समर्थ जागृतीचे तुम्ही बांधा. म्हटलं आपली झोपडी तुम्ही बांधू नाही शकत का. आता म्हणे इतकी मला शक्ती आली माताजी, मी झोपडी तर का मी झोपड्या बांधू शकतो. करा म्हटलं का. 10 माणसं मिळून तुम्ही झोपड्या बांधायला सुरुवात करा स्वतःची. एक जमीन व्यवस्थित घ्या, त्याच्यामध्ये झाड, आणि सगळं व्यवस्थित झालं त्यांचं. ही एक पद्धत झाली की मनुष्याला आपली शक्ती एवढी आला पाहिजे की सर्व प्रकारे तुमची मदत. मग सगळ्या सहयोगाने त्यांची मदत केली, सगळ्या लोकांनी त्यांची मदत केली, आणि परमेश्वराची मदत असल्यावर तिथेच पाणी निघालं, तिथे सगळी व्यवस्था झाली, सगळं काही. एक दुसरे गरीब होते, ते माझ्याकडे यायचे तर नेहमी एक हार घेऊन यायचे. त्यांची मुलं बाळ पुष्कळ होती, सगळेजण कळव्याहून यायचे. मी म्हटलं पाटील तुम्ही कशाला हार माझ्यासाठी आणता, इतका खर्च, परत इतका प्रवासाचा खर्च. माताजी परमेश्वराने माझी व्यवस्था केली. म्हटलं काय झालं काय. काही नाही म्हणे माझ्याजवळ एक जमीन पडीक होती, तुम्ही जाऊन तिथे ध्यान करायचं, सगळे मुलं बाळ ध्यान करायचे. त्या जागेला शक्ती आली. एक मनुष्य आला माझ्याकडे सिंधी, मला म्हणायला बाबा तुझ्या जमिनीतली थोडीशी माती तुम्ही घेऊन आला तर माझ्याकडे फकीर, म्हणाला ही माती घालून बघ. तर म्हणे ती दगडासारखी आमच्या विटाच आहे. तर म्हणून आम्ही धावत आलो, त्या माणसाला सांगितलं की तू त्या माणसाची आम्ही माती आणलेली, त्या जमिनीत विशेष. तर म्हणून आम्ही आलो, तो फकीर गेला एकीकडे, त्याचा पत्ता नाही. तर त्या जमिनीच्या जी माती आहे ती आता म्हणे आम्ही शेराने घेतो. हे परमेश्वराचं कार्य, परमेश्वराचं सहाय्य तुम्ही घेतलंय का, त्या बुद्धीचं सहाय्य घेऊन केलंय काय स्वतःच. अतिशहाणपण दाखवून आता सगळ्या तुम्ही मोडून टाका आणि परत जी गरिबी होती ती घेऊन या. तेव्हा शहाणपण हे ठेवलं पाहिजे. आणि जोपर्यंत तुम्हाला शहाणपण येणार नाही तोपर्यंत कुठे पुढे जायचं, कुठे माघार घ्यायची ते समजणार नाही. कुठे माघार घ्यायची, कुठे पुढे जायचं, कसं वागायचं हे संबंध शिकलो पाहिजे. आणि हे शिकायला पहिल्यांदा आत्म्याचं स्थान यायला पाहिजे. ज्याला मोटर चालवता येते त्याला ब्रेक कधी लावायचा आणि कधी ऍक्सिलरेटर दाबायचं ते आलं पाहिजे की नाही आलं पाहिजे. नाही तर ऍक्सिलरेटर दाबत चालला तर चाला तिकडे खड्ड्यात. तेच झालेलं आहे सगळ्यांचं, खड्ड्यात जाऊन पडले. मग खड्ड्यात पडल्यावरती मग म्हणायचं माताजी आमचं कुठे चुकलं नाही तर काय. कसं वागायचं ते तुम्ही शिकले कुठे. तुमच्यामध्ये अजून गणपती जागृत झाला नाही. ज्या वेळेला गणपती जागृत होईल तेव्हाच तो तुम्हाला सुबुद्धी देतो. तो सुबुद्धी देणारा विनायक आहे की नाही. आपण म्हणायचं नुसतं आपण आरती करायचं म्हणायचं सुबुद्धी दे, पण तो जागृत व्हायला पाहिजे. तो जर जागृत झाला तर तुमचे सर्व प्रश्न मिळतात. तेव्हा तो जागृत करण्यासाठी समर्थ आहे ती कुंडलिनी, तिला जागृत करून घ्या. आणि ती जागृत झाल्यावर सर्व देवता तुमच्या जागृत होतील. तुमच्यात जर शक्ती आल्या लक्ष्मी सुद्धा तुमच्यावर प्रसन्न होईल आणि सर्व तऱ्हेने ठीक होणार. मी काय तुमच्या समोर मुगीच खोटं सांगत नाही किंवा खोटी आश्वासनं देत नाही. इथे जितके लोक सहयोगी आहेत सगळ्यांचं भलं झालं, सगळ्यांचं भलं केलेलं आहे परमेश्वराने. त्यांनी म्हटलेलंच आहे की योगक्षेम वहाम्य. योग जर झाला तर मी क्षेम करीन असं म्हटलेलंच आहे. पण त्याच्या आधी अट आहे नित्य अभियुक्ता नाम. ज्यांनी सारखा सातत्याने परमेश्वराशी संबंध ठेवलाय त्याच्या साम्राज्यात बसले त्यांना आम्ही बघतो. तुम्ही दुसऱ्या साम्राज्यात बसले तर त्याला परमेश्वर तरी काय करतो. परमेश्वराच्या साम्राज्यात या. जे लोक परमेश्वराच्या साम्राज्यात येतील त्यांचे चेहरेच वेगळे दिसतात. बघा या लोकांना कमळासारखे. आणि नरकात निघाले लोक आहेत, तिकडे नरक आहे नरक. त्यांना काही नैतिकता म्हणजे कशाशी खातात ते माहिती नाही, काही माहित नाही. वाटते आई बहिणी माहित नाही, काही माहित नाही. असे घाणीत निघालेले हे लोक कमळासारखे ते फिरून राहिले. त्यांना बघून तरी आपण हे शिकले पाहिजे की माताजींनी यांना कसं काढलं. मी काढलं नाही, त्यांच्या कुंडलीनीच त्यांना वर मिळेल. ती कुंडलीनीच त्यांना वर घेऊन आली. आता तुमच्यात हे आहे, हा तुमचा वारसा आहे. तुमच्या भूमीतलं सगळं काही आहे, इथलं सगळं अन्न पाणी आहे. मग ते का नाही आपण घ्यावं. पण जरा तरी त्याच्यात गांभीर्य पाहिजे. चिल्लरपणाची माणसांना नाही मिळत. म्हणजे उद्या सिनेमाला जायचं असलं तर 1000 मैल चालून जातील. इतके थिल्लर लोक झालेले आहेत घाणेरडे ते सिनेमा बघायला. पण जर देवाचं कार्य असलं त्याच्यासाठी
एखाद्या ब्राह्मणाने ते काढलं सत्यनारायण तर बसतील तिथे जाऊन, त्याला 4 पैसे द्यायचे, ते काहीतरी नाटक करायचं, त्याला पैसे दिले म्हणजे झालं, आज आम्ही सत्यनारायणाची पूजा घातली. अहो, नारायण स्वयं साक्षात सत्य, त्याला सत्य कशाला लावलं पाहिजे? ज्या माणसाने सत्य लावलं म्हणजे तो असत्य, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. नारायण स्वयं सत्य स्वरूप आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला सत्य दर्शन होतं. सच्चिदानंदामधला जो सत आहे तो नारायणाचा स्वरूप आहे, आणि त्या नारायणाला परत सत लावणं म्हणजे समजतच नाही. म्हणजे आता आपण जर समजा माझं नाव निर्मला आहे, मी सत्य निर्मला आहे, म्हणजे काय अर्थ आहे का? नाव तुमचं निर्मला, मग सत्य कशाला लावायचं? म्हणजे काहीतरी खोटं ठरतं त्याला. आणि ह्या अशा रीतीने आपण आपला वेळ इतका दवडतो, म्हणजे धर्माच्या बाबतीत सुद्धा इतका बेकार आपण वेळ दवडतो की त्याला सुद्धा काही अंत नाही. आता वारकरी लोक चालले पंढरीला, विठ्ठल विठ्ठल, हे कोणी सांगितलं? बरं, श्रद्धा आहे म्हणून गेली, कबूल. पण ते तोंडात ते घालून जे जातात, घाणेरडी तंबाखू, ते काय कृष्णाने सांगितलं? ते काय कृष्ण काय तंबाखू खात होते का? विठ्ठलाच्या जे अगदी विरोधात आहे, अगदी विरोधात, म्हणजे पूतना आहे ती, तिला तोंडात बसवायचं आणि देवाचं नाव घ्यायचं. तसेच फुगता तुम्ही, मग त्या तोंड असं फुगून निघतं आणि मग त्याचे रोग होतात, त्रास होतो. तेव्हा लक्षात येतं, माताजी आम्ही तर वारकरी आहोत, आम्ही 30 वर्षापासून पंढरीला जातो, असं का? मग आम्हाला कॅन्सर कसं झाला? आणि तोंडात काय बसाड्या आवाजाने मग विठ्ठल विठ्ठल म्हणत यायचं, आवाज खराबच होणार. काय म्हटलं तरी हे तोंडात घाणेरडी वस्तू घातली, आणि या तंबाखूनी तर महाराष्ट्रीयन लोकांना खाऊनच घेतलेलं आवडलं. विठ्ठला बरोबरच ती आलेली दिसते मागे मागे. द्वारकाहून विठ्ठल आले, त्यांच्या मागोमाग भूत उभं होतं, म्हणे तू विठ्ठलाचं नाव घेता का? मग या पुढे घ्या. आणि आपण व्यवस्थित तोंडात घालायची, आणि त्याच्या डुकरं चरतात, ती घाणेरडी वस्तू तोंडात घालायची. काय म्हणजे आपल्याला त्याची कल्पनाच राहिलेली नाही की तंबाखू ही किती घाणेरडी वस्तू आहे, त्याची तलफ येते, त्याने आपली चेतना मारली जाते, आपण त्याचे गुलाम होतो. आता या गुलामीत माताजींनी म्हणून सुटणार नाही, कुंडलिनी जागृतीने तुम्ही सुटू शकता, ती तुम्ही सोडू नये. सहयोगामध्ये आपोआप तंबाखू सुटते पुष्कळ लोकांची. एखादा मनुष्य नेवळट असला समजा, त्याला थोडीशी मेहनत करावी लागते की त्याची तंबाखू सुटते. आणि जर तंबाखू सुटली समजा, तर मग समजायचं की आता आपण ठीक मार्गावर लागतो. दुसरी घाणेरडी वस्तू जी आपण फार सूट केलेली आहे ती आहे दारू. दारू चांगली आहे असं कुठेतरी शास्त्रात लिहिलंय का? तुकारामांनी दारू प्याले ते का? ज्ञानेश्वर दारू प्याले ते का? म्हणजे आपण ज्ञानेशांचं भजन सुद्धा करायचं असलं टाळ कुठं तर दारू पिऊन करतो, म्हणजे काय म्हणा आपल्या डोक्याला तरी काय म्हणा माणसाने. एक छोटा ड्रामा ज्ञानेश्वरांनी असा कधी विचार तरी केला होता? शिवाजीरायांनी असा विचार केला होता? या लोकांनी काय अशा चुका केल्या त्या का आपल्यासारख्या? आणि आज दारू म्हणे इतकी पसरलेली आहे महाराष्ट्रात. आजच कमिशनर साहेब सांगत होते की या दारूच्या व्यसनाने तर काय करतील लोक मला समज. मारा मारी मुस्तैदी भयंकर प्रकार सुरू झालेले. ही दारू गेली पाहिजे आणि तिला प्रोहिबिशनने जाणार नाही, जागृतीने जाईल. जागृती झाली तर तुम्ही दारू पिणार नाही, अगदी पिणार नाही, पिऊ शकत नाही. धर्म जागृत होतो ना कुठे. आणि ही गुलामी सुटणार, सांगून सुटणार नाही, बोलून सुटणार नाही, फक्त जागृतीने होईल. कारण जेव्हा कुंडलिनी जागृत होते तेव्हा तुमच्यामध्ये धर्म जागृत होतो, आणि धर्म जागृत झाल्यामुळे तुम्ही स्वतः त्या गोष्टीची घाण करता. तशी माणसाला पुष्कळशा वस्तूंची घाण येत असते. तिथे जर समजा एखादी घाणेरडी गल्ली असली, रस्ता असला, तर तुम्ही तिकडनं जाणार नाही, पण एक जानवर असतं ते जाईल. माणसाला अशी बाह्यातली घाण येते पण आतली घाण येत नाही, आपली स्वतःची घाण येत नाही की माझ्या हृदयात काय घाण आहे, माझ्या पोटात काय घाण आहे, मी सारखी काय घाण पोटात घालतोय, इकडे लक्ष नसतं. तोंडात काय घाण आहे तिकडे लक्ष नसतं. ह्या सर्व गाणी आहेत, पण त्या गाणी आहेत हे दिसण्याला सुद्धा जागृती पाहिजे. जागृती झाली म्हणजे आपोआप ह्या गाणी सुटून जातात, म्हणजे ती गुलामी सुटते. पण पुष्कळ लोक सहयोगात येऊन सुद्धा रेंगाळतात. त्यांनी थोडीशी जर मदत घेऊन जर हिया बांधला तर सगळं काही होऊ शकतं. रेंगाळल्या माणसाला सहयोगामध्ये स्थान नसतं. जसं तुम्ही जेव्हा ताक उसळून लोणी काढता तेव्हा लोण्याचा जो गोळा असतो त्याला जेवढं लोणी चिकटलेलं आहे तेच लोणी आपण उचलून घेतो. इकडचे तिकडले पडलेले कण उतरत नाही, तेव्हा ते राहून जातं. फक्त तो लोण्याचा गोळा आहे त्याला आपण उचलून घेतो. तसंच लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण लोण्याला चिकटून आहोत की बाहेर आहोत. हो, थोडंसं असं आहे माताजी, पण जरासं थोडंसं असायचं की अशा रीतीने आपण धर्मभावनेत बोलतो. मग सगळ्यात मुख्य प्रश्न म्हणजे हा की आपल्याला बाबाजी लोक पाहिजेतच.
बाबाजी असायलाच पाहिजे, कारण कुणाला मुठ मारायची आहे, कुणाचं बाईट करायचं आहे, मग पाहिजे तर दुष्ट नसले तर आपण कसं काम करणार, आपल्याला जमत नाही ते. म्हणून मग जायचं त्या बाबाजीला पैसे द्यायचे, बाबाजी त्यांना मुठ मारा. अहो ती मुठ त्याला मारलेली तुमच्या 7 जन्माला पूर्ण आहे, लक्षात ठेवा, 7 जन्माला. आणि तुम्हाला तर कधीच शांतता मिळणार नाही, कधीच मोक्ष मिळणार नाही जर तुम्ही अशी कामं केली तर. भूतांच्या मदतीने तुम्ही हे धंदे करता तर परमेश्वर फार तुमच्यावर नाराज. करणी करायची दुसऱ्यावरती, या बाबाजींच्याकडे जायचं, त्यांना पैसे द्यायचे, त्याच्यावर करणी करा, त्याच्यावर करणी करा. हे तर राक्षस आहेतच, ते राक्षसच येऊन राहणार, त्यांचं तर कल्याण नाहीच, पण तुम्हालाही त्रास होणार आहे. म्हणून मी सांगते की असे धंदे करूनच घ्यायचे नाही. आणि असा जो कोणी बाबाजी करतो त्याला जोडे मारून गावात काढून टाकलं पाहिजे. बाबाजी कशाला पाहिजे तुम्हाला? संन्यासी लोक. पहिल्यांदा गोष्ट अशी, तुम्ही गृहस्थातले लोक मेहनत करता, स्वतःची कमाई नाही, स्वतःची कमाई करता, मुलांना पोटा पाण्याला देता. आणि हे संन्यासी लोक कामधाम काही करायचं नाही आणि तुमच्या दमावर राहतात, तुमच्या दमावर जिवंत राहतात. म्हणजे हे आहेत कोण? हे तुमच्यावर जेव्हा जगणारे स्वार्थी भोंदू लोक, त्याच्याकडे तुम्ही एवढं आधी नतमस्तक होता, त्यांनी तुम्हाला कॅन्सर सारखे रोग होतात. या बाबाजींच्याकडे जाणं जर महाराष्ट्रातल्या लोकांनी बंद केलं तर कॅन्सरचा रोग असा मी इथून काढून टाकतो. फक्त या बाबाजी लोकांचं तुम्ही ठिकाणा करा सगळ्यांचं. कुठेही जाय का कोपऱ्यात एक बाबाजी बसलेला, नावं त्यांची काय? बाबाजी जिंगूर, कुणी म्हणे बाबाजी पडवळ, ही अशी नावं का बाबाजींची असतात, नावं त्यांची बरोबरच असतात. हसावं की रडावं असं होऊन जातं जेव्हा लोक मूर्खासारखे मला सांगतात अहो ते बाबाजी आमचे फार पोचलेले, असं का? आणि तुमच्या हाताला मुंग्या कशाला, त्यांनी डोकं कशाला बिलबिलतंय? मग शेवटी त्या कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा त्यांचं वरदान. नाही आम्ही सोडणार आहे बाबाजींना, कॅन्सर झाला तरी चालेल. आणि ते आपली मुलं बघतात, त्यांचाही तुमच्यावरती काय विश्वास बसणार. असे हे बोंधू लोक, त्या बोंधू लोकांना तुम्हाला महाराष्ट्रात हद्द पार केलं, हद्द पार करून टाकायचं. जाऊ देत अरबी समुद्रात. असे जेवढे बोंधू लोक तुम्हाला मिळतील त्यांना जशा बायका उवा काढून फेकतात ना तसे काढून फेकून टाका. मला तर त्यांचा एवढा त्रास होऊन राहिला. आधी प्रत्येक प्रोग्रामला 10 मंडळी तरी अशी येतात माझ्यासमोर, लटलट लटलट चालतं त्यांचं. झालं काय? तुमचे गुरु कोण आहेत? आमचे अमके, असंच घाणेरडं काहीतरी नाव त्यांचं. असं का? कुठे भेटले तुम्हाला? नाही, ते राहतात तिकडे आमच्या घराच्या मागे. असं तेव्हा अशा आपल्या पवित्र शरीराला, अशा अशा गौरवान्वित त्या मानव देहाला अशा मूर्ख लोकांच्या समोर वाकवण्याचं काय? सगळ्यांचं दर्शन घेण्याची तरी काय गरज आहे? मी तर इतकं म्हणजे तुम्ही माझं तरी कशाला दर्शन घेता बाबा? आधी काही मिळवून घ्या मग दर्शन. मग ते दर्शन पहिल्यांदा पाहिजे. म्हटलं दर्शन घेऊ नका म्हणजे झालं, माताजींनी आम्हाला अगदीच दुःखीच करू टाक. ते पार झाल्याशिवाय तुम्ही कशाला दर्शन घेता? ते पाय तुमच्यासारखेच आहेत. जर दर्शन मिळायचं असलं तर त्याचे योग्य झाले तर दर्शनाला फायदा आहे, नाही तर काय उपयोगाचं आहे? असेच पाय. पण जर तुम्ही पार झालेले असले तर कळेल मग हे पाय कोणाचे आहेत. त्याच्या आधी काय करणार? तसे तुमच्यासारखेच आमचे पाय आहेत की नाही? पण त्या पायांचं महात्म्य फक्त केव्हा कळणार? जेव्हा तुम्ही पार झाले, जेव्हा तुमच्या हातातून चैतन्य वाहू लागेल तेव्हाच होणार. म्हणून आधी तुम्ही जे आहात तेच मोठे होऊन घ्या. तुमचे जे तेच आधी. माझं सोडा, मी कोण काय विसरा, तुम्ही स्वतःला बघा. ही माझी अगदी हात जोडून सगळ्यांना विनंती. मी तुमची आई आहे, तुम्हाला जे आहे ते सांगायलाच पाहिजे. काही तुमच्यासमोर खोटं बोलून चालणार नाही, किंवा तुम्हाला फसवून चालणार नाही, किंवा तुमची नुसती हांजी हांजी करून चालणार नाही. जे खरंय ते मी तुम्हाला सांगणार, कारण मला बघवत नाही का त्रास त्या माझ्या मुलांना होत आहे त्यांच्या अज्ञानामुळे. तेव्हा ते सांगितलं, ज्या अज्ञानामध्ये आपण एवढा त्रास उचलतोय तो आपण सोडावा. ही एका आईची अत्यंत कळकळीची विनंती आहे. आणि कोणत्या गोष्टीचं वाईट न वाटून घेताना आपलं सगळ्यांचं भलं करून घ्या. आईला काय, माझं जे आहे ते तुम्ही सर्वांनी घ्यावं, त्याच्यात वाढावं आणि मोठं व्हावं आणि माझ्यापेक्षा मोठं व्हावं, हीच तिला इच्छा असते. तेव्हा ती माझी इच्छा पूर्ण करावी अशी माझी अत्यंत कळकळीची सर्वांना विनंती. सहयोगाविषयी सांगितलेलंच आहे. तेव्हा आता आपण पुढच्या कार्यक्रमाला लागू. आत्मसाक्षात्कार जरा पुढे बसा, म्हणजे मागच्या मंडळींना थोडी जागा मोकळी.
सगळी मंडळी बसते. इथे बसा ना, या ठिकाणी काय हरकत नाही. मी आता काय कुठे बाहेर जातो, मी इकडून बाहेर बसा, इकडे बसा, या पुढे येऊन बसा, या पुढे सरका, सगळी मंडळी बसू पुढे सरकू, काय हरकत. रांगोळी बसत चालेल, या काय हरकत. अहो तुम्ही रांगोळीपेक्षा पुष्कळ उच्च स्थितीला, तुम्ही बनवलेलं जे आहे त्याच्यापेक्षा तुम्ही उच्च आहात की नाही. तर आपला आत्माभिमान जो आहे तो जागृत झाला. पण आत्म्यालाच न जाणण्यामुळे आपण असे भित्रे होतो. आम्ही काय विशेष आहे ही गोष्ट कोणी जाणतच नाही. आणि पार झाल्यावरही त्या गोष्टीचा विचारात की आम्ही विशेष आहोत. तर स्वतःबद्दल अत्यंत गौरव असायला पाहिजे की आम्ही माणूस आहोत. देवाने आम्हाला मानव केलेला आहे आणि मानव हे हजारो योनीतनं काढून आज परमेश्वराने आम्हाला एक विशेष व्यक्ती केलेली आहे. तेव्हा आम्हाला काय जगाची भीती, अशा हिंमतीने आणि हियेने बसलं पाहिजे. आणि सहयोगात पार झाल्यावरती आम्ही त्याच्यात जमणार आणि एक वृक्ष होऊन दाखवणार असा मनामध्ये हिय्या धरला पाहिजे पूर्णपणे. घेतल्यावर बघा पोटाला इथे वृक्ष मला नजर. पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु अपने आप को मानते हैं वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है। सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। महादेव, सब देवों में महादेव, तुझसा कोई न दूजा। हम सबसे भक्त हैं भगवान तेरी पूजा, भगवान तेरी पूजा। शिव जी तेरा तो है, शिव जी तेरा तो है, तुम्हारी राया बोला बाला, तेरी छवि भी सभी है बारी हारी। ओ शंकर भोले भाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे न्यारी। ओ शंकर भोले भाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे न्यारी। मोक्षाचा क्षण आहे, त्यावेळेला तू आमचं रक्षण कर आणि आम्हाला आत्मसाक्षात्कार करू दे, असं हृदयापासून त्याला. गणेशाचं फार वरदान आहे आपल्याला, महाराष्ट्रात विशेष करून आपल्याला फार वरदान आहे, ते मागून घेतलं. आता दोन्ही हात माझ्याकडे असत, डावा हात हृदयात. हृदयामध्ये आत्म्याचं स्थान आहे आणि कुंडलिनी ही आदिशक्ती आहे. आदिशक्तीचं प्रतिबिंब ही कुंडलिनी आहे आणि हृदयामध्ये जो आत्मा आहे ते सदाशिवाचं प्रतिबिंब आहे, म्हणजे त्याला आपण परमेश्वराचं प्रतिबिंब असं म्हणूया. कुंडलिनीच्या जागरणाने कुंडलिनी 6 चक्रात छेदून नंतर ब्रह्मरंध्र छेदते आणि ब्रह्मरंध्र छेदल्यानंतर इथे सदाशिवाचं स्थान आहे, म्हणून त्यांच्या चरणाला तिचा स्पर्श होताच हृदयामध्ये असलेलं आत्म्याचं स्थान जागृत होतं आणि आपल्या डोक्यातनं इथं थंड थंड असं गारगार वारा येऊ लागतो आणि हातात ते गारगार वारा येऊ लागतो. ही ब्रह्मशक्ती आहे, हे चैतन्य आहे आणि याचं वर्णन अनेकदा संत साधूंनी केलेलं आहे, ते मिळवावं. तर आता हृदयावर हात ठेवायचा आणि डोळे मिटायचे, ह्याच्यावर डोळे उघडायचे नाही. उजवा हात फक्त फिरवायचा, डावा हात माझ्याकडे असला पाहिजे सातत्याने. डावा हात माझ्या, उजवा हात फिरवायचा. उजवा हात हृदयावर ठेवून प्रश्न विचारायचा, श्री माताजी मी आत्मा आहे का, असा प्रश्न 3दा विचारा. मला आपल्या हृदयात विचारायचा. मुलांना बाहेर घेऊन जा. मुलं रडत असताना काहीतरी त्यांना दोष आहे, तेव्हा त्यांना बाहेर घेऊन जा. सबको
हा मुलाला बाहेर नेलेलं बरं. दुसऱ्यांना त्रास देऊ नये मुलांचा. कारण लोकांचं चित्त तुम्हाला बघायला काय झालं, चित्त इतकं उधळ ठेवू नका, नाही तर काही काम होणार नाही. जराच तरी गंभीर असायला पाहिजे. आता इतकं सांगितल्यावर परत चित्त तसंच्या तसं ते मूल रडल्याबरोबर बघायला काय तुम्ही त्याच्या आई आहात. चित्त थोडंसं शांत करा आणि थोडं गहनात उतरायला पाहिजे. थोडं सुद्धा गहन नसलं तर कसं करणार आम्ही काम. पहाड्यासारख्या कुंडलीने उठून मला तर अगदी थकवा येऊन गेले. थोडं तरी माझी मदत करायला पाहिजे ना. हृदयाकडे लक्ष ठेवा. मी आत्मा आहे असं म्हणायचं. ध्यान करायचं नाही, मेहनत करायची नाही, आईने सगळं केलं पाहिजे असं कसं आहे. मी तर थकून जाते अगदी. मी आत्मा आहे का असा प्रश्न मला 3दा विचारा. स्वतःकडे चित्त करायचं. चित्त स्वतःकडे करायचं, हृदयाकडे बघायचं. नंतर ज्या ज्या चक्रांवर मी सांगते तिकडे चित्त ठेवा आणि उथळपणा थोडासा सोडून द्यायचा. परमेश्वराच्या साम्राज्यात जायला निघाले. त्यांना एक तऱ्हेची गंभीरता पाहिजे, मोठेपणा पाहिजे, थाट पाहिजे. चिल्लर लोकांसारखं वागून कसं चालेल बरं. आता असा प्रश्न 3दा विचारल्यावर उजवा हात खाली पोटावर डावीकडे ठेवायचा. इथे गुरुतत्व असतं. हे खराब झाल्यामुळे अनेक रोग होतात. तेव्हा पोटावर डावीकडे हा हात ठेवायचा. डोळे अगदी उघडू नका कृपा करून, नाहीतर वर चढणारी कुंडलिनी खाली पडेल. आता पोटावर डावीकडे हात ठेवून परत प्रश्न विचारायचा. कारण जर तुम्ही आत्मा आहात तर क्रमप्राप्य आहे की तुम्ही तुमचे गुरु सुद्धा आहात, कारण आत्मा तुमचा गुरु आहे. तेव्हा प्रश्न असा विचारायचा, माताजी मी माझा गुरु आहे का, असा 3दा प्रश्न विचारायचा. मुलाला घेऊन जा बाहेर. असा प्रश्न 3दा विचारा, माताजी मी माझा गुरु आहे का. प्लीज आस्क द क्वेश्चन ऑन युअर लेफ्ट void, whether am I my own guru. Everybody should do it with humility. There should be no bumptiousness about things. One should not be bumptious. Something that they have a right to do what they like is not correct. Try to be humble about it. With the children of Chintraki school, many little Ganeshas in Gauri. Be humble. आता हा उजवा हात ओटीपोटात ठेवा. ओटीपोटात दाबून धरायचं. ओटीपोटातलं चक्र फार महत्वाचं आहे. फार महत्वाचं चक्र आहे ओटीपोट. हे शुद्ध विद्येचं चक्र आहे. ह्या चक्राने पार झाल्यावर तुम्हाला परमेश्वराचे नियम, त्यांचे कायदे कानून, परमेश्वराच्या शक्तीचं कार्य, ती कशी चालवायची, तिचा उपयोग कसा करून घ्यायचा, हे सगळं जाणलं जातं. पण ती विद्या तुम्ही मागितल्याशिवाय मी तुमच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. म्हणून तुम्ही असं म्हणायचं, माताजी मला शुद्ध विद्या आपण कृपा करून द्यावी, असं 6दा म्हणा. श्री माताजी मला कृपा करून आपण श्री विद्या किंवा शुद्ध विद्या, निर्मल विद्या ही द्यावी. Many Sahajogis
who have been very fortunate to hear my lectures think that they know a lot about Satyug and they can do what they like, they can commit mistakes and do the way they want to live. It's not true, it's not correct. You have to be absolutely one with your mother, first of all. And secondly, you must develop your depth. This outside knowledge is Shabda Jalam. So be careful, because ego is a very vulnerable quantity. So be very, very careful. Do not just shoot off with the idea that you have something special and you can go with your balloon again into that trip. Be careful. Try to pull down that balloon of yours down immediately. So I don't know anything about surgery. Please put your hand again on the left side of your body, right hand. या ठिकाणी पूर्ण विश्वासाने, कारण तुम्ही आत्मा आहात, तुम्ही शुद्ध विद्या मागून घेतली, त्याची सुरुवात करायची. म्हणजे असं म्हणायचं, माताजी मीच माझा गुरु आहे, असं पूर्ण विश्वासाने म्हणायचं. कारण शुद्ध विद्या तुम्ही मागून घेतली आहे, ती दिली की नाही ते आता तुम्हाला दिसेल. पूर्ण विश्वासाने दादा म्हणायचं. विथ ऑल फुल कॉन्फिडन्स प्लीज से, मदर आय एम माय गुरु. You are already, remember that. When you want to talk about Sahaja Yoga, you should remember there should be no bumptiousness about yourself. Your own guru, and I am your guru. Ego is the greatest enemy of any sadhaka. So never get into that trip again in a subtler way also. साधा म्हटल्यावरती उजवा हात उधार ठेवायचा. Please keep your right hand on your heart. Heart is the abode of your spirit. Spirit reflects God Almighty. It reflects, it is not God Almighty. Actually, it kills your ego. By killing your ego only it can reflect, because ego makes the image of God absolutely blurred. Nobody should think that in Sahaja Yoga somebody is
better off than others, or has a right to say something which is not coordinated with the Sahaja system. First of all, nobody should try to show off. Like somebody was telling me that a gentleman came and told them that I know some higher tricks or a better technique and all that nonsense. All ego-oriented people get very much impressed by that because that satisfies their ego. They think they'll have higher techniques. You have to go deeper and deeper into yourself. And the first sign of that is you become egoless. With the balloon on your head, how can you go down? Now, please say it 12 times. 12दा म्हणा. उदार हात ठेवून माताजी मी आत्मा आहे. Please say, Mother, I am the Spirit. Spirit is not a dazzling brilliance. It's not glamorous thing. It is a soothing, beautiful flame of love. आता हा उजवा हात डावीकडे खांद्यावर ठेवायचा मानेच्या जवळ. खांद्यावर मानेच्या जवळ डावीकडे ठेवायचा उजवा हात. प्लीज पुट युअर राईट हँड ऑन युअर लेफ्ट विशुद्धी. दिस इज द प्लेस वेयर द ईगो एस्केप्स. उस शिव की आज हम अपने अंदर पूजा करें. वो हमारे अंदर प्रतिबिंबित है. या ठिकाणी के जागरण से तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे की आत्मा हा निर्दोष आहे. जाना त्याला दोष नसतात. तेव्हा मी दोषी आहे, मी दोषी आहे असं म्हणून खरोखर आपण आपला अहंकार त्याच्यात लपवत असतो. तेव्हा मी आत्मा आहे आणि मी निर्दोष आहे असं 16दा म्हणा. Please say, Mother, I am not guilty, because to say that I am guilty itself is hiding your arrogance. It's a kind of a camouflage. Your ego. पूरी तरह से ले जाने के लिए माताजी मी निर्दोष आहे कारण मी आत्मा आहे असं 16दा म्हणा. लेफ्ट नाभी एंड हार्ट. सोळादा म्हणा. I am the spirit and I am guiltless.
I am the spirit and I am guiltless. मी आत्मा आहे आणि मी निर्दोष आहे. और ये बड़ी बड़ी बात है कि हर बार जब सहयोगीज from abroad should really ask for forgiveness. The heart, the way it is catching. Twelve times. On the आता हा उजवा हात आपल्या कपाळावर आडवा ठेवायचा. कपाळावर आडवा ठेवू असं म्हणायचं की माताजी मी सर्वांना क्षमा केली. हे पण फार मोठं काम आहे. जर तुम्ही क्षमा नाही केली तर तुम्हीच त्याचं सहन करून राहिलाय. ज्या माणसाला क्षमा नाही केली तो मजेत आहे. तेव्हा नुसतं म्हणा की माताजी मी क्षमा केली तर तुमचा बोजा हलका होईल बेटे. तो करायचा आहे का नाही. तेव्हा पूर्ण हृदयाने असं म्हणायचं की माताजी मी सर्वांना क्षमा केली. सहयोगीज from abroad should say, please forgive us because we forgive those who trespass against us. Indians have the superego and you have the ego. I have to fight on both the sides. आता हा उजवा हात डोक्यावर ठेवायचा. Please put it on your head, on the 14th bone. तळ हात आपल्या टाळूवर ठेवायचा. लक्ष द्यायचं. आता हे फार महत्वाचं काम आहे. इथेच मोक्षाचा मार्ग आहे. इथेच ब्रह्मरंध्र आहे. पण लक्ष द्यायचं. लक्ष दिलं पाहिजे. दक्ष असायला पाहिजे. दक्ष. Please pay attention to your Sahasrara. Surrender yourself. Completely surrender to your Sahasrara. आता या ठिकाणी कारण आपल्याला मोक्ष हवा. मी आपल्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. आपली स्वतंत्रता ही माझी मर्यादा आहे. तेव्हा आपण नम्रपणाने असं म्हणायचं माताजी मला आत्मसाक्षात्कार हवा. तो कृपा करून आपण द्यावा. असं आपण साधा म्हटल्याशिवाय मी हे कार्य करू शकत नाही. तेव्हा डोक्यावरती हात थोडासा दाबून धरायचा आणि फिरवायचा घड्याळाच्या काट्यासारखा. आणि असं साधा म्हणायचं. आता उजवा हात खाली ठेवा. डोळे उघडू नका. उजवा हात खाली ठेवायचा. आता डावा हात डोक्यावर ठेवून 4-5 इंच वर धरून बघा हातात गार येत आहे का. जैसे कि नाटक का किसी
येतंय का? आता दुसरा हात ठेवून प्लीज कीप अनदर सीक्वेंस. बी सरेंडर, बी सरेंडर. आता दोन्ही हात वर करा. प्लीज पुट बोथ युअर हँड्स अप अगेन. जस्ट इन अ सरेंडरिंग, सरेंडर टू गॉड्स ग्रेस. आता असा प्रश्न विचारायचा की माताजी ही ब्रह्मशक्ती आहे का? ही देवाची ब्रह्मशक्ती आहे का ज्यांनी सर्व जिवंत कार्य होतात, ज्यांनी फुलांची फळं होतात, आमचं हृदय चालतं, तीच ही शक्ती आहे का असा प्रश्न विचारायचा. वो सारे समाज में इतना सुंदर चित्र कर देता है सिवाय हंसी के आपको आता हात खाली आणि बघा. बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो सिर्फ दिखने को गंभीर लगती है लेकिन स्टडी योरसेल्फ, स्टडी. एक बड़ा बड़ा हुआ संदेश. Whatever was there is not there anymore. So study yourself. Now don't think about it. Just forget it. Being thoughtless about this. Things have to be cleansed out sometimes. आता निर्विचारिता आली. Look at these people. Just see them. Tremendous. आता एक वचन द्यायचं आईला की आम्हाला जे मिळालेलं आहे ते आम्ही वाढवणार, त्याच्यामध्ये प्रगती करणार आणि वृक्ष होणार आणि या देशाचंच नाही पण सर्व जगाचं कल्याण करणार. आता बंधन कसं घालून घ्यायचं ते बघा. डावीकडून असा हात उचलून उजवीकडे घालायचा साधा म्हणजे बंधन होतं. हे घरातून बाहेर जायच्या आधी, झोपायच्या आधी घालायचं म्हणजे आपल्याला संरक्षण असतं आईचं. 2 3 4 5 6 आणि 7 व्यवस्थित घालून घ्यायचं. आता कुंडलिनी स्वतःची कशी उचलायची. असा हात समोर कुंडलिनी समोर ठेवायचा. हात असा फिरवायचा. डोक्यावर यायचा, खांदे मोकळे सोडायचे, आलाशी मागे टाकून वर बघून उतळे घालायचे आणि मग एक गाय परत नम्रतेने नम्रते परत. Push back your head. Go. You must loosen your shoulders because Vishuddhi must get completely released. Okay, let's try. Wash the hand. Wash the left hand and the speed should not be so quick. Slowly. Speed should be less. Now, with respect, now push back your head. 1 2 3. Now see. बघा. ये सारे शब्द आप छूट जाने चाहिए. तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रकाश यही है कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना और कहते मन को जो वश में रखो, कोई किसी को वश में रखने की जरूरत. जैसे आप आत्म साक्षात्कार में जाते
ही आपके अंधकार दूरी हो जाए। ये बड़ा भारी लाभ है और जिसने इस लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं किया उसको ये सोचना चाहिए कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से नहीं हुआ है तो हमारा जीवन हमारे आसपास के समाज में हमारे स्वयं के समाज में हर जगह नवीन तरह का भविष्य तैयार होना चाहिए जो आत्मा O Lord Vishnu, I pray to you, grant me son. O Lord Vishnu, I pray to thee, grant me son. ये विचार नहीं कि मुझे ये चाहिए ये तो कोई मुझे बात नहीं मैं बेटे के पैर से शादी करना कौन से कपड़े पहनेंगे कौन से रंग के ना 10 दिन पहले उसके कपड़े बनेंगे The gods are pleased with you and will answer your prayers. Take this divine nectar, Harisan, to your wives. Let them drink it, and they will be blessed with sex. और उनके साथी भी जो थे वो भी उन्हीं जैसे इसका प्रतीक रूप से अर्थ होता है आपके पास शारीरिक कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो जब तक आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर है कोई सी भी आप कैसे भी आपके अंदर आत्मा का प्रकाश है तो शिव आपको मानते हैं और अपनी बरात में राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी अचरजु ना मनहि इनके विमल विचार. Rama is infinite, infinite of its virtues, and immeasurable the dimensions of his story. पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल दें क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मानता है और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया गया. Dear sage, we are blessed and honored by your presence here. But this is a surprise. If we had known you were coming, we'd have prepared a more fitting welcome. I'm afraid I'm not here for pleasure. I'm yours to command. Ask and it shall be granted. You grant my request even before hearing it? Whatever you may ask for is God's own desire. My entire kingdom is at your disposal. There is some trouble in the forest. Some Rakshasas, Maricha and Sabha, are disrupting our sacred rituals. Well, we'll soon put a stop to that. My army is at your command. That will not be necessary. It is sufficient that Rama comes with me. Rama? But that's impossible.
Rama's just a boy. He's not even 16 yet. How could he face even one Rakshasa? Under my instruction, he will kill the Rakshasas without any difficulty. But why Rama? When you can have my entire army, and I will personally lead it and cut the Rakshasas to pieces. Are you refusing to obey, to honor your promise? Very well. I will have to bear the tiresome mischief of some Rakshasas. But you, how will you live with the dishonor of a broken promise? Which is worse, I wonder? Vashista, my guru, tell me what I must do. Your Majesty, are you forgetting that you are the defender of Dharma? A king cannot go back on his word. Let Rama go with Vishwamitra. Have no fear. What harm can he come to under Vishwamitra's protection? Call Prince Rama. Father, you call me. Rama. My boy. Sage Vishwamitra has many things to teach you. Go into the forest with him. It will be your initiation as a Kshatriya. My heart is full of joy to obey your wishes, Father. Great blessing to be a disciple of the divine Sage coming to you. I will obey like a father. God bless you. Father, may I go with you? Yes, Lakshmana. God bless you. A wise decision. Rama's name and your kingdom will be glorified by his heroic deeds. Come in. This is the forest of Dandaka. Once upon a time, it was a beautiful and fertile land. Now, no one dares to come here anymore. Taraka, a she-devil, came and destroyed everything. Gurudev, with your permission, I will kill Taraka. She sleeps. So let's do something to wake her. Come out! Are troubling her already, I think. Rama, Lakshmana, use your powers. Let us say no in that. Who dares enter my kingdom? Who are you?
You have been born for a divine purpose, to protect what is holy and restore Dharma on earth. But you will need divine weapons to fulfill your task. This is an honor that we have done now. It is my destiny to teach the sons of Dasaratha to assume their innate powers. Gurudev, it is we must bow to you. And royal Let us go now. It is still a long way to the ashram. Remove the base. After ridding the forest of the evil demons, sage Vishwamitra brought Rama and Lakshmana to another kingdom, where a great king ruled, King Janaka. King Janaka had been blessed with a daughter named Sita, who was born from Mother Earth.
We go there on the day of her betrothal. King Janaka's palace was full of royal candidates who had come. भय सब सुखी देखी देव भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाथा मूर्ति मधुर मनोहर भेउ विदेहु विदेहु विशेषी। बोलो सियावर श्री रामचंद्र की जय। All were delighted to see the two brothers. Tears rushed to their eyes, and their bodies. Behold Rama's sweet appearance, King Janaka was particularly beside himself with joy. Who are these two young men? They have a royal bearing. Yes, they are the sons of King Dasaratha, Prince Rama and Lakshmana of the Solar dynasty. On their way here, they killed Maricha and Sabha, who were disrupting our holy observances. Wow, very good. So let them try in the tournament. O my king, with your permission, I will try. Spoil the party? Someone forgot to send me an invitation. No, don't bother to apologize. I wouldn't forgive you anyway. Ah, there she is. How dare you to speak to us with such an insolence? My. What a beauty. Take away your sinful eyes and your barbed tongue from here. I am a king too. Am I not worthy of your daughter? Oh, what a king. What a prince. The measure of royalty is the degree of respect to the elders and to the Rajkumari. You better go away before you are escorted by my guards. A fine speech! But this contest is open to everyone. Your words, not mine. Go away. Go away. Otherwise I strike you to the ground. What is a king if his word is not his bond? Vishwamitra, you are the expert on these matters. Would you not agree with me? Let it be. If you say so, let it be for the sake of Dharma.
I bless you. May your divine destiny unfold. Go and inform King Dasharat and prepare for the wedding. Younger brothers are the graceful swell in the river, which is the source of delight to all. Those who rejoice and experience a thrill of joy in narrating or hearing the story are the pious souls who happily bathe in its waters. My eternal partner, we are united together again. My Lord, I will always be near you and follow you in the paths of Dharma. I will always protect you and our children from danger and evil, and I will only be complete when you are with me. O Ram, my Lord, marriage is eternal union of love. O Sita, my beloved Shakti, love is an eternal separation and reunion. May the flame of our divine love enlighten the hearts of all men and women in eternity.
già preso, giuro che ti do. Buio, Ezio, buio. No! No! Go away! I'm not ready yet! No! No! Go away! No! My lord, it's all right. It's all right. It's not all right. It was terrible. I saw the face of Yama, the face of death. Death? Who's death? What do you mean? Where is Rama? Rama, our sons are asleep. Fetch him immediately. Can't it wait till morning? No. Rama must be my heir. We will have a ceremony to anoint him tomorrow morning. Buio. Oh, misfortune! Misfortune! You have no idea of the calamity which is on your head. It's the end of all our dreams. Stop speaking in riddles, Mantara. Tell me what's happened. Dasarata has betrayed us. Rama's going to be the next king of Ayodhya. King of the whole world. With all due respect, Your Highness, how can you just sit there? It made my blood boil to think that your son Bharata will be ruled by Rama. Look around you while you still can. Soon, you won't to see any of this again. Gone. Gone! All of this! And servants. All those who serve you faithfully will also be out on the street. How can you say such things? My queen, is obvious as a day and night. Tomorrow, when Rama is king, Bharata will become his slave. Is that what you want? Can't you see what will happen? You don't know what you're saying. He wouldn't do such a thing. Besides, he's the eldest. It is right for it to become king. There is no jealousy between the boys. Why should I worry? My poor queen, how sweet and innocent you are. Can't you see that Kausalya's always been jealous of you? Kausalya? Jealous of me? Can't you see what Kausalya's done behind your back? She has mesmerized Dasarata to favor her son. As soon as Rama become a king, Kausalya will become first slave. You lose your privilege, and Bharata's life will be in danger. Can Kausalya be so cruel? Oh, Mantara, I'm afraid now. What must I do? Tell me! How can a servant put herself in a queen's shoes? But as a mother, I know I will do anything
to save my son. Even if me crossing my own husband. You are right. But how? It's too late to stop the ceremony. I still deserve. Of course. It's obvious. Bharata must be crowned king. Stand on Rama. It is Rama who must go into exile, no Bharata. But how? There is a... If your majesty, King Dasaratha, made your promise when you save his life in the field of battle. Yes. Yes, I remember. Give me 2 books. पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्ययुग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मानता है और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाए और बाकी सब बाह्य के उसके अवलंबन है। आत्मा में हम अपने पिता प्रभु का प्रतिबिंब देखते हैं। कल आपको आत्मा के बारे में मैंने बताया, वही को पूरी तरह से ले जाने के लिए हमें जरूरी है कि ये समझ लेना चाहिए कि उसकी तैयारी क्या होती है। जैसे एक कंदील में आपने जोत बार दी, of Ayodhya. Is Bharata's right? Hey, what's the matter? Has something happened? Has that wretched servant upset you? Have I done something to offend you? Okay, I know we haven't spent much time together, but it breaks my heart to see you upset. If there's something you need, ask me for anything, and it's yours. Is that a promise? Yes, of course. Swear it on the name of Rama. Does it make any difference? All right, all right. If it makes you happy, I promise on the name of Rama. The sun and the moon and all the elements, they are witness to your promise. Do you remember once when you were injured on the battlefield? Yes, of course. You saved my life. You pulled me to safety. I couldn't live without you. My life, the woman's life, was worthless without a husband to protect her. KK, you are the most precious thing in my life. Apart from Rama, of course. Yes, of course. Rama. My dear, what is it? You said, you have given me a second life, and so I'll grant you 2 boons. Yes, I haven't forgotten. I couldn't ask for anything. I was just happy that you have survived. KK, my word is my bond. You can have those boons right now. Can you promise it on Rama's name? Yes, I promise. A Kshatriya never breaks his promise. Does he? No, of course not. But KK, why all this ceremony? Just ask me. And if it's within my power, you shall have them. Very well. My first wish is that one day Bharata sits on the throne of Ayodhya. Bharat? On the throne of Ayodhya? My second wish is that Rama must go to live in the forest of Dandaka for 14 years. I cannot grant you those boons. Do you
want him know that the king of a solar dynasty went back on his promise? Okay, my own soul, you have tricked and betrayed me. Who put you up to this? Who? Have I not loved you enough? Ask me for anything else. All the servants you need. I'll give you the finest jewels and precious stones and clothes and silks. I'll give you all the gold in my treasury. I'll give you all the palaces in my kingdom. I should rather have died on the field of battle than betray the spirit of Dharma. Ha! Dharma. Yes, Dharma. Dharma is measured by the degree of mercy and discretion by which it is enforced. Nothing will move you, I can see that. Petty jealousy and greed have hardened your heart. So be it. Granting your wishes will be my last act as king. A king's word is his bond. My word has become a curse. सदा ना रहेगा जमाना किसी का जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए Will Sita endure separation from his spouse, or Lakshmana stay home? Will Bharata enjoy the kingship of Ayodhya, or the king Dasarata survive without Rama? Now the fight for Dharma will really begin. From forest to palace, from city to city, our grand story becomes a battle for the good. ये प्रूफ है, इसको साइंस मानती है। पूरे संसार में घूम रहे हैं। Sita, my life is dangerous too. I will have to, after you, I will be too worried for you. Really, my lord? Sita, it's just that I would be far happier knowing that you are here, safe in Ayodhya. Staying in Ayodhya would only lighten the load of Kaikeyi's conscience. I would rather wear animal skin and walk barefoot in the forest than give her that satisfaction. It is my duty to stand by you. A husband's dharma is also his wife's. If Ram has to go to the forest, that includes also Sita, who is a part of him. I will walk in front of you and bend all the thorns and make the ground soft for your feet. Take pity on me, or I will die. Sita ji, I do appreciate your words and your devotion. The fact that you are prepared to leave everything that we have here in Ayodhya to follow me. But
forest is too dangerous. No lion or tiger or bear or snake can harm us. Nothing frightens me when I'm near you. How can I say no to you? Hey, don't forget me, Ram. No, I'm your right hand in action. You cannot leave me behind. Lakshman, nothing will ever separate us. We're the same spirit, same being. तो इस बंसी की आवाज जो भावना से जो आता है व्यक्ति, वो कान लगा के सुनता है तो उसको बंसी की आवाज सुनाई देती है। तो इसलिए यहाँ पे बंसी पर धाम रखा गया है जी। बंसी पर कुछ पहचान है इसकी? It's too late for repentance now. भगवान की पहचान King is पेड़ है, dead. अंदर पेड़ है, हाँ अंदर पेड़ है, उसमें बंसी का Come, Shree. Your servant. Now, you must rest and take your place among the enemies. Ram does not need you anymore. Forgive me, Shree. It was an instant. Come. देखिए आज हमारे यहाँ कलकत्ता में है और ये सामने हमारी बहन है और ये कार्य कर रही हैं कुछ।
here? Why is everyone so silent? Your father has passed away. What? लाइव कर दिया मैंने गुरुजी। चलो ये शटल लगाओ लाइव, बैनर लो। हाँ जी। और बाकी के? बाकी आ रहे हैं। बाकी तो रिक्शा में ही तो। मैं तो सब लेके आता हूँ। Father! Of what illness did he die? It was no illness. He died of grief. Grief? And where is our brother Ram? Only your mother can answer that one. Father? What do you mean? Father made me reserve before dying. And my son, Ram has left Ayodhya to live in the forest with Sita and Lakshmana. It was she! She poisoned our mother mind and sent our father to send Ram away and make you king. I cut your heart out and feed it to the battle! Remember what our father said. He gave up his life, but not his word. He did not divide. She didn't get what she deserved. आगे क्या फिर? Bring back our brother Ram. And for you, बाद में चलेगी। you're no longer my mother. You're no longer my mother. लिंक दे दो आप उनको। जन जाए खाए रे मन को जन जाए सर्वनिवासी साड़े सर्वनिवासी साड़े पाटोई संग समाय कोई संग समाय आए रे भोजन जाए आए रे भोजन जाए। Can you turn the mics off, please? Mics off. चलो चलो आगे चलो। अरे यहाँ प्रेस पुष्पमाल्य जो पास बसते पुष्पमाल्य जो पास बसते मुकुर माय जस चाहे मुकुर माय जस चाहे ऐसे हरि पास निरंतर ऐसे हरि पास निरंतर गत ही खोजो भाई गत ही खोजो भाई आए रे बन खोजन जाए आए रे
भोजन जाए। बाहर भीतर कई जाने, बाहर भीतर कई जाने, या गुरु ज्ञान गताए, जा गुरु ज्ञान बताए। जानना न कबिन आपचीन, जानना न कबिन आपचीन, मिटे न भरम की गाय, मिटे न भरम की गाय। गाय बन भोजन जाए, गाय रे बन भोजन जाए। पुष्पमाल्य जो बास बसते, पुष्पमाल्य जो बास बसते हैं, पुष्पमाल्य जो बास बसते हैं, मुकुर माय जस जाय, मुकुर माय जस जाय। ऐसे ही हरि बसे निरंतर, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, गतहि को जो पाए, गतहि को जो पाए। गाए रे भोजन जाए, गाए रे भोजन जाए। हर बनिवासी सदा आएव, सर बनिवासी सदा आएव, धोई संग समाए, धोई संग समाए। आए रे मन भोजन जाए, गाए रे बन भोजन जाए।
हम आ गए, खाना खाना खाया, फिर करेंगे और वहाँ हम पहुँचे तो उसमें ऐसी दुर्गा की बहुत अच्छी फोटो लगा तो जब Adesso accende. Ok. Nino. May the splendor of Rama's lotus-like face, which neither grew brighter at the prospect of his being installed on the throne of Ayodhya, nor was saddened by a painful experience of exile to the forest, ever bring me sweet happiness. I adore Rama, the lord of Raghu's race, whose limbs are delicate and dark as the dark blue lotus, who has Sita enthroned on his left side, and who holds in his hand powerful arrows and a graceful bow.
Maybe a rabbit or something. Relax, take some food. I tell you, It's not again. there's someone there. Who goes there? Identify yourself. Oh, lady. I used to live in the forest. Are you lost? I've been picking bear in the forest for Shree. I've heard he's nearby. I'm chasing each one myself to make sure that the best. I wish you luck to your soul. I saw him there. Mother, you must be tired. You have to come and rest with us, please. This is my wife, Sita. Do sit with us. Share some food. I hope you'll accept this simple offering of fruit. पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं, वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है और तब आपको से नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। Okay. This time is approaching. This brother is going to have your kingdom. He wants us to be killed. Please don't steal my arrow this time. I know. Bharat, and our My duty for you, kingdom of Father is concerned. He is no more. He died taking your name. Are you joking? Tell me, are you joking? He is no more. Dad!
Brother, please come back to Ayodhya and give blessings to your subjects. Stand way of death. Here, back and forth. Feel my father's. You, Bharat, must return to Ayodhya and serve the kingdom well. A king must be righteous and generous, like our father was. And you, Bharat, you have all these qualities. Brother, I implore you, please come back to Ayodhya. I will sit here until I die if you don't come. My child, this is not right. Please don't go against your dharma. Brother, you are my father, my God, and your desire is my dharma. I don't know what to do. Please, I beg you, give me your sandals, for this sandal shall reign on the thrones of Ayodhya until you return. Beats. Virtue. But you know, my brother Lakshman over there is very strong and handsome. And he's not married yet. Why don't you have a try on him? Oh, my hero. Come and face your love in the forest of I can see you are a beautiful princess. I can see. But I'm only Prince Rama's slave, and you deserve better than that. So, ask him again. I'm sure you will win him over. Hit that woman. He's the only obstacle between us.
Not to kill me? It was Rama, son of Dasharatha, king of the Solar dynasty. Of the strength of 1,000 lions, he gave us all, not even your brothers, Kara and Vishasana, to stand his might. Drink his blood. But sire, Ram is invincible. Not even you can kill him, unless... No. He's invincible. Except for me. Do you understand? She was the most beautiful woman in the world. And she was just for you. So I'll try to bring her back to you. I'm not trying to just get we don't want us to never be beautiful. I've seen that again. I found your sister. I found yourself. When Caesar is left alone, I will take. Ravana, I have warned you of the consequences. Look at the beautiful deer. Isn't it the most wonderful creature that you've ever seen? That's not a normal animal. It must be a trick played by Rakshasas. Oh, Ram, won't you catch it for me? I never lost anything. Soon we'll be back here again, and I'd like to present it to her. Please, please. Help! Lakshman! Help! Lakshman, quick! Can't you hear your brother's cries for help? The voice that we have heard is not his. Don't be afraid, sister. He will come back safe and sound. Help! Help! Lakshmana, why don't you go and help him? Why do you stand there ignoring his cries for help? Are you also going to betray Ram by letting him die? Lakshmana, help! Lakshmana, go immediately. If you don't go, I will light this fire and put myself in it. Goddess! How can such words come out from your mouth? They wound my heart and burn my ears. Why? Why do you want to punish me that way?
I will obey you. I will disobey Rama. But stay inside this band and never go away. Oscar. I'm old. I've been traveling. I need some refreshment. Forgive me, Rishi, but please stay there. I'll get you some food. What are you doing all alone in the forest? Who are you? Ram! Lakshman, where are you? Come to Lanka! Be my wife! If you value your lives, go away! Go away immediately! Ram! Lakshman, hurry! Rescue me! Help! Help! Quando parliamo? Get away alive! I am old. Have any weapon. You! Let's see your tenet. Roll on the ground! Stupid bird! Oh, Jatai, my beloved friend, you gave your life for me. I bless you. Oh, divine goddess. Your tears are for me, Sriracha. Shoot my words. And so, I will die in peace. Jai Shri Adi Shanti. Jai Sitaram. Enough! Namo Namah. Come, my queen! Help me! Rescue me, Ram! Where are Sita! We stop here. This is the end, Lakshmana. The Rakshasas must have killed my beloved. And I want to die as well. There's no reason for me to live without Sita. Ram, don't despair. We will find Sita. I promise you. Look, over there. What is it? Ravana took Sita away to Lanka. Please, forgive me. I fought with him until my last breath, but my age betrayed me. Please, give me your blessing. Father. Ravana,
Don't be afraid. You will find Sita. She is protected. Where you lost, where you find the lost treasure, the joy will come back in your heart. Sugriva will like you. Looking for Sugriva in the forest. O King of the Eagles, you shall be blessed for your sacrifice and your devotion. You will always be remembered for that. Run, don't despair. We will find Sita. Let's go and search for Sugriva. Forza ragazzi, a voi, grazie. Listen. Listen. Who is there? Is it my brother who comes to kill me? Hanuman, go and see, but be careful. Don't worry, my lord. I will be back in no time. Saint, the light of your presence fill my heart with joy and make the forest sparkle. I am Hanuman, son of Vayu, minister of King Sugriva, who lives in the forest. I dress like a Brahmin to find out who you are. But your loving grace is flowing so strongly in my heart that I can't help but bowing to you. We are here to ask your King Sugriva help. The horrible Rakshasas Ravana has kidnapped Sita, the beloved wife of Sri Rama, the king of Ayodhya. So please, royal saints, come with me. My king will be blessed by your presence. Sita. Sita, of course. It is my honor, O noble Ram, to serve you and help you to find the Princess Sita. My friend,
We will always be brothers. Look, Ram, Lakshman, look, all this army is for you. My soldiers, get ready. We have a great task to fulfill. The goddess Sita, Rama's spouse, has been taken away by Ravana. My command is, go forth, my army! Hey! And look for her in every corner of the world. Don't come back unless you have a good news. Hurry! Like lighting in the sky! Hey! Hanuman, son of Vayu, only you, with your splendor and courage, can find the Princess Sita. Go, Hanuman, and lead the army. Go. Hanuman, please. Bring this ring to my Sitaji. Tell her not to despair. Tell her she's always in my heart. My lord, Sri Sita, we received your message. Booyah. Bit further back. Sri Sita's strength and chastity fill the many universes with her love of Sri Rama. Divine Mother Janaki, you bestow the 8 yogic powers on Hanuman. Let us now see the destined drama unfold. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ramachandra Krupalu Bhajamana Harana Bhavabhaya Darunam Shri Ramachandra Krupalu Bhajamana Harana Bhavabhaya Darunam Navakanjalochana Kanjamukha
कर कंज पद कंजारुणम श्रीराम श्रीराम. How can that be? In such a far-off evil place, I hear the sound of someone praising Sri Ram. Is it some devilish magic playing tricks with my ears? And now I am seeing things too. Is that our beloved Sita sitting there in front of me? Oh, it is truly mine, the fortune and the bliss of seeing you, Sita. I bow to your lotus feet, O beloved mother. Essence of Dharma, infinite, all-pervading, and compassionate love. I bow to you, Sri Sita. Salutation, salutation to you again and again, who are the pure energy, Sri Adi Shakti. Salutation to you, who are the creator of everything, the creator of Maya. Salutation to you, O Divine Mother. पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं, वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। Lady of Ayodhya, by command of the all-powerful, all-worshipful, all-resplendent God Ravi, I've been authorized to offer you this extremely precious and beautiful gift. My lady, you haven't even seen what it is. Narada has never before given attention to anyone. Please accept. No, Mother. I am Hanuman. I am just one of the thousands who have committed their lives to finding you again. Oh, Mother, I found you just by chance, because I was attracted by the sound of someone singing the praise of Sri Ram.
Oh, mother, since your abduction, it has been impossible to console him. He devotes all his time and energy to the search for you. His only desire is to have you once again at his side. And that is the only desire of us all. And where is he now? Oh, mother, he's waiting for you. So please, let me take you to him. See, mother, while I was looking for you, I discovered all the secrets of this infernal city. Getting out will be very easy. Hanuman, listen to me. You must leave me here. But Hanuman, you must leave me here. Let's go to Lord Ram. Tell him that. But mother, how can I leave you here? If anything were to happen to you, Nothing will happen to me. Lord Ravana doesn't dare touch me. But mother, how will I face my friends and companions, knowing that I didn't save you when I could? Hanuman, it is not your job to save me. This for Lord Ram. Revenge for this humiliation. He is my husband. He's the king. I will be saved. Oh, mother, I'm humbled by your courage. I will do as you say. What? Again? I don't believe this! I won't believe it! Go and take my message to Ram. Escape! You idiot! You foul-breathed donkey! Take me to her now! Do you have even the slightest idea who I am? I am Ravana, Lord of the Three Worlds! I could have you killed by just clicking my fingers. There are thousands of women out there who would do anything to be in your shoes. But no. The high and mighty Shree Sita won't even look at the gifts I sent her! There isn't a woman in history who has received such gifts as the gifts I send to you. Who exactly is going to kill you? Your puny little Rama? I mean, what did he do to inspire such blind faith and devotion? He couldn't even offer you a place to live. When I found you, you had nothing. You were wandering in the forest alone, with nothing to eat. And just look. Look at what I'm offering you instead. You didn't find me. You abducted me. Nothing will change that. Just as nothing you say or do will change the fact that I'm married to Lord Ram. But you deserve more than that. Don't you see? Do you have any idea at all about who you are? You're Adi Shakti. You're the Devi. I know very well who I am. But the question is, do you? If you say that I'm the Devi, then you should be knowing that you're playing a very dangerous game by challenging my chastity. So marry me, Shree Sita. Refuse my Shakti. The whole world will fall at our feet. Hanuman, I know. What? I said I won't marry you. You said something else. I may be ugly, but I'm not stupid.
Who are you speaking to? Ha! Guards! Guards! Tie him up! Hanumana, what are you doing? Don't worry, mother. I have a plan. Silence, monkey! Guard! Bring me the torch! I'll show you how we deal with traitors in Lanka. Guards! Stop that monkey! Cut off his tails, you morons! Ah! Oh! No! Stop that monkey! Stop him You will pay for this. You will pay dearly for this. Mi pigliamata. Mi pigliamata. Si avviato. Fuori, fuori, portatelo fuori. Dying first. Sweat. Yes, we die of think over. The battle begins, and like the rhythmic steps of a dance designed in heaven, the battle is not easily won. Thus is its Dharma. At last the battle begins, and like the rhythmic steps of a dance designed in heaven, the battle is not easily won. Thus is its Dharma.
Hallelujah. Chi cazzo è? I'm very proud of you all. Hanuman, accompany me to my quarters. I'm tired after this long day of battle with Ravana. I want to rest and prepare for tomorrow's fight. Indietro da che? Shriram? Yes, Hanuman? Shriram, may I ask you a question? Go ahead, Hanuman. Why? Why didn't you finish off Ravana today? There were several occasions when you could have shot him right to the heart and be done with him. How can I shoot Ravana in his heart when I know that he holds Sri Sita there? In his way, he loves her too. Of all the vile low-down tricks, he knows. He knows that you would never do anything but my discomfort, Sri Sita. So, he's using her as a shield. Shriram, what are we going to do now? The only way, Hanuman, is to distract his attention. That's why I've been shooting at his head. But each time you shoot one off, another one grows in its place. Yes, Hanuman. But the moment his attention will shift from his heart to his head, when that happens, I'll strike him right in the heart. Hey, have you seen how Hanuman is always hanging around Sri Rama? Yeah, you might think that every once in a while, nothing to do. Look at him. And Sri Rama alone. Well, you know, some people have to do all the work and others have to get all the fun. I wish that I could see Ram all day. You are not one of the special few. Yeah, you know, the people that Sri Rama likes to have around, like Hanuman, he obviously prefers him to the likes of us. Excuse me. Couldn't help overhearing what you were saying. I was in Lanka. That is their similar superficiality every day.
I never expected to hear such words here, in this camp. Who are you to criticize us? Who's to say we don't turn against Sri Rama like you turn against your brother? God! You forget yourself! I challenge you to find someone whose loyalty and whose love for Sri Rama are greater than Vibhishana. Please, set back. No mistaken. Their words are said in ignorance. They haven't yet understood the true nature of Lord Rama. Otherwise, they would know that it is absurd to think that he, who is the real essence of Dharma, can love one being more than another. The divine love everyone and everything in the same way. It couldn't be otherwise. But I will tell you one thing. Just as there's no doubt that Lord Rama loves everyone in the same way, it is equally certain that not everyone can please him in the same way. Do you really think you can compare yourselves with Sri Hanumana? Forgive us, brother. Hanuman? Yes, Lord. Please, call Vibhishana. My lord. Vibhishana, Ravana is alone. His army has been destroyed. All his brothers are dead. All of them except you. I want you to know that I will not hold it against you. If you were to feel duty-bound to return to him and fight at his side. My lord, I love Ravana as a brother, and I'm indeed saddened by his predicament. But it is his own doing. I will not be blinded by attachment. You are my Lord. You are my God. You are Dharma itself. Vibhishana, for what you have just said, I will embrace you. My lord, you must strike Ravana in the liver. What? What do you mean? Ravana has got a very good attention. If you want his attention to withdraw from the heart before striking it, then first you must destroy his liver. Vibhishana, as always, your advice is invaluable. We must go now. The time has come. Comedy. So it's the power of your innocence placed there. It doesn't understand. A child doesn't understand. A child doesn't understand sex. It's a child God is placed there. The deity is a child God. And that child God, all of us have got that innocence in us. And that innocence looks after the mother, that is your Kundalini. It wants it. If you try to play any tricks with these nonsensical ideas of having sex with your holy mother, imagine, to say that is also blasphemous, is also sinful. Even to say that, I can tell you. But what to do in this West, I have to say, because you are all reduced to a sex point. To you, sex is so important, I don't understand. It's not necessary to talk about it at all. There's no need to have
teaching on it. I mean, in India, people never talk of it, and they are producing more children than anywhere else. It is to be done in a very spontaneous manner, in a proper manner. Now, this has taken up by many people. I don't know what to say that. But one thing I'll say, you had Christ. I mean, you can't blame God. He never misled you. Christ came on this earth. He very openly said that it is said that thou shalt not commit adultery. But I say thou shalt not have adulterous eyes. To that limit here. Can you imagine? And we have just forgotten all these guidance and these blessings that came to us. And we are taking to these people who are giving us ideas, working on our weakness. By realization, you don't become a weak person, you become strength yourself. You become a powerful personality. I have known people who have been to some gurus, they are even afraid of garlic. Can you imagine? A vegetable like garlic, you show them the garlic and they run. This kind of nonsense is there. They become impotent. Horrible things are happening. You have no idea. All these attacks, all these horrible attacks of the Antichrist, especially in your Los Angeles. God save you people, I say. Really, God save you. You had money, you had speakers, great saints, I came to. I did come 9 years back. I told them I want. Be careful. You are seekers of truth. Ask for truth. Get your realization. I didn't charge any money, of course I didn't charge. That time I had even more money that I have now. So I didn't charge. I had money, so there was no need to charge money. Why should I charge money? How can you charge money for love? All right. If you want to pay, you can pay for the hall, not for me. And when I told them, they just couldn't understand. They had money, ego of money. They thought they can buy God. They said, oh, how can you get to God without paying money? How much money did you pay for Christ? You sold him for 30 rupees, I should say. Today you are going to do the same, to sell yourself. Don't sell God anymore. You have done it quite enough. Please don't sell it. And they said, Mother, you must put some dollars. And he laughed at that time. And then I said, let these people go mad. Let them do their guru shopping. They have so much money, you see. It's too much for them to bear. They will spend this money on some gurus. They will do it. Forget it. Mental. I said, let them go round. We'll see about it. So when I come back, I find they are so damaged. Already identified with wrong things. It's very difficult to give them realization. Very, very difficult. It's very sad. And that's what's happening today. So with this, I will tell you now what we are within ourselves. Now you are not to, again I said, you don't have to be deep, but you should not deny. As a scientist, you must keep your mind open to see what I am saying. And if you receive your realization, of course, if you are fortunate enough, if you receive your realization, you can verify everything. You can find out for yourself, you become the master. You can find out because your fingers get awake. You start feeling the cool breeze from the top of your head. You start feeling the cool breeze around. You can maneuver, you can monitor, you can find out. For yourself, you can give realization to people. For example, we have people here who look just like you. Of course, maybe they have a more light maybe on their faces. They have given realization to thousands of people. You can. You become your own. Now here we have a picture. Today is just an introduction to सहजय.
And tomorrow and day after, I'm going to go into the details of our centers and then how realization helps. What is the spirit? Where the spirit resides? The spirit, I mean the spirit which is Atma and not the dead spirit or dead souls who possess you when you go into madness. The spirit which is above everything else, which watches you, which watches the field, the Kshetragya, which is not in your central nervous system, which has to come into your central nervous system so that it becomes a part and parcel of your awareness. Whatever is in our central nervous system, that's what we have achieved in our evolution. And this should happen to us, that we should become aware of our spirit. This is what is the second birth, is the realization that should happen to you and not some stories that people tell you. If someone feels that now you have become a great Siddha or something like that, if you want to believe in it, you can. But it's artificial. Supposing somebody says you are a multimillionaire, if you believe in it, you can believe it. You may land up in a lunatic asylum with that kind of a belief. Somebody says you are the governor, you don't become the governor. You have to become, actually it should happen to you. And that is what one has to see in Sahaja Yoga. The happening should take place. I would say that it is within you. You are beautiful. You are the spirit. It is within you. You are the seekers of that spirit. And you must just get that within yourself, which is your own. It's like one light which is enlightened, can enlighten another light. As Gregor has told you that I can do it and all that may upset some people. But some people told me that, Mother, why should you be the person doing it? I said, you better do it. It will be good. I'll be very happy to retire. It's a thankless job, I said. If you can do it, nothing like it. But you do so many things which I don't know. I don't know even how to drive a car. I don't know so many things. What can I do? I don't know those things. I know only this. I'm doing this job. So why should you feel hurt that if I'm doing it, it has to be someone? Now supposing I'm doing it, what is there to feel so bad about it? But people do feel bad, so I would like to tell you that you should not get upset with the idea that Mother is doing it. You will do it. पूरे संसार के सभी गुरु, वली, फादर, गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं, वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। So prana shakti. Now those who say that you are conditioned and you must be cleared out are half-baked people, absolutely half-baked and misleading. They don't know there is another shakti inside you. And the balancing of this is very important. If you try just to get rid of this power, which creates your superego by your conditioned, and if you just say that I must correct this, how do you do it? What is the instrument you will use? If you are depressed,
Give auto-suggestions, oh, I'm all right, nothing wrong with me. What do you use to correct that? Is your ego. Because you are no more your spirit. If you are a spirit, then you don't have to use any one of these. But you are your ego and you start telling yourself auto-suggestions, you give, oh, I'm all right, doesn't matter, you give all rational thinking and all those things and try to do it. There are some people who will say that we have too much of conditioning and too much of karma, so we must try to clear it out. There's another theory also goes out like that. Now this is another absurdity. By getting into mud, do you get clean? Supposing you have little mud, what do? You wash it, or do you get into mud again? The people who believe that they can clear out their conditioning through their power of thinking actually are building up their ego. Such people can become very ego-oriented. Absolutely, the ego becomes like a balloon. This is the great blessing of Mr. Freud, who has really ruined the West. That she told us that we should not worry, we should go ahead. And these are all conditionings. We are not our ego. We are our spirit, which we have to become. Now, those people who talk of karmas, and that your karmas are there, most of the gurus do that. I was most surprised when I told me that somebody said that my guru takes 1/16. So I said, what about the rest? The another one was suffering too much. I said, why are you suffering so much? He said, because of my karmas. I said, then what is he doing there? Why are you paying him? Why do you have a retainer? Better chuck him out. So about that, we have done a very big mistake. A very big mistake. I wish people will alert enough to understand the incarnation of Christ. Christ is on this center. This is a center placed in the crossing of the optic chiasma. The very subtle centers which looks after the pituitary and the pineal gland, and the pituitary looks after the ego and the pineal towards the superego. And this cross has been created. Why? Because you raised your head. You raised your head as a human being. It had to be. In your evolution you had to. You raised through this center your head. And once you raised your head, the whole thing started moving like that. And when the ego and superego develop, this thing gets covered and calcified in the fontanelle bone area. And this fontanelle bone area thickens and you become Mr. XYZ. The I-ness develops within you. This is the egg that is formed. Now this egg has to become the bird. The development is going on within yourself, but still you are an egg. Why I said this center is very important from that point of view? Because Christ is the embodiment of that innocence which I told you there. He is the embodiment of this all-pervading power. He is Omkara. And when he was born here and sinchified, as they say, actually he passed through this, creating a space for it. Not only that, but when Kundalini rises from here and touches him, when he is awakened within you, well, they said Christ should be born within you. Now where is Christ? Ask all these people who say about Christianity, Christ. Ask them where is Christ placed within you. They don't know. He is placed here. If this Kundalini in a living process, again, it's not like artificial baptism, you come, I baptize you, love, that is not. When this Kundalini rises and actually awakens this, I mean you can feel it when it awakens, you start feeling extremely relaxed. These two things are sucked in. Your karmas, your conditionings and your ego are sucked in. I mean it's happening. And when that takes place, this opens out and you feel this thing softened. And once it is softened, like Kabira said, Shunya Shikhara Para Anahada Vajide, onto the silent peak, you start hearing the Anahata, is the sound of your heart.
lap. You can feel it. You can see the pulsation of the Kundalini here in some people who have obstructions. You can see the rising of the Kundalini. You can see the thinning down of this bone. And when it pierces through, the sound stops and you start feeling the cool breeze. Now this you cannot do. You can jump, you can change your dresses, you can do all kinds of nonsense yourself which is human. But the divine thing of raising this Kundalini into this, you cannot do it. You try anything. This is what is the divine. And once it starts flowing from there, your karmas are sucked in. I wish these missionaries had gone to India and told them the truth. They never told. It's described already in the Vishnu, Mahavishnu Stotram. I think most of the books that are translated also in English are something misleading, because all these great books like Devi Mahatmyam, Devi Puranam and all these things are not translated. Especially the description of Mahavishnu, who is described very well, who was to come to do this work, special function, to suck your ego and superego. Nobody knows about him in India that he has already come. It is he who is Christ. What they knew about Christ through these horrible missionaries, they went and put a loaf in the well and said, you are all Christians now, because we have put the meat of the beef or meat of the cow inside, and now you are all converted. And all of them became D some place and D that place and D that place. That's how Christianity spread in India. Because Hindus are very sort of susceptible to inauspiciousness, to unholiness. You touch any unholy person, you are finished. You are no more there. If you have done anything wrong, you are no more. If you lead a bad life, or you have to carry on with a woman or a man or something like that, you are finished. So that's how they became, all of them became, you see, Christians, without realizing that Mahavishnu was born already. And he has come on this earth, and he is just there. He was called as Buddha. In the 10 incarnations of Vishnu, he is called as Buddha. This important happening was missed thanks to the insensitivity of the people who took to Christ. They could not understand, so naive. They made a mess of everyone, as it is, I must say, but especially of Christ. And that is how this point was missed. And now everybody is taking advantage of it. Oh, you have done your bad karmas, you better suffer for it. While he has said all your sins and your blasphemies will be forgiven. But the time has come, that thing to happen. So don't feel guilty about whatever you have done, forget it. And the another idea is of suffering should be given up. I don't know why people are carrying on with it. Why should you suffer when he has suffered for you? I mean, did he leave anything for you to suffer? And if you want to suffer, you have it. He suffered for you once for all, and he has really suffered. He has perfected it. The complete thing is perfection. Once is awakened, you'll be amazed how relaxed you feel. Absolutely. And you become that which is promised to you, that you enter into the kingdom of God. That's the limitation. All these centers denote our evolutionary progress. And I will explain about them to you tomorrow in all detail. What do they represent, how they are within us, and how it has to happen. Only thing is that we must know that we should not go too much to the collective consciousness, subconscious, and to the collective supraconscious on the future side. Both things are very dangerous. Whatever cancer patients have cured, without exception, all of them have been infected by the left side, which means the collective subconscious. I saw a very nice film shown by some doctors who were having a research about the cancer disease. And they said that there are some proteins, they call them 58, protein 58, protein 52. They have been photographed, which are living entities.
which attack us and trigger the disease of cancer. And these entities come to us, now they are saying, I said this 10 years back in America, I did say, come to us from areas built within us since our creation, means collective subconscious. Of course, I mean, for them it is unknown, but this is what it is. And if you can raise your kundalini, you'll be amazed. Cancer is only just a byproduct, it can be cured. I mean, cancer can be only cured by kundalini awakening, by no other means. I've said this 10 years back, I've done it, and I'm saying it today. But in your country, I'm told that if I cure cancer of somebody, I'll be arrested. It's a funny situation, doesn't matter. But automatically, if I don't touch you and if you get rid of your cancer, nobody can arrest me, isn't it? So that's how it works out. You have got power to do it. About this, how you get your diseases cured, how your mental side gets cured, and all that, I think I should leave it for tomorrow, and we'll work it out. If you have any questions, because today's first day, ask me some questions. Regarding, just a minute. Take it easy. If you ask too many questions, there's somebody sitting next to you. He also asked questions and ultimately got realization. Before that, don't put your mental activity too much into action. All right? Quieten down a little. Now, relating to what I told you, do not draw me into controversies. What do you think of one Dhonganand and another Bhonganand? I don't want to answer about all these horrible people. For me, they are devils, they are satanics, they are Rakshasas, and they will all go to hell, and all their disciples have to go with them. That's all. I don't want to come into any controversies about them. I've talked about them at length, described them. I know them too well. I've known them for ages, and I knew they were going to come back. And they are back on the stage. Now it is for your wisdom and your understanding to see them. So if you are representing any guru, you better go to him and get it, whatever you want. It's very easy to go to hell. 2 running jumps and go there. But if you have to get realization, you be here. I have to tell you this, because people waste my energy with too much on these points. I don't like it. I don't want to fall into any controversy. All right? Thank you very much. So please ask me a question now. Yes, what do you consider self-realization to be? And now what did I tell you, my child? Or what did I tell you all the while? That in your awareness, you have to become collectively positive. You should be able to tell what's wrong with your center, what's wrong with another center. All right? That's the minimum of it. But it's so much, so great. I'll describe the whole thing also tomorrow, that what is your spirit and how you become that. That is what self-realization is. Not cutting your tongue, putting it back, doing kecheries. All this is not self-realization. It's a happening. You see, all these actions are nothing but moving the wheels and all the dynamo and all that with your hand before starting the car. You have to start the car. First of all, it starts by itself. You don't have to stand on your head to start your car. It is just waiting. It's there. It just has to be started. Only I know the trick, and I'll teach you also. All right? Another question? Any other questions? American trick. Such great people here. Huh? If I've taken Shaktipat from another guru who have pretty powerful vibrations, would that interfere with what you're going to show? Taken Shaktipat from another guru, will this interfere with what you're about to do? Well, if it is not the real guru, it will. Little bit, doesn't matter. Makes no difference. I have seen all sorts now. I have done all permutations and combinations. You see, first we didn't choose to allow anybody who has been to any other guru. Actually, you have to fill in the form. But now, I've mastered it. Don't you worry. I've mastered all this. It's all right. Doesn't matter. Makes no difference whatsoever. See, Kundalini awakening means you must feel the cool breeze in your hand.
of the all-pervading power, and you should be able to monitor it. You should be able to give realization for it. Supposing I say I'm this and this, all right. Why should you believe me? What have you got from it? Only this jumping that you can do. Jogging, everybody is doing here. Isn't it? What have you got? In Sanskrit, the word for selfishness is swart, which is a very good word. Swart. The meaning of swa means self. You must know the meaning of self. That is the greatest selfishness. So you have to be selfish in that sense. You must know your meaning. You must know your absolute. You must become your own master. You must know what you are doing. If somebody says, I am such and such, why do you believe? You are two simple people. Why do you believe anybody can come from the jail direct here, sit down with a big face and you believe him? What did you get? Lost all your money. Got epilepsy. Feeling horrible. Stresses all the time. Permanent stresses are there. What's the you? All right? Doesn't that? Don't you worry. I know many of these guys. Mataji, Yes. what is it that prevents the spontaneous growth of self-realization? What is it? What is it that prevents the spontaneous growth of self-realization? We're all born with it. Why don't we all realize? Yeah. You see, the thing is, you have to recognize. You have to develop your awareness to that point that you recognize. You never recognized any incarnation. You tortured them. Never recognized. If you cannot recognize, you see, like the leaves have to turn to the sun. They innately recognize. They are made like that. You put the leaves hiding from the sun, they will come out. See that? They innately know. But human beings have freedom and a big balloon of an ego. And they cannot recognize. This is the point. And recognition is the only way. You never recognize any one of these incarnations. Only thuggery do, right? The people who mesmerize you have a big circus, that's all. Unless and until you take to reality and recognize reality, you cannot get your realization. This is the point Gregor was trying to make, alright? This is the substance. Because you have freedom. That's what happens. Actually, the growth has to take place, but you have to recognize. For example, you get your realization. Say even otherwise. How will you know? I have met some people who are born realized. They don't know anything. They have to be decoded. They have to be told. The divine has to have a face or a mouth to tell. This is this center, this is this center, that is that, isn't it? Because whatever you see in your unconscious, through your dreams, is so vague. Somebody has to tell you clearly. But anybody who tries to do that, you kill that person. Finished. You don't want to listen to a person like that. That's the trouble with human beings. They are very aggressive. Only a person who is aggressive on you, you submit to that person. This is very true. You submit to a person who tries to aggress you. Like I had a girl from Norway. Sweden. She was from Sweden, yeah. She came to me. She stayed with me. And she was arguing still every day. I mean, I didn't know what sort of a realization she wanted. Actually, I told her that, where did you go before? She said, I went to a lama. The which one? He said he was horrid because he came to us and he said that I can't live on an ordinary floor. I want to have a marble floor. Imagine a man who is a realized soul doesn't bother about it. See, doesn't touch. They don't want Chryslers and Mercedes and Rolls Royces. No. They can sleep anywhere. They can live. They are master of them. They're like kings. Nothing can dominate. But you will recognize a person who has 59 Rolls Royce going in front of him. See, this is the problem. This is the problem. Even I was surprised. I went to... This lady came, she was arguing with me. And she said, he asked for me. And what did you do there?
Oh, we had to go and bow to him 1,008 times. That's the best. And then we had to lock ourselves in a room and all of us had to dance. And they used to be exhausted. Absolutely exhausted. Good for nothing. When she came to me, she was like this, absolutely thin. This is what the gurus, the lamas, you see, those who wanted to have a marble flooring, you see, great feet, they want to have marble flooring. They will have it in the hell very soon. Very good marble flooring for themselves, and all the Mercedes and all these cars on top of their heads. Now, it should happen to you. As you said, we have to discern. Or somebody has to come to ask for you the grace. We have done lots of mistakes. Christ has to be there to ask for forgiveness for us. So, that it should happen to you spontaneously. It's too much to ask. You cannot manage it. You cannot manage. On the contrary, I have seen the people who are born realized are rather difficult. Because they think no end of themselves. They don't know anything about the Kundalini, they don't know about the fingers. They are born realized, no doubt. Some are great. I know I've seen some children who are great. They're born with ideas. Kundalini. They know. In recent years I've seen so many children. In India I've seen so many children. Tremendous. Great people are taking part of themselves. If you don't accept, they are going to take over. This generation is a problem, not the next. Next either we'll have the greatest crooks or the greatest souls coming on. I'm not bothered about them so much, I'm bothered about you. Because you are also seekers. Alright? Yes, my child. Please get up and tell me. Alright, I won't be. Once the Kundalini is risen, what is it that maintains it so that it doesn't dissipate? Well, once the Kundalini has risen, what is it that maintains it so that you don't lose it? That's it. That's just like a seeker. That I'm going to tell you. Everything I'm going to tell you. Not only the maintenance, but raising up others Kundalini, giving realization. Everything I'm going to tell you. That's it. That's the real question. That's what is called as pure knowledge test. The technique, the laws of divine, how to maintain it. Very simple. Also very simple. You can manage it with your own fingers. You can manipulate it. I'll tell you. It's not difficult, alright? That's just like a seeker. Great. Any other question, please? Because when I give you realization, then your brain should not come forward. Oh, didn't ask this question. So please better clear it out. This brain is also, this intellect also can cheat yourself. That's the biggest cheater. Be careful. But that doesn't mean you should become brainless. It doesn't mean that. Another extreme also I must tell you. When I tell them, people say, oh, then we should become brainless. No. Your brain is intact. It is to be enlightened. Once it is enlightened, it starts knowing the truth. You get that power, vibratory awareness we call it. Not hot, but cold vibratory awareness. Not cold also doesn't mean absolutely freezing cold, by which you have discrimination. You discriminate. You immediately know who is a real person, who is a false person, what's wrong with this person, everything you know. Just know it. What's it now?
You better have it, doesn't matter, even if it doesn't happen through your own happening, that somebody does it and you do it for others then. You see, then there is a little obligation. If somebody has done for you, you do it for others. Alright? Like big saints I met who are real saints. I mean, they don't want to come down to America. I sent one of them, he ran away from America in 2 days. 2 days he ran away, he said, I don't like this. They don't want circus of God. They want something so artificial that I just can't manage. So I told him that we have to have patience. He said, why should I have patience with them? What have they done? I have done all this, I have done this, I have done that. Mother, why are you giving them realization? Who are they? I said, all right, it's my will. Forget it. That's what it is. If once you get it like that, you don't give it to others. Any other questions? Now what is this supposed to be? Alright? Is it alright? Should we go in for that? Alright, take out your shoes. Very simple things are there because the Mother Earth takes away our problems. I know it's cold, but still not very cold. I don't know about this. No, you. It's quite okay. Quite alright. No. Few things I'll tell you which you have to do, and then you see the result. Alright? Is first of all is to put your feet straight on the Mother Earth so that all the sole of your foot should touch the Mother Earth. Because the Mother Earth helps us. Everything, even the light helps us. Fire helps us. Everybody helps us. All the nature helps us. You have to just put your hands just like these towards me. Just like simple. Straight. And close your eyes. Keep them comfortably. Be very comfortable. Sit extremely comfortably. If you have something tight, you can make it little loose. Just make your hand like. If there is anything tight, say in your neck or anywhere, very tight, if you feel tight, it's all right. Sit very, very comfortably with both your hands towards you, just like this. And close your eyes. See now, this is what your Guru has done, you see? Now keep your eyes open. This is what has happened. It goes into tantrums. All right, watch me, all right? Just watch. Just keep it. Keep your eyes open, it won't trouble you. Put your hands on the lap, on your lap. Be comfortable, be comfortable. It's the comfort that's important for the body because your attention should be sucked in. Now close your eyes. Close your eyes. Again. If you get again that shaking, anybody who shakes, please open your eyes. If you are shaking. If there is flickering in your eyes, or if there is too much heat in the hands you feel, then open your eyes. Just keep your eyes shut. पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
yourself. Just ask a question, Mother, am I the spirit? Don't move your legs or don't move your body. Keep it quiet. There should be no movement in the body. Let the Kundalini rise. Just ask, Mother, am I the spirit? Now, put your right hand on the left side of your stomach. Left side is the Guru's position. Alright, left side, left. Not right side, left side. Yes, the right hand on the left hand side. This is the Guru's position. Now, ask a question, Mother, am I my own Guru? Ask a question. Close your eyes and ask a question. Am I my own master? Am I my own teacher? Just ask a question. Problems that you have gathered from your false gurus or anything, with your false seeking, with your mistakes, will be corrected with this. Just say that, Mother, am I my own Guru? Now some mistakes have been committed, so we can say that, please forgive me. You can ask for forgiveness. If I have done any mistakes in my ignorance, ask twice. If I have done any mistakes in my ignorance, please forgive me. In my seeking, if I have not paid attention to my spirit, or if I have done any mistakes going to wrong people without understanding, you have to ask for forgiveness. Now, when I say that, I should have told you beforehand that you should not feel guilty. Don't feel guilty about it. You don't have to sulk about it. Don't feel guilty. You are seekers and you are the beloved of God. Whatever you have done doesn't matter. You are all going to be forgiven and have no guilt about it. No guilt of any kind. Say, I am not guilty. Mother, I am not guilty. Say that. You are not guilty of doing any mistakes, and just have to understand the whole thing. That's all. Without feeling guilty, you have to ask for forgiveness. That's very, very important, not to feel guilty. Alright? Now put both the hands towards me, keep your eyes shut, and just say, Mother, make me my own. Just ask first. You have to ask first. You see, I cannot trespass your freedom. It's your freedom. You have to ask. Just ask, Mother, make me my own Guru. Say, this has to be said 10 times.
Because the center of Guru is for 10 times. Ekadashaka clears out. Ekadashaka. Put the fingers towards me. If you want, you can put it in your lap. Be comfortable. But keep the fingers open. Open. Just ask the question. Now, last of all, you please say, Mother, please give me my realization. Please give me my self-realization. You have to ask for it. As I said, I cannot force it. It has to work out. You have to ask for it. It is very subtle. You feel it in your finger, but first of all, you try to feel on top of your head. Put your right hand on top of your head. You might feel the heat coming out of your head, first of all. Just above the head. Just above the head. About 3 to 6 inches above the head. Oh. If there's heat coming out, don't worry, just let it come. If there's heat, also doesn't matter. Good. Much cooler. Now you see in your hands also, those who are feeling. Just see these people if they are. Put your hands down. Please put your hands. Now we have some people who are realized people, and then see if you have got it. If they tell you anything, don't get angry with them. Listen to them, what they say, listen to it, alright? For your good. Do not get angry with anyone, whatever they say, try to do. Center heart. Center heart. Don't be insecure about anything. If you are wearing anything that is given to you by your guru or anything, please remove it without feeling bad about it. We'll tell you what it is like. Just remove. In your hands, in your leg or anything.
Now better? Yes. Second heart? What do you say? What's catching? Kai? Huh? Just watch Mata. Both Vishuddhi. Please put your hand. Do you feel cool breeze? You? Alright, now you should learn yourself. One hand above his head. You just put your hand. You got it? You got it? That's very important, huh? You got it. He didn't got any gurus, I believe. That's great. That's great. How did you manage? Now, is all right? Did you feel the food? Got it now, huh? What about you? Are you all right? Got it? See, I told you. Won't come all this for me. What about you, my child? Smoke? Forgive. Forgive it. Forgive yourself for smoking. What? Will you forgive? Put down there. Say, Mother, I'm not guilty. Say that. Now say, Mother, I'm not guilty. Okay? Mother, I'm not guilty. Mother, I'm not guilty. Mother, I'm not guilty. Feeling it. Okay. The nerve. I'm smoking a lot because I feel a lot of tension. But tension will not go away. There's so much tension will go away. Now. Yeah. All right? Done. I felt it. See now, got it. Tension is good. Tension is good. That's good. Done. You fix his Vishuddhi. All right? What about this? Give your neck to the head. Oh, that all we do. That's good. Fine. That's due to your guru. Thanks to him. I'll tell you how to take it. All right? That's it. It's all gone. Put your hands down. All go away. Just, thank God it's not much. Put your hands down. Is it? Oh. All right, then, Matt. I'll put it up. You put your left hand on your liver, on your head. You should have told me. I thought you were just kidding. This is what happens. Blisters coming with these horrible. Like, every now and again I get a drop. No, it's all right. That's good. Now, work it out. You first of all, you feel relaxed, all right? Now, first, keep your eyes. You forgive. First of all, forgive. You have to forgive others. Forgive yourself. Kai, kasra. Come. Ata dya karana pa. You take these new people who have got realization, you see, from yesterday. Stupid. Ubara. जराशी करा मदत त्यांची काय डॉक्टर साहेब लागले का तुम्ही कामाला See, Indians don't take to these people very normal. They don't. They're really nasty guys. They just hate that people. They want to throw them off. They're all settled down here, no doubt. But they are very nice. Because they know, you see, they are brought up that to know what to expect. काय झाले का मस्त झालं आता जा मदत करायला का माहित नाही कसं करायचं ते झाले ना फार झाले नाही तर काय चेहऱ्यात दिसत आहे ऑन द हेड येत आहे ना नाव यू गिव्ह इट Atya, you tell it them. Come now. You must go ahead. Now you must give. You are enlightened to give. Still there. Yes. Now I have to all right? Go to the all right? How are you? Are you all right? Good. How are you? Very good. Good. What about these people? My child, did you feel the food breeze? No. All right, we'll work it out. We are coming. All right, don't you worry. Now, don't be desperate. Work it out. झालं का? काय मजा होणार ना? Giving is the hardest. जे heartfelt असतं नाही किती छान वाटतं. हा. Beautiful.
Now relax. All right, let's lie back, right? Give us a break. Better. Go back up. दीवाना हो जाएगा दीवाना दीवाना अच्छा now you're not thinking inside no thought dीवाना are you alright now you are going to be perfectly alright don't you worry tonight we'll tell you what is to be done Yes. After. Yes, I'll tell you. Like that. Now put your left hand here and say, Mother, I am my own guru. That's one thing there. That's your right hand. Right? Yes. Left hand. No, you go on. Say, my mother, I am my own guru. Don't you work on these people? Yes, Mother. Separate them and work it out. Mother. Can you separate yourself here? One on this chair, one on that chair. Yes. It's better. How are you feeling? Fine? Relax? All right. One thing, but I'm not thinking. One thing. You go and say one thing. One thing. Who do you take? Oh, you are, what guru you went to? Swamiji. Huh? Swamiji. Which Swamiji? I come back to it. Swamiji. Oh, Vegetarian. Huh? Vegetarian? Oh, but this is a new one. Fine, you for that. All right, doesn't matter. Whatever it is, we work it out. Masudanda. Huh? Guruji Masudanda.
Pancreas und die anderen Organe im Bauch fehlen. So as a result of that, you are vulnerable to get any one of the organs out of order. Und so deswegen ist es möglich, dass Sie bei all diesen Everybody is partly mad. Ladies and gentlemen, on your behalf, we request Her Holiness Sri Mataji to please come onto the stage. We should be very greatly honored to have a darshan of you, Sri Mataji. Could we request you, ladies and gentlemen, to stand as a mark of honor to Her Holiness Sri Mataji. As usual, ladies and gentlemen, on such occasions, many people wished to make public offerings of flowers as their mark of reverence for Sri Mataji. We shall first ask Sri M.K. Jalan, who has been the moving spirit behind organizing the Calcutta visit of Sri Mataji, offering a garland on behalf of all of us here at Calcutta. Don't rationalize. And then we have a representative of the young people, a representative of the young people into whose lives Her Holiness has suddenly brought an explosion of brilliant, far-seeing light, Miss Shruti Leland.
Ms. Shruti Jalan has also written a poem in honor of Sri Mataji. I shall ask her now to come and read this poem out. With your permission, could she read the poem in your honor, Sri Mataji? Exertion, and you need more energy for your cells in the brain. So this has to pass, as you see here Seek clearly. the mother in trouble. It has to Seek pass the mother into midst your your car. Seek the mother when yours happy. Seek her everywhere you search. When we wake at break of day, just lift our heart and to her say, I don't know what this day will bring, but mother, I offer you everything. And when पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं, वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाए। You will see the light. Wat nu? De Indische. Now you see the last chakra is below the Kundalini. Ms. Paushali Banerjee, for the very beautiful and moving dance that they gave us on this occasion. Thank you very much. Your Holiness Sri Mataji Nirmala Devi, to the Satyogis of Calcutta and this whole great region of Bengal, the Seekers, all of you who have come to experience the richness and the glory of that which you've been promised, all your births. I was introduced in a rather grandiose way, but actually all the education and all the knowledge that I've acquired is but a speck of dust compared with the knowledge that I've achieved since my realization. What happens at the moment of self-realization is that all of that accretion of one's awareness at that moment, which may or may not be manifesting because we all are burdened with this terrible affliction of ego and superego, all of that accretion of what we've achieved thus far as seekers starts to become aware of itself. Light starts to enter into the conscious mind. The unconscious starts to become conscious. And one starts to feel on the central nervous system all that has been promised in all the scriptures. Not only Hindu, I might add. To the Muslims, to the Christians, to the Buddhists, and to the Hindus, as well, of course, as to the Jews and to so many other great religions, the same experience is to be expected when we achieve our self-realization. The Master of Ceremonies introduced me as going to speak about scientific things. Frankly, although Sahaja Yoga is the greatest science, it is also something very simple and something very beautiful. It is the awakening of our own divinity within. It is an awakening of that essence that is within us, which is Atma. And what is the awakening force? It is the Kundalini Mata, the Kundalini Shakti itself. This energy of the Kundalini Shakti is located
at the base of the spine in the sacrum. Is located at the base of the spine, and if you look later on in the literature that you'll receive, you'll be able to follow this much more clearly. It's located in the sacrum. That bone, which even the word itself suggests as holiness, sacred. This Shakti is the residual energy of creation itself. It's sleeping. And we have found out it's the holiest of holy energies, and it's your own individual mother. It's the female force within you. This would have never happened. And being this residual energy, it is lying dormant, awaiting the moment when you are to receive that gift of self-realization. As you know, within each one of us resides Atma. In the core of the heart is that essence which is God Almighty Himself in reflection. This energy of the Kundalini Shakti is what we in the Christian terminology would call the Holy Spirit within us. And when this energy of the Holy Spirit rises through the 6 chakras above, one by one, and finally pierces through the fontanelle bone area at the top of the head, at that very moment, you achieve that experience of self-realization. Much of this you perhaps know, but the achievement is the point. The fulfillment, getting it, is the point. What he described about my search was true. I was very disillusioned by so much of what I saw and so much of what I read. I had so many books inside my head. I saw so many gurus who taught me wrong things. I visited so many ashrams of false people, and I began to become completely and utterly disillusioned. But I knew in essence there was truth. And this truth will always prevail. Right? This subtle body which lies within us, we doctors cannot analyze, we can't dissect, we cannot open somebody up and say, that is the Agya Chakra. But it's there. It's there, and you have known that it is there for thousands of years. In fact, we are the ones who have only in the last short span of a few years discovered how the central nervous system works. And yet at the very point within us where we have what are called subplexuses, we have found, and we think we have great knowledge in saying that there are, say, 16 subplexuses on the Vishuddhi Chakra. We have this great knowledge in our physiology and anatomy departments, but you have been telling us this for 6 or 7 or maybe 10,000 years, that here at the Vishuddhi Chakra there are 16 petals on the Vishuddhi Chakra. So what I'm saying is that we know so little about the real science, which is the science of this instrument that lies within this great creation of God, which is this human being. These 6 chakras above and the Muladhara below, before realization, are simply the energy givers for life. That's all. The various prana shaktis and so on of the 5 elements of the right side find their way into our physical being and provide us with this condition of life. We have within us the Ida Nadi, the Pingala Nadi, which correspond in the gross body to the sympathetic nervous system. This central channel, as yet unawakened, this Sushumna Nadi, corresponds to the parasympathetic nervous system. And again, we doctors know so little. We don't understand why it is that we talk about a craniosacral outflow of that part of the autonomous nervous system which we call parasympathetic. We cannot explain between here and here. In fact, we don't even know, or even pretend to know, what this autonomic nervous system is all about. After realization, when the Kundalini rises, the whole of this parasympathetic nervous system becomes integrated because this Kundalini Shakti itself energizes
the whole of the parasympathetic nervous system, and it rises, and it passes through each and every chakra, and each and every one of those centers of consciousness within us becomes enlightened, it becomes activated, and it becomes vibrant with its own quality, which is divine. That's why diseases get better. That's why mental problems get better. That's why miraculous cures take place when the achievement of self-realization takes place. Now, I could go on and give you a long explanation, but frankly, I know that all you really want to do is hear Sri Mataji speak. This is what you've come for. Last evening, no speech was given at the beginning, no explanation was there, because when a man walks into a dark room, the first thing that has to happen, before you know there is a light there, there is a cord there, there is a carpet there, there is a chair there, the first thing we have to do is switch on the light. Now, for most of you, last evening, with great thrills, we saw how many of you actually experienced the flow of vibrations. You achieved that first start in your self-realization. The process has begun. The light is on, and in the light you can begin to see how this whole beautiful instrument within us works. If I was to tell you that Muladhara is there and it gives us our innocence and our holiness, Swadhisthana is there giving us the creative power within us. Not only the creative power in the sense of artistic, but science, of pure knowledge of God. All of these things become part and parcel of our nature. But this chakra, the Nabi chakra, we become a very satisfied people, because we know that we have evolved to that level where satisfaction is our nature. Within this green circle is the center within us which is the master, the guru, that we become after self-realization. In this center within us, we start to manifest all the dharma that has been taught to us over the ages. The dharma of Moses, the dharma of Lhotse, the dharma of Zarathustra, the dharma of all of these great incarnations such as Muhammad's. They're all there in the sense that we imbibe the qualities of righteousness and dharma within us. At the heart chakra, we start to feel that security. I am the Atma. I am the eternal spirit. And you start to have that awareness welling up inside you that having crossed this Bhavasagara, having crossed this time where we had to be pinned down by religion, we then reach the achievement of security at the other side. The place of the Jagadamba is here. The place of Atma, of Shiv Parvati is here. The place of Sita Ram is here. And those qualities of each and every one of those incarnations starts to manifest within you. You start to feel the joy of the Atma. You start to feel that sense of responsibility of a father, a king, a husband, who gave the highest example that any great being could ever give. At this Vishuddhi Chakra, Lord Krishna adorns that part of us wherein we began to hold our head high, where we moved from this animal level to this higher human level, where we became aware of the all-pervading God, the Akbar. That's the best way. The nature of the great vision that was shown only to Arjuna. So when you start growing, you will be surprised. There are so many letters have come. I have this problem, I have that problem. And we become all these the can be witness. corrected very easily. We start to see our own ego operating, and we know where we are. At this Agya Chakra is the place of that ninth incarnation of Lord Vishnu himself, in the form of Mahavishnu. And who was that? None other than the Lord Jesus Christ himself. None other than the one who crucified himself, who went through the drama of the crucifixion as if to crucify the ego of man. And at that moment when the Kundalini rises to that point, you become forgiveness. You become the quality that he was. He prayed to his Father, "O Lord, God Almighty, forgive them, for they know not what they do."
And as if for human beings who had failed so much, he was asking, "Oh Father, forgive them." So at that moment within us, when the Kundalini rises to this center, we become forgiveness. It's so beautiful. And what I did not say at each point in each of these chakras, there is not only this Purusha aspect, there is not only this male aspect of Sri Ganesh, of Brahmadeva, of Vishnu, of Ram, of Krishna, but at all times there is the Shakti. And if you think about every incarnation that there has ever been, there has always been a force, a power, silently often working in the background. That Shakti has been there, and those Shaktis are in potential form within us. But Adi Shakti is in potential form in the sacrum as the Kundalini Mata. When she rises, these chakras open, they blossom. They start to become enlightened by the glory of God itself. And now, 2,000 years after the time of Christ, 2,000 years since He told us on this earth, behold the mother, wait for the mother, expect the mother. When she comes, adore her, worship her. He said, I will send you a counselor, a comforter, the Redeemer. He said it, and 2,000 years ago, that reality has come. As we have God the Father, as we have God the Son, so too we have God the Mother. It had to be a mother that had to give us all our second birth. And if in the form of Adi Shakti she has come to give us this second birth, she claims nothing. She just wants her children to be born into that realm of the Spirit, to enter into the kingdom of God, to achieve the Atma Sakshatkara which you've all been promised. And we have to be hungry for it. And at this point within this great subtle instrument within us, at the Brahmarandra, at the point where we achieve the connection, resides the one who sits before you. She opens us into the kingdom of God. We begin to feel the cool vibrations. We begin to feel the grace of God. We begin to feel what Adi Shankaracharya spoke of as the Chaitanya Lahiri. We begin to feel what Nanishwa spoke of. We begin to feel what has been spoken of in so many scriptures, ours as well as yours. And this is the experience that so many of you achieved. When the light is on, you will understand much more of this whole mechanism. You'll understand how to develop your self-realization. You'll understand how to deepen. You'll understand how to remove the blockages. You'll understand how to make yourself stronger in that connection with the divine. So Sri Mataji, I beg forgiveness for keeping you waiting. These people I know only want to meet you, as I did when I got my self-realization. Forgive me for taking your time. It gives me great pleasure to introduce Her Holiness Sri Mataji Nirmala Devi. सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य क्या है? ये कहना बहुत आसान है। सत्य है
उपाधियां हैं, उससे परे आप आत्मा है। किंतु अभी तक उस आत्मा का प्रकाश आपके चित्त पर आया नहीं, या कहें कि आपके चित्त में उस प्रकाश की आभा दृष्टिगोचर नहीं हुई। पर जब हम सत्य की ओर नजर करते हैं तो सोचते हैं सत्य एक बड़ी कठिन चीज, जैसे कि में सत्यम वदे, तो लोग बोलेंगे तो वो प्रिय नहीं होगा, और जो प्रिय होगा वो शायद सत्य भी ना हो, तो इनका मेल कैसा बैठाना चाहिए। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया है। सत्यम वदेत, हितम वदेत, प्रियम वदेत। जो हितकारी होगा वो बोलना चाहिए। हित की आंखें कल करके प्रियकर हो जाएगा। भी हम लोग एक बात से कभी कभी चूक जाते हैं, परमात्मा प्रेम है और सत्य भी प्रेम ही है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके बारे में हर चीज को वो जानती है। उस प्यार ही से उद्घाटन होता है उस सत्य को जो कि उसका बच्चा है। और प्रेम की भी व्याख्याएं जो हमारे अंदर है वो भी सीमित मानव की जो चेतना है उससे उपस्थित हुई है। वास्तविक में प्रेम किसी चीज से चिपक ही नहीं सकता। प्रेम तो उसी तरह की चीज है जैसे कि एक वृक्ष में उसका जो प्राण रस है वो चढ़ता है और जड़ों को, उसके पत्तियों को, उसके फूलों को, फलों को पूर्णतया आशीर्वादित करता हुआ फिर लौट जाता है। यदि कहीं जाकर के एक फूल में अटक जाए, ये फूल मुझे सबसे ज्यादा, पेड़ की तो मृत्यु होगी ही और उस फूल की भी हो जाएगी। सो ये जो प्रेम है ये मृत्यु को छूता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब दो इंसान में प्यार होता है थोड़े दिन बाद वो प्यार बैर भी, इसी प्रकार दो कल वो भी दो जब प्यार हो वो बैर हो सकता है। तो प्रेम धर्म से परे नहीं। ये बड़ी सोचने की बात है कि प्रेम का एक छोटी सी स्वरूप बात समझने की है। हमने जाना कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते। इस बार परमात्मा ने कहा माँ पिता बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करेंगे। बहता है, देता है, करता है, तो पूजा के लिए थोड़ा सा और ज्यादा पैसा, उसके बाद कहीं चिपकता नहीं। न जाने कितनी चिट्ठियां मेरे किसी में अटक पास है कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए। लेकिन तो इस दोनों का मेल नहीं बिठा पाते में ये पूजा हो रही है। एक ही चीज जैसे चांद और उसकी चांदनी और पान खा करके लोग फेंक देंगे, जैसे अर्थ और शब्द, लेकिन पूजा में जरूरी पैसा। दोनों एक
हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीजें उसी प्रकार सत्य और प्रेम दोनों एक साथ भी कहते हैं। इस से लोग सत्य के खोज आधा मंडप खाली उठाते, क्या क्या तकलीफें उठाते, वो शरीर को दिया जाएगा, पूजा का पैसा नहीं देना, और फोन करते हैं कि तो हमारा पूजा माफ कर दीजिए, हमारा पूजा, कोई आप कम नौकरी हो ऐसा नहीं, हमारे पति शरीर को आपको कोई अधिकार नहीं। शरीर परमात्मा ने बनाया है और वो एक मन है, उसमें एक अभी अगर कोई अवगढ़ गुरु होते तो आप लोगों को सबके बाल मुंडा करके, जैसे आजकल विदेशों में एक वस्त्र पिला के सर के बल सवार है कि हर इंसान है, ये नहीं वो बिल्कुल क्योंकि सहज मच्छरों जैसा पता हो जाए। उसने बहुत के लिए सब आदमी इस तरह से मेहनत करते हैं कि मच्छर जैसे, पर आजकल लोग उस अनेक बीमारियां लोगों में आ, हमारी माँ का मुझे मालूम है, और इन मच्छरों को कोई सुख मिला ऐसा दिखाई नहीं देता हो जाए तो दे डाल ना, उस देश में कोई आनंद है, और वहां भी लोग आते हैं, तो दृष्टि कहाँ कबीला में तो आश्चर्य होता है, बहुत ही स्थूल चीज और इसका कोई भी अर्थ नहीं लगता, जिसकी दृष्टि स्थूल होगी वो सूर्य चीजों को देखता है, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करें कि इस तरह के पागलपन से और क्या परमात्मा को इसमें सुख होगा कि आप अपने को दुख। ईसाई लोगों ने तो हद कर दी कि ईसा मसीह की हड्डियां देते हैं, ऐसा लगता है कि इससे पूछा जाए कि जिस इंसान ने एक इतने बड़े क्रॉस को अपने कंधे पर उठाया, क्या वो इन हड्डियों के बूते पर, लेकिन इसमें एक लोगों के पास है, किसी जालिम तरीके से क्रूर प्रकृति से ईसा मसीह की ओर देख रहे हैं। यही चीज आपको आगे हम कि जब आप जाइए पोप के सिस्टीन चैप्टर आत्मस्वरूप बन क्या हो रहा उनको बदले जाए, नहीं जब आप लोग का जागरण होता है कभी कभी किसी को तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है। देखिए बीमार लोगों को में आप को लाइए होता है वातावरण में हमारे, जैसे हमारे यहाँ पूजा वगैरह भी होती है तो आदमी को इसकी वजह ये राष्ट्र होना बीमार प्रयाग ये बाद में केंद्र लोग अपनी इसका वो अब ठीक हो जाएंगे, उसकी कोई हमारे शक्ति को चाहिए। इंसान के पास हृदय नहीं होगा, नहीं पाएगा, जो कि आर्टिकल में तो वहाँ नाम के एक बहुत बड़े और आज्ञा वो भी गणेश जी जैसे लंबोदर खड़े हुए हैं और इधर से उधर लोगों को फेंक रहे हैं। उसका नाम उन्होंने लास्ट जजमेंट कहा हुआ है, लेकिन पूरी कुंडली दिखाइए। अगर आपको कुंडलिनी का ज्ञान हो तो आप अवाक रह जाएं कि इस आदमी ने कौन सी दृष्टि से ये सब चित्र देखा और इस तरह से सब चित्र बनाया। दूसरी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी के नीचे वो हड्डी वाला ईसा मसीह रखा हुआ है, देखकर ग्लानि योग घटित हो जाने से कम हमारे भारतवर्ष में जो प्रकाश किसी भी हमारे अवतारों को हड्डी मार का नहीं दिखाते, आत्मा से, और नहीं ये माना जाता है कि हड्डी मार का परमात्मा हो सकता। वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से, वजह ये है कि हमारे अंदर प्रेम की दृष्टि नहीं और तालु से, या तो हमारे अंदर वासना है और ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की जिसके अंदर होता है। जैसे मैंने कहा कि हृदय का बड़ा होना बहुत जरूरी है।
लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप अपने हृदय को बड़ा करने के लिए अवास्तव तरीके से दान पुण्य करें, चोरों को भी दान करें, और जो बहुत से गुरु बन के घूमते हैं उनको आप दान करते फिर। धर्म की व्याख्या कृष्ण ने जितनी सुंदर की है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाया होगा, कारण वो एक बड़े भारी होशियार डिप्लोमैट थे। उन्होंने कर्ण के जीवन में बताया कि कर्ण बहुत दानशूर थे, बहुत दानी थे, अत्यंत धार्मिक, हर समय पूजा पाठ आदि में व्यस्त रहते थे, और वो पांडवों के सबसे बड़े भाई क्षत्रिय थे। लेकिन जिस वक्त उनका पांव युद्ध में चक्र में फंस गया, उस वक्त अर्जुन ने अपना गांडीव उनके ऊपर उठाया। उस वक्त उन्होंने चुनौती दी। कर्ण ने कहा कि अर्जुन तू भी वीर है और मैं भी वीर हूँ और हम क्षत्रिय हैं, और एक निहत्थे वीर पर दूसरे वीर का हथियार उठाना धर्म में मना है। कृष्ण ने तब अपनी उंगली आगे करके कहा, इसे तू मार। अहिंसा की बात नहीं करी, इसे तू मार। जिस वक्त द्रौपदी की लाज और इनको ठीक करने के लिए कोई न कोई इलाज होना चाहिए उतारी जा रही थी, तब इनकी वीरता कहाँ गई थी? तब ये कहाँ थे? इन सब को खत्म कर देना चाहिए और आर्य समाज इतनी धर्म की सुंदर व्याख्या, हम लोग भी आपकी वीरता, आपकी दानशूरता, आपका धर्म, सब कुछ एक तरफ, और एक स्त्री की लाज ऐसी बात को अगर कोई सत्य मान बहुत बड़ी चीज है। किसी कार्य में पड़ता है। उसी कृष्ण के भारतवर्ष में अगर हम देखें तो धर्म के नाम पर ही स्त्री के साथ जो अत्याचार हम लोग कर रहे हैं, वो क्या हम अपने को भारत पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु अपने आप को मानते हैं, वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। फिर आप अपने को देखने लगे, आप अपने को जाने लगे। यही तुकाराम ने कहा। संस्कृति का सबसे महान तत्व एक ही है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना। अपने चित्त का निरोध बताया गया है, अष्टांग योग बताए गए हैं, अनेक विधियां बताई गई हैं। किस लिए? कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त। लेकिन देखिए कि कितने लोग इधर नजर करते हैं। ईसा मसीह ने यही कहा कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, पर कितने ईसाई इस बात को सोचते हैं? बपतिस्मा कोई भी आकर के सर पे हाथ रख के कह देता कि तू ईसाई हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ किसी भी आदमी के गले में यज्ञोपवीत किसी ब्राह्मण ने लाकर डाल दिया, हो गया ब्राह्मण। कौन है ब्राह्मण? जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, द्वि जायते द्विजा, जो दूसरी मर्तबा पैदा हुआ, माने जिसका दूसरा जन्म हुआ है उसको द्विज कहते हैं। पक्षी को भी कहते हैं और मनुष्य को भी कहते हैं, कि पक्षी पहले अंड रूप से आता है और उसके बाद उसका जब दूसरा जन्म होता है तो पक्षी हो जाता है।
जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता, माने उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक वो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। और जब तक उसने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, उसको अपने को ब्राह्मण कहने का कोई भी अधिकार नहीं। इसके शास्त्रों में अनेक आधार हैं। गीता पर बहुत लोग कहते हैं, मैंने तो कभी गीता पढ़ी भी नहीं। गीता में लोग कहते हैं कि जो जन्म से जिस जाति में पैदा हुआ वही उसकी जाति हो ही नहीं सकता। कारण जिसने गीता लिखी वो व्यास किसके बेटे थे? एक ढीमरनी के, वो भी जिनका पता नहीं था बाप का। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी वो कौन थे? एक फिर वही ढीमर, मछली पकड़ने वाले, वो भी डाकू। उनसे रामायण लिखवाई परमात्मा ने। जिन्होंने शबरी के बेर खाए झूठे, जिन्होंने विदुर के घर जाकर के साग खाया, इन सब अवतारों को समझने के लिए पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बाह्य के हम लोगों ने तरीके बनाए हैं कि तुम इस जाति के, तुम इस पंथ के, ये सब मनुष्य ने बनाए हुए बेकार के तो इस पर यही कारनामे, कि घोर कलयुग, यही हमारे जेल हैं जिनमें हम रहते हैं और बहुत संतुष्ट हैं कि हम इस धर्म, इस संप्रदाय के हैं। और आज सारे संप्रदाय एक बुद्धि का ही खेल है, जिसे कि मेंटल प्रोजेक्शन कहिए, और वो बड़े जो कि सब तरफ नहीं फैलता है, सिर्फ एक दिशा में जाता है और फिर लौट के चला आ जाता है। जितनी भी इस तरह की धारणाएं हैं ये अधर्म की है, धर्म की हो ही नहीं सकती। तो अपने देश का जो कुछ हाल हो रहा है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से हटाता है या किसी भी बात से ये कहता है कि हम उनसे ऊंचे और वो हमसे नीचे हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। आज अपने देश में एक क्रांति की जरूरत है, बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है, जहाँ कि हम आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। इस सच्चे श्यामला भारत भूमि पर जहाँ हमारा जन्म हुआ है, ये वास्तविक में ही योग भूमि है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। लेकिन जब हमने अपने आत्मा को ही नहीं पाया, तो सिर्फ ये योग भूमि कहने से आप इस योग भूमि के पुत्र नहीं हो सकते। योग को आपने जब प्राप्त नहीं किया तो आप इस योग भूमि को क्या, ये तो ऐसे ही आप रास्ते पे घूमते फिरते रहते हैं, इस पे तो कुत्ते बिल्ली सभी घूमते फिरते हैं। लेकिन अगर आप इसके वास्तविक में ही एक गौरवशाली पुत्र है तो आप में योग स्थापित होना चाहिए। बातें करना और धर्म के नाम पे इसको त्यागना उसको त्यागना या किसी से कुछ लूट मार करना, एक किसी भी तरह से धर्म नहीं है। और एक बड़ी ग्लानि की बात है कि बाह्य के देशों में हम लोगों के बारे में जो चित्रण दिया जाता है वो अत्यंत कलुषित है। बाहर के लोगों के बारे में मुझे कोई भी आस्था नहीं, ना ही मैं कुछ सोचती हूँ कि ये लोग किसी काम के हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाने के लिए काफी लोग बेकार है, इसमें कोई शक नहीं। दो चार कहीं कहीं मिल जाते हैं तो लगता है चलो भाई मिल गए, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो आप लोगों से कहां पहुंच जाते हैं। उसका उदाहरण आपने एक डॉक्टर वॉरेन को देखा और ऐसे अभी हजारों में है। वजह यह है कि इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई, बुद्धि की टकरे लेते लेते इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई है और ये अब समझते हैं कि इस शुद्ध बुद्धि से ये देखा जा रहा है कि सत्य क्या है और सत्य को पकड़ना है और असत्य जो है उसे छोड़ना ही होगा। ये कहिए कि इनकी विल पावर, आत्मशक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार जब इन्हें सत्य मिल जाता तो उसे इस तरह से पकड़ लेते हैं। आप लोग गणेश जी के बारे में मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं जानते, जो ये लोग जानते हैं। हालांकि मैंने उन्हें बताया है, ये दूसरी बात, पर तो भी वो जानने के लिए भी तो लोग चाहिए। हाँ, तो जब आइए हिंदुस्तान में तो मेरे बाप को बीमारी, मेरे माँ को बीमारी, तो मेरे फलाने को बीमारी, माँ इनको ठीक कर दीजिए, या तो कुछ पैसा दे दीजिए या तो कुछ नौकरी दे दीजिए। इसी से कोई सतह से ऊपर उठा तो वो धर्म मार्तंड बन के मुझसे वाद विवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे धर्म मार्तंडों से कहने की बात यह है
जिन्होंने आदि शंकराचार्य को परास्त करने पर उन्होंने फिर सिर्फ माँ की ही स्तुति लिखी। उसे कुछ अकल लें, आखिर उन्होंने पाया ही क्या है जिसके बूते पर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें और लेक्चर देते रहते हैं बगैर पाए हुए। ठूठ जैसा शरीर और बड़ी बड़ी बातें, इसमें अर्थ क्या है? कुछ तुमने पाया नहीं। इस एक बात को सिर्फ मान लेने से ही बहुत कुछ काम हो सकता है, क्योंकि जब आदमी असत्य पे खड़ा होता है तो उसमें बड़ा अहंकार होता है। आपने देखा महिषासुर को, आपने देखा रावण को, उनकी बातचीत सुनी। उस अहंकार में मनुष्य यही सोचता है ये क्या जाने, हम तो सब भगवान के बारे में जानते हैं। और कुछ कुछ लोगों का तो ये भी विश्वास है कि अरे भगवान तो हमने बनाए हुए हैं, इनको तो बेवकूफ बनाने के लिए भगवान चीज है। अब उसमें से कोई अति अक्लमंद निकल आए हैं, वो फरमाते हैं कि हाँ भगवान तो हम मानते नहीं, हम तो बहुत सत्यवचनी है, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या कहने, एक से एक बढ़ के विद्वान इस देश में पसे। तो जब ऐसे बाहर से लोग आके कुछ समझाएंगे, हो सकता है कुछ खोपड़ी में बात जाए, लेकिन उससे पहले ही सर्वनाश की तैयारी हो रही है। ये समझ लीजिए कि सर्वनाश पूरी तरह से इस देश को खाने के लिए तैयार हो रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि हम लोग पापी हैं या बुरे हैं, किंतु ये है कि हम अज्ञान को ही ज्ञान समझ के बैठे। अगर आपने अज्ञान को ज्ञान समझ लिया तो क्या होगा? अंधेरे में अगर आप लोग सब बैठे और चलना फिरना शुरू कर दिया तो कोई किसी के ऊपर कूदेगा, कोई किसी को मारेगा, कोई दौड़ेगा। अंधाधुंध जो चीज हो रही है, ये जो भ्रांति आ रही है, इसका कारण एक है कि हमें ज्ञान नहीं। अब ज्ञान हमें होना चाहिए, इसके प्रति किसकी रुचि होनी चाहिए? कौन जानेगा? यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वो अपने पठनों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परमात्मा का पता ही नहीं वहाँ कहाँ है। परमात्मा को लोग सोचते हैं कि उनको अगर पैसा ऐसा चढ़ाया जाए तो वो खुश हो जाए। वो तो पैसा क्या चीज है वो जानते ही नहीं है। मेरी ये उम्र हो गई, अभी अगर आप मुझसे कहे कि चेक लिखो तो मैं कहूँ भाई तुम लिख दो, मैं सही करती, मेरे को मेरे बस का नहीं। उधर बुद्धि नहीं चलती है ना। भगवान के ऊपर पैसा चढ़ा दिया, बस अब वहां हमारा टिकट कट गया। ये तो पोप का जमाना आ गया, यहाँ की पोप कहते हैं चलो टिकट कटा लो, तुमको हम स्वर्ग भेज देंगे। वो स्वयं नरक में जा रहे हैं, वहीं आप उनके पीछे पीछे चले जाइए। इस तरह की जो हमारी प्रवृत्तियां बनी जा रही हैं, उसका कारण कि हम अपने अज्ञान में संतुष्ट हैं, जैसे भी हैं वाह मस्त है। लेकिन नीचे से धरती खिसकती जा रही है, इसे समझना चाहिए। ये धरती नीचे से खिसकती जा रही है। इस खिसकती हुई धरती पर आप खड़े हुए हैं। ये धरती जो सस्य श्यामलाम पुण्य भूमि है, इसको अपुण्य से भरने से ही आपने कुछ भी नहीं पाया। आज आपके सामने कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। अब ये जो बताना है, ये तो सब कुछ हम बताएंगे ही। आप जानेंगे ही कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, वो शुद्ध विद्या है। और आप रट भी लें तो आप सब पाठांतर कर लीजिएगा और सब भाषण हमारे जैसे भी देने लग जाए। लेकिन उससे फायदा क्या होने वाला है? जब तक आपको उसका अनुभव न हो, तो इस अनुभव शून्य ऐसे अज्ञान में क्या मिलने वाला है? आप अपने को कुछ भी समझ लें, लेकिन आप अनुभव शून्य हैं। और अनुभव प्राप्त करना एक ही परम कर, क्योंकि इस भारतवर्ष में ही विद्या है। ये मूल की विद्या यहीं पर है। इसी देश सारे संगीत करने जो प्रकृति ने और आरों ने व्यवस्था की है, वो सब हमारी जिम्मेदारी पर। वो बिल्कुल मान लेते, हम हिंदुओं की जिम्मेदारी पर है। यही मनुष्य भारतीय लोगों के जिम्मेदारी पर है। मैं ये हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे।
इस ज्ञान में उतरेंगे नहीं कि आप किताबें फुल भी नहीं होता, किताब नहीं अगर ये बात है, लेकिन जो अनुभव से हुआ है, अनुभव से जो इन्होंने पहचाना, तो विषय में क्या पता नहीं पीएचडी किए हैं, फलाना किए, ठिकाना किए, छोटे बड़े भारी साइकिल प्राइज चूक गए है। एक तरफ से वो ओंकार है और दूसरी तरफ है, ये कैसे? मैंने कहा भाई तुम तो मॉडर्न आदमी हो, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पता लगाना, तुम ऐसा करो एक एटम का चित्र बनाओ, एक बार लेफ्ट से बनाओ और एक राइट से बनाओ, कार्बन एटम को लेकर के तुम चित्र बनाओ। उन्होंने मुझे खबर की कि माँ आश्चर्य की बात है कि जब लेफ्ट साइड से देखते हैं ओंकार दिखाई देता क्योंकि राइट साइड दिखाई दी, और जब राइट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। और ये कार्बन का एटम की बात कही, जिसमें 4 वैलेंसीज हैं वही कार्बन है। यही बात मैंने बताया, लोग विश्वास जो ने पति का चित्र लिख रखा हुआ, पर किसी भी भाई पति के वजह से तो जन्म जी माता। अब इसके उदाहरण था कि हमारे एक सहयोगी थे काफी उम्र के, उनका नाम था अग्निहोत्री साहब, और उनके यहाँ बहुत अग्निहोत्र हुए और बड़े खानदानी ब्राह्मण थे। वो पुणे से हमारे पास आए और मुझे कहने लगे कि माँ आश्चर्य की बात है कि तकलीफ हो रही यार, ये कैसे? ये कि वहाँ एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड अब काम नहीं कर रहा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो गणेश के ही भक्त हो और सहयोगी हो। तो उस वक्त जब जाने लगे तो हमारा प्रसाद है चने, मैं कहा अच्छा चना खाओ, मैंने उनके हाथ में चना दिया तो इधर उधर आनाकानी करने लगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक करनी है या नहीं? क्यों? खा लूंगा। मैंने कहा क्यों? कल आज संकष्टी है, आज मैं ग्रहण नहीं खा। मैंने कहा ये कारण तुम्हारा प्रोस्टेट खराब होगा। कल ये क्यों कारण? मैंने कहा जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ वो संकष्टी तुम मनाते हो, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन तुम उपवास करते हो। क्या तुमसे गणेश जी खाना खा करके आप विश्वास नहीं करेंगे? लेकिन आप पूछ सकते हैं। वो जब पुणे पहुंचे तुमकी प्रोस्टेट एकदम ठीक चलने लगा। भारतवर्ष की दशा ठीक करने का एक ही प्रकार की हम अनेक हमारे आध्यात्म में आप खड़े हो जाते रहते हैं। जब कभी भी कोई भगवान का जन्म सूतक कर रहा है, माने ये कि जो हमारी पूजा अर्चा है उसे हम नहीं समझते। तो कुछ भी आज आपसे मैं बताने वाली हूँ। अंग्रेज जब कोई मरा तो शैंपेन ईसा मसीह का जिस दिन पिएंगे, कैसे आप शर्मों में? ईसा मसीह ने एक शादी में शराब बनाई थी। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने पानी को द्राक्ष का रस बना दिया। आप बताइए कि शराब को सड़ाए बगैर वो बनती है क्या? शराब एक क्षण में कोई बना सकता है शराब? लेकिन इस बात को पकड़ के अब शराब पीना ईसाई धर्म हो गया। इसी प्रकार उपास करना ही हमारे यहाँ हिंदू धर्म हो गया। फिर ठीक है, परमात्मा कहते हैं चलो तुमको उपास करना है, उपास करो उपास, जिस की आप इच्छा करेंगे वो इच्छा परमात्मा आपकी पूरी। सर्वसाधारण जीव खोपड़ी से हमें आ जाए उनके आगे है कि हम आपको बनाए और रास्ता खुद करेंगे। हम स्वतंत्र हैं, ऐसा स्वतंत्रता के लिए हमने भी बहुत आज, लेकिन मैंने स्वातंत्र में स्व का तंत्र जो थे वो आत्म साक्षात्कारी पूरे भारतीय। उन्होंने कहा तंत्र जानना स्वामी थे। उन्होंने उनसे बताया कि देखो जब तक स्वधर्म नहीं बढ़ने वाला, स्व का धर्म, स्वधर्म
तब इस देश का कल्याण नहीं होगा। अब उनके नाम से ही लोग आफत मचाए हुए हैं। पर जिस स्वधर्म की बात की थी, उस स्व को जानने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं। समूह में यही मोहम्मद साहब, उन्होंने उत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ, उत्थान का समय, जैसे रेजरेक्शन का समय, जिसे कहना चाहिए उत्क्रांति का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। उन्होंने आना चाहिए इतना कुछ कुरान में लिखा, मेरे पिता ने यहाँ से सब चीज शुरू हो जाती खुद इसका ट्रांसलेशन किया, मैं जानती हूँ। उन्होंने में भी उस वक्त हाथ बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? मुस्कुरा सारे नमाज जो है का जागरण है। अल्लाह अकबर विराट श्री, ये बात कहने से मुसलमान कल मुझे मारने दौड़े। और अगर आगे बातें करने लग जाऊं तो में दौड़े, क्योंकि सब करने से ही आज हम धर्म भ्रांति में हटाने के लिए, जैसे कहेंगे पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। ये खेल खिलवाड़ की बात नहीं है कि आप जिससे चाहे उससे खेल खिलवाड़ कर रहे, आप अपने से खेल खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम, ये समय ऐसा है, इस वक्त चूकना नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप अपने जीवन को पूर्णतया समझते हैं, तो एक बात तो माननी होगी कि अब आप में कुछ कमी तो जरूर है। आप केवल सत्य तो नहीं, आप एब्सोल्यूट तो है नहीं। तो उसके लिए अगर ऊर्ध्वगामी जाने के लिए कुंडलिनी ही की व्यवस्था की हुई है, तो क्यों न उसे किया जाए। स्वयं साक्षात सदाशिव हर शास्त्र में लाउड से आप पढ़ लीजिए, या आप कन्फ्यूज को पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महान लोग हो गए हैं, सब ने यही कहा हुआ है कि आपको अपना आत्मसात होना चाहिए। लोग आते हैं, हम सब इसे कर रहे हैं। ज़ेन माने क्या? ज़ेन माने ध्यान, पर ध्यान किया नहीं जाता। हमारी प्राचार्य यहाँ आए थे जो कि वहाँ के हेड ऑफ ज़ेन सोसाइटी, और उनको बड़ी शिकायत थी, तो मुझे लोग ले गए कि माँ इनको ठीक करो। तो मैंने कहा भाई ज़ेन कैसे हो, तुम्हारी तो वैसी दशा नहीं है। कह दिया तुम्हें तो आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, तो आपने इतनी बड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी कैसे ले ली? कहने लगे कि 6वीं शताब्दी में शिव जी की पूजा से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जरूर 26 ज़ेन हुए, जिसको वो स्वरूप काश्यप कहते हैं। अपने कश्यप मुनि के पुत्र काश्यप का नाम रखा है, वो काश्यप रियलाइज सोल्स। और उसके बाद से हुए नहीं, तो मैंने कहा फिर ज़ेन मत करो। तो कि ज़ेन क्या है? जब तक तुम्हें ज़ेन करना, आत्म शंकर जी के साक्षात्कार के बाद जो सामाजिक कार्य होता है, देखिए उसमें मनुष्य जानता है कि आनंद, और उसमें क्या विशेषता है। यहाँ पर आपके कल्पना, एक बार जब शुरू में हम आए थे, एक होटल में ठहरे थे, एक बहुत वहाँ कोई ऐसे ही अजनबी ने हमारा नाम सुना और वो हम कहने लगे आत्म साक्षी। और जब वो मेरे पैर पे आया, कुंडलिनी इतने जो बैठे हुए, लगा कि पता नहीं कहाँ से मेरे साक्षात्कार दिया। मैंने कहा देखो, जब उस पे हाथ रखा तो आनंद विभोर हो माँ क्या है। ऐसे ऐसे अनुभव, अनेक अनुभव सहयोग में आते हैं, जहाँ जिस आदमी को हम सोचते हैं कि बहुत ऊंचा आदमी है, जब उसके पास जाइए तो लगता है कि बिल्कुल घास फूस और कचरा है। और कोई आदमी की ये सोचते हैं अरे ये बिल्कुल बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं। उसको देखते हैं तो पता नहीं कब का आत्मपिंड है, कब का ये बड़ा महान पुरुष रहा, इस संसार में है। लेकिन इसको पहचानने के लिए पास में वही केवल सत्य होना चाहिए कि उसकी ओर हाथ करके आप जान लेते हैं कि क्या है। कुंभ के मेले में जाने की आजकल बड़ी आफत मची। कुंभ के मेले क्यों जाना? कुंभ
क्या आप गंगा जी को पहचान सकते हैं? क्या आप जमुना जी को पहचान सकते हैं? अगर आपके पास गंगा जल ला के रखा तो क्या कैंसर पेशेंट गंगा आपके पास गंगा जल सामने रखेगा तो कोई भी सहयोगी बता देगा गंगा जल है, क्योंकि उसमें से चैतन्य की लहरी आ रही। जो शिव जी के सहस्त्रार से बह रही गंगा है तो उसमें तो चैतन्य आना ही हुआ। अब गंगा जी को हम पूछते, लेकिन गंगा जी जो सूक्ष्म है उसको तो जानते ही नहीं कि चीज क्या है ये गंगा जी। सालों से चला रहा गंगा जी में नहाओ, गंगा जी में नहाओ। ये तो ऐसा ही जैसे कनेक पत्थर उसमें पड़े हुए हैं, ऐसे लोग नहाते हैं और बाहर आते और फिर उनमें कोई भी ऐसा दिखता नहीं कि गंगा जी हो क्या तो कोई विशेष बात की। ऐसे जो लोग हज में जाते हैं वहां से लौट के आते हैं तो फिर वही स्मगलिंग करते। जब हज हो के आए, जब हाजी हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली, अपने को हाजी बन के घूम रहे हो तो भाई कुछ तो असर दिखाई देना चाहिए। कोई नहीं, सब एक ही साथ एक जैसे ही रह जाते हैं, जैसे गए थे वैसे ही बिल्कुल निरे कोरे सब जगह गए थे वैसे कोरे वापस चले। कुछ असर कि जो गंगा जी की सूक्ष्म चीज है उसको आपने और पकड़ेंगे भी कैसे? अब यहाँ पर हमारे यहाँ जागरूक स्थान है, हम तो कहते हैं कि है हर जगह हमारे यहाँ जागरूक स्थान है। और ये हम बाइबल में भी कि जो पृथ्वी तत्व ने और आकाश ने बनाया हुआ है उसको तू फिर से बना के उसकी पूजा न कर। इसका मतलब वो नहीं जो पृथ्वी तत्व ने बनाया उसकी न पूजा कर। अब ये तत्व हमारे यहाँ तत्व से निकले हुए जो जागरूक स्थान है, ऐसे जानिएगा ये जागरूक है या नहीं है। कहीं पत्थर रख दिया जागरूक स्थान है। अब ये राम भूमि है कि नहीं है ये जानने के लिए मुसलमान और हिंदू अगर आप पार कराइए तो कहेंगे श्री राम भूमि है इसमें शंका लड़े भूमि भी मिल गई तो वाला है हमारे अंदर। ये बाह्य की चीजों से अंतर्योग घटित नहीं होता। जब अंतर्योग हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा मुसलमानों को भी और हिंदुओं को कि श्री राम की भूमि और श्री राम ये मुसलमानों के लिए कोई दूसरे नहीं और हमारे लिए भी मोहम्मद साहब कोई दूसरे नहीं। ये लोग सब रिश्तेदार हैं बड़े पक्के आपस में, इनका कभी भी झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे के सहायक है, आपको पता नहीं। लेकिन हम ही लोग बेवकूफ जैसे एक का नाम ये लिया एक का नाम ये लिया लड़ते रहते हैं। जैसे कि एक पेड़ पे अलग अलग समय पर निकले हुए महासुंदर फूल हैं, उनको अलग हटा लिया, उनको तोड़ लिया, जब वो मर गए तो ये मेरा फूल ये मेरा फूल। पर अरे भाई तुम्हें क्या विशेषता आई है? कौन सी विशेष तुमने बात करी? जब खराबी पे आते हो तो सब एक साथ ही हैं, तब तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह से पंथ जातियां बना बना करके हम लोगों ने एक तमाशा बेवकूफी का खड़ा किया। कितने बेवकूफ इंसान हैं आप ही सोचिए। ये बेवकूफी के लक्षण है या नहीं कि हम इस तरह से ये मेरा धर्म ये मेरा धर्म। अरे धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। जिस वक्त कुंडलिनी जागरण होता है तो जिसे हम लोग वॉइड कहते हैं, जिसको भवसागर कहते हैं, उस भवसागर में जब प्रकाश आता है तो धर्म अपने आप जागृत हो जाता है। ऐसे आदमी धर्मातीत होते। माने आप ही सोचिए कि तुकाराम जो बड़े संत हो गए, वो कभी उनसे कहना पड़ता था कि आप शराब मत पियो या दूसरों का पैसा मत खाओ, कहना पड़ता था क्या? इन संतों से कहना तो नहीं पड़ता था ना। नानक साहब से ये तो नहीं कहना पड़ता था कि भाई तुम चोरी चकारी मत करो। उनको ये बात मालूम ही नहीं थी, माने वो धर्मातीत लोग। और ऐसे लोग हमारे देश में हो गए हैं और उन्होंने जो बता दिया है, अगर उनके तरफ जरा से भी नजर करें तो समझना चाहिए कि वो कोई झूठ बोलने वाले तो लोग नहीं थे। उन्होंने जो बता दिया उसे हमें क्यों न करना चाहिए। इन लोगों की बातें भी और तरह की है। मैं आपसे बताऊं, ये जाति पाति को लेने वाले जो लोग हैं, खास करके सारी ही जाति में बड़े बड़े संत हैं। महाराष्ट्र में तो इसकी आप पुष्प मालिका बना लीजिए। यहाँ पर एक हमारे यहाँ एक दर्जी जो कि नामदेव के नाम से मशहूर है, कभी नामदेव कहते हैं, संत नामदेव। वो गए मिलने किसे तो कुम्हार एक साहब जो गोरा कुम्हार थे। हम लोग ऊंची जाति और नीची जाति ये सारा कुछ अपने दिमागी जमा खर्च चलाते रहते हैं। वो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने मराठी में काव्य किया हुआ है,
नामदेव बहुत बड़े कवि थे। निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशी, निर्गुण को मिलने आया तो सगुण मेरे सामने खड़ा। कितनी बड़ी बात है। इसको समझने के लिए भी आपको साक्षात्कार चाहिए कि वो तो चैतन्य देखने आए थे तो सगुण हो गया चैतन्य। ये बातें हम लोग नहीं कर सकते। वो एक कुम्हार था मिट्टी से खेलने वाला और ये एक दर्जी था। अब हमारे यहाँ के जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ये जो नामदेव जिनको गुरु नानक ने पाचारण किया था, जिनका इतना आदर किया था, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी में इतने सुंदर काव्य लिखे और जो इनके ग्रंथ साहब में नामदेव जी का नाम है, वो दूसरे थे और ये दर्जी दूसरा था। ये अकल निकाली। और दूसरी अकल की बात ऐसी निकाली है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथवंत लिखे थे, उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम की चीज लिखी ही नहीं, क्योंकि सौंदर्य लहरी इनकी खोपड़ी में जाती नहीं है। इसलिए सौंदर्य लहरी नाम की चीज जिसमें माँ की स्तुति कर दी, क्या ये बेवकूफी की बात है इनके हिसाब से। ऐसे विद्वानों के चक्कर में रह रह करके और ऐसे लोगों के लेक्चर सुन सुन के हम लोग भी पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब कबीरदास जी को मैं पढ़ती थी, मैं कहती ऐसी कैसी बात कबीरदास जी कहते कि पंडित कैसे मूर्ख हो गए। अब ऐसे बहुत मुझे मिलते हैं और जब ऐसे मिलते हैं तो मैं चुप्पी लगा जाती हूँ और कबीरदास जी से कहती हूँ कि अच्छे दर्शन दिए आपने इन लोगों के। कबीरदास जी के साथ कितने अन्याय हुए। कबीरदास जी ने कुंडलिनी को सुरती कहा, साफ साफ बात लिख दी कि ये सुरती है। उस पर हमारा आक्रमण इतना बुरा और भद्दा है कि बिहार में और हमारे उल्टे प्रदेश में जहाँ मेरा ससुराल है, वहां पर लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं और पता नहीं कौन से उल्टे देशों में कहते हैं, पर बहरहाल इन दोनों को मैं जानती हूँ। कहाँ तो कुंडलिनी और कहाँ ये राक्षसी तंबाकू, कैसा इसका मेल बिठाया। और कबीरदास जी को भी सारे बड़े बड़े जो विद्वान हमारे हिंदी के साहित्यिक हैं, उन्होंने कहा कि साहब इनकी भाषा तो सदुक्कड़ी है और इसमें कोई सौष्ठव ही नहीं। क्या कहा जाए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप जनसाधारण से बातचीत करिए तो रोजमर्रा की ही भाषा में बोलना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। अगर हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आप जानते हैं महाराष्ट्र की भाषा बहुत ही, जब हिंदी बोलते हैं तो अत्यंत क्लिष्ट भाषा होती है। उस क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता। मुझे तो सोच सोच करके ये देखना पड़ता है कि रोजमर्रा की भाषा में किस तरह से बोलूं। और उन्होंने रोजमर्रा की भाषा में इतना सुंदर और इतना गहन विषय लिखा है और सभी संतों ने ऐसे किया। एक सज्जन कसाई थे वो कसाई। उनका किस्सा है कि एक बार एक बड़े भारी साधु बाबा पहुंचे और उनके किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके एक चिड़िया ने कुछ गंदगी कर दी, तो उसकी ओर देखा तो चिड़िया टप से मर गई और नीचे गिरी। आगे गए, देखते हैं एक औरत के वहां जाके दरवाजा। पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु ने आपको मानते हैं, वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
आओ, अब उधर चली नहीं तो उसने ये धंधा शुरू कर दिया। ऐसे ही धंधे हम लोग शुरू करते हैं और लोग ऐसे लोग वाह 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 वाह, ऐसे चक्करों में घूम घूम करके आप लोग कहाँ पहुंचे। सर्वनाश का समय आ गया, बड़ा चक्र चल रहा है। आपको नहीं पता कि काल चक्र कितने जोर से हमारे ऊपर दौड़ा रहा है। सारे संसार में ये फैलने वाला है और इसको रोकने का पूरा उत्तरदायित्व, इसकी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है जो हिंदुस्तानी बनते हैं और विशेषकर वंग देश में रहते हैं, जो कि माँ के पुजारी हैं और आजकल सिर्फ महिषासुर की पूजा करते हैं। आज आपसे मैंने जो बात कही वो उस तरीके से कहना थी कि प्रेम की ओजस्विता है, एक माँ की पहचान इसमें होती है कि वो सही बात अपने बच्चों से निर्भीक कहती है। शिवाजी महाराज की माँ के बारे में आपने सुना होगा, जिजाई, जिसने कि अपने बच्चे को हमेशा तलवार की धार पर खिलाया है। ईसा मसीह की माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, लेकिन अपने बच्चे को सूली पर चढ़ता हुआ उस औरत ने देखा हुआ। हमारे इस देश में ऐसी अनेक स्त्रियां हो गई जिनके एक एक के नाम लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अंधकार में बढ़ते बढ़ते पाश्चिमात्यों का हाथ पकड़ लिया, अब तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क है। कृपया कम से कम ये न करके थोड़ी नजर अपनी ओर करें और इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। कल आपको ये और बताएंगे सारे चक्रों के बारे में, सब रटवट लीजिएगा। इसमें कितने चक्र हैं, कौन से डीटीज कहाँ बैठे हैं, क्या है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जानने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आशा है आप लोग सब आत्म साक्षात्कार करें। लेकिन आज ये क्रांति के दिन है, जबकि घर में बैठ के और घंटा बजा के पूजा करने वाले नहीं, आज सामूहिक तरीके से सहयोग करना होगा। सामूहिकता में ही आप सहयोग में बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जान लीजिए कि जो लोग, बहुत लोग कहने लगे कि हम तो माँ आपसे दीक्षित हो गए, और फिर यहाँ दीक्षित कहते, दीक्षित हो गए और आगे क्या, हम घर में बैठकर आपकी पूजा कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको सामूहिकता में उतरना चाहिए। अब जरूरी है कि हम लोग कुछ पैसा वैसा लेते नहीं, क्योंकि पैसे से तो भगवान मिलता नहीं है, और ऐसी कोई बड़ी भारी आलीशान हमारे पास जगह नहीं, जैसा कि हॉल है, वहाँ एयर कंडीशन है, आप आइए तशरीफ रखिए और पार हो जाइए, ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन अपने अहंकार को छोड़ के और अपनी मोटरों को छोड़ करके नंगे पांव आपको आना होगा और पाना होगा। जैसे ज्वालामुखी में अकबर खुद देवी ज्वालामुखी पर सोने का छत्र चढ़ाने गए, बहुत बड़ा छत्र, नंगे पांव गए। उन्होंने सोचा कि सब मेरा ईगो खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, और छत्र चढ़ाया। लेकिन उस वक्त देखा कि और सब लोग जरा गरीब हैं, तो कहने लगे तुम्हारे तो बस का नहीं है कि ऐसा छत्र चढ़ाए, इसलिए मैं दिल्ली से देवी पर छत्र चढ़ाने आया। उसी वक्त ज्वालामुखी ने अपने दर्शन दे करके उस छत्र को भस्मसात कर दिया। आज भी वो छत्र लोहे के रूप में पड़ा हुआ। ऐसे ही है, नम्रता पूर्वक पाने की इच्छा से आप आइए, कोई भी उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए, सादगी से आए और इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपका धन है, ये आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है, आपका सब कुछ है, सिर्फ हम आपको देने हैं। पर जैसे कि माँ का होता है कि साम दाम दंड भेदनी थी, जो बन पड़े उससे भाई लो, ये काम माँ ही कर सकती। अभी कृष्ण होते तो सुदर्शन चक्र निकाल करके 25 की गर्दनें उड़ा देते, और ईसा मसीह होते तो अपने को क्रॉस पे लटका लेते, मोहम्मद साहब होते तो तलवार निकाल लेते। उससे क्या काम होने वाला है? सबूरी की बात है, हमारे पास सबूरी बहुत है, पर आप में आतुरता होनी चाहिए, और परमात्मा से अगर ये काम बन जाए, अगर 20 योगी बन जाए तो आपका बंगाल देश सोनार बंगाल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अनेक वाक़े आपके चरण। पर आजकल की जो 420 है और आजकल की जो उथली प्रवृत्तियां, उससे बाज आइए, उससे बात आए, गहनता में उतरिए।
परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और उस सुबुद्धि में आप परमात्मा को प्राप्त करें। कल फिर एक बार लेक्चर होगा, जबकि हो सकता है आप सब ठीक तरह से, पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी बन जाए। हाँ, इसके बाद अब साक्षात्कार का प्रोग्राम होता है। कल आधे लोग उठ के चले गए कि पता नहीं क्या बात थी, तो इसके बाद आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम होगा। इसलिए अगर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, 5 मिनट आप बाहर हो आइए, लेकिन प्रोग्राम के वक्त आप न उठिएगा। Just going for outside for 5 minutes. Huh? Yes, have you got? I've got it in her purse. Fan here. Fan. It's become hot, so people are going out. Not too cold, it's too hot. Huh? It's not too cold, it's too hot. Yes, it was too cold. I only felt it leaving the building. Uh, I felt it being very hot. yeah. So I felt I felt it when I came in, and I was sneezing actually at the beginning. Of course, it cannot be like London, isn't it? Cannot be like. But to achieve even this temperature is great, I think. कहेंगे कि मैं स्वयं का गुरु हूँ। हे देवी माँ, मैं स्वयं का गुरु
Most of them are coming back, so let's wait. See, they may not be. Into habits tonight. So it's better to wait for them. Left we should be stupid. And very, very good people too. Very good people too. Some seats are and that's all. Some are gone. अब आप लोग आ जाइए सब। हम तो रात भर बैठे रहेंगे, लेकिन आपको ही दिक्कत होगी। अब जैसे बताया गया है कि अगर आप डालें तो अच्छा रहेगा, और दोनों पैर जमीन पर समान खा जाए। कुछ भी नहीं करते और अपनी हथेली पे देख रहिए, वहीं ठंडा आएगा। आकाश काम कर रहा है इस समय। कि मां में कुछ टेम्परेचर है उसका। आपसे बताना है कि आप परमात्मा के मंदिर, अब दोनों हाथ सामने करेंगे। आपको बनाया है, छाट छाट कर योनियों से दोनों हाथों पे आंख खोल के देखिए इस मनुष्य स्थिति कि धरती माँ ने हमें कुछ दिया या नहीं दिया। विशेष कर इस महान अगर हाथों पे ठंडा आ रहा है तो गुण दे आपका जन्म हुआ है, 4 वर्षों की, और गर्म आ रहा है और तो गुण नहीं दिया। ये पहचान जन्मों की। गर्म गलत है, ठंडा आपसे शुद्ध है, पवित्र है। यही गंगा जल है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर। क्योंकि हम इस मामले में जानते, इसलिए हम अपने प्रति ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए, पूरी तरह पहले क्षमा करते हैं। हे भगवान, क्या यही ब्रह्म शक्ति है जिसके लिए दुनिया परेशान है? ना कि क्रोध। मंदिर मस्जिद जाके गंगा स्नान करके भी नहीं मिलती। क्या यही महाकुंभ की शक्ति है? क्या यही हमारी पढ़ाई में हमको अच्छा करेगी? ऐसी किसी भी न्यूनता की भावना को अपने हृदय से पूर्णतः निकाल दीजिए, पूरी तरह से इसको निकाल दीजिए। भविष्य में किसी भी असाध्य रोग को इसी से ठीक करेंगे? अब ये जो हाथ है, कल बताया था अगर ठंडा बढ़ता है, ये बात सिद्ध हो रही है, आपकी आत्मा कर रही है
क्योंकि आत्मा को कल अनुभव आपको कर इस पर सकते हैं, लिख बताऊंगी नहीं मैं सकते। कैसे क्या यही रूह तीन है? नाड़ियां हमारे कुरान शरीफ में अंदर लिखा है, कार्यान्वित होती जब हैं हाथों पे और रूह किस आएगी प्रकार तो जबान हमारे बंद हो जाएगी। अंदर आंख खोल के देखिए, बीमारियां आदि बहुत इकट्ठी बच्चे हो मगन हो जाती जाते हैं। ऊपर देखिए आंख हैं। खोल ये के, हाथ इच्छा हाथों की तरफ शक्ति का है, माने तो ठंडा आपको बढ़ रहा इच्छा है, करनी चाहिए तो ये रूह आपकी कि हमें सिद्ध कर रही है, प्रूफ कर रही है कि मैं आत्म तुम्हारे साथ साक्षात्कार हूँ। हो जाए। अब तुम्हें कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, ना गंगा स्नान करने की। और इसलिए हाथ मेरी ओर इस तरह से, आप अपने घुटने पे ही अब इस तरह से गोद में ही आराम से रख लीजिए। कोई अपने शरीर को तकलीफ देने की बात नहीं, लेकिन एकदम से ही बिल्कुल ढीले पड़ के नहीं या बहुत तान कर नहीं, बीचों बीच सीधे होकर के बैठिए। और ये हाथ हमारी क्रिया शक्ति है, इसलिए इस हाथ को हम इस्तेमाल करेंगे उस क्रिया के लिए जिससे हम अपनी कुंडलिनी का जागरण करना सीख लें। हालांकि ये कार्य सब अक्रिया में होता है, ये सब चीज अंदर ही अपने आप जागरूक हो करके जीवंतता से ही शुभ लाभ देती है। इसके लिए कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं, पर इस क्रिया से जैसे कि आप स्वीकार करते हैं कि आप आत्म साक्षात्कारी होना चाहते हैं, इसलिए जैसे हम नमस्कार करते हैं उसी प्रकार एक ये हाथ का चलन वलन करना होगा, जिससे आपकी कुंडलिनी जो आपकी माँ है, सबकी वैयक्तिक माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है, वो समझ जाएगी कि आप आत्म साक्षात्कारी होना चाहते हैं। क्योंकि सारे बुद्धि का स्रोत जो परम बुद्धि है वही कुंडलिनी है। वो सब कुछ जानती है, वो समझती है, वो सब व्यवस्था करती है और वही सारा कार्य करती है। अब आप ये हाथ मेरी ओर करें और ये हाथ अपने अनेक चक्रों पे किस तरह से रखना है वो मैं आपको बताऊं। थोड़े से समझदारी से आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एक तो हृदय में हमारे आत्मा होती है, इसलिए एक बार हृदय पे हाथ रखना होगा। ये हाथ पूरी समय हमारी तरफ, दोनों पैर समांतर, और उसके बाद ये हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में रखना होगा। सब काम हम लेफ्ट साइड में करें, वो भी राइट हैंड से। उसके बाद ये हाथ निचले हिस्से में पेट के, वो भी लेफ्ट साइड में। फिर यही हाथ ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पर ऊपरी हिस्से में ये गुरु तत्व का चक्र है। उसके बाद फिर हृदय पर, उसके बाद ये हाथ इस जगह गर्दन में। This is a wonderful festival started by Shri Krishna a long और इस time तरह से back. गर्दन मोड़ लेनी है। उसके बाद ये हाथ माथे पर या जिसे कपाल कहते हैं उस पर इस तरह से रखा जाए, आड़ा। उसके बाद ये हाथ आज्ञा चक्र की पिछली खिड़की पर इस तरह से छोड़ के सर को पीछे तौल लिया जाए उस पर। उसके बाद इस हाथ को पूरी तरह से तान करके इसका पिछला हिस्सा अपने सर पर, यहाँ पर तालू पर रख के और 7 मरतबा धीरे धीरे चलाया जाए दबा के। अब ये सब करने में आपको 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पूर्ण हृदय से करें। मैं आपको एक एक चीज़ ठीक से बताऊंगी, क्या कहना है सो बताऊंगी। कृपया आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। चश्मे वगैरह भी उतार लें तो अच्छा है, गले में कोई माला वाला हो तो उसे उतार लीजिए, जिससे कोई बोझा न रहे। आंख पूरी समय बंद रखिएगा, क्योंकि चित्त बाहर आकर्षित हो जाता है आंख जब खुली रहती है। इसलिए आप कृपया अपनी आंख बंद रखें।
जैसे समझ लीजिए कि चित्त है यहाँ फैला हुआ है, इसके अंदर से कुंडलिनी जब ऐसी चलती है तो चित्त के अंदर के ओर खींचता जाता है, और जब ब्रह्मरंध्र में जाकर के भेदन होता है उस वक्त आत्मा का प्रकाश इस चित्त में फैलना शुरू हो जाता है। आत्मा तो हृदय में है, लेकिन परमात्मा जो है हमारे सर के ऊपर, सदाशिव का स्थान हमारे सर पे, शिव हमारे हृदय में। इसलिए जिस वक्त परमात्मा के चरण कुंडलिनी छू लेती है तो सारे दूर फैली हुई सर्वत्र जिसने व्याप्त किया है ऐसी जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जिसे ब्रह्म शक्ति कहते हैं, जिसे चैतन्य शक्ति कहते हैं, उससे पहले मर्तबा हम लोग परिचित होते हैं। और आश्चर्य की बात है कि जो कुंडलिनी ऊपर आती है इससे ही ठंडी ठंडी हवा सर से आने लगती है, जिसे कि बाइबल में कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया है। और हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य ने सबने इसका शीतल शीतल सलीलम सलीलम करके वर्णन किया। उसके बाद हाथ में भी ठंडी ठंडी सी हवा आने लग जाती है। वो ठंडी ठंडी सी हवा जो आती है वो यही उत्तम भरा प्रज्ञा है, यही वो ब्रह्म शक्ति है जिसकी अभी तक हमने बातचीत की थी। सर्वप्रथम आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपकी मज्जा संस्था पर सर्वप्रथम आपको ये एहसास होता है, महसूस होता है, यही जानना है, यही विद है जो वेद का है। जिस तरह से इसे हम ठंडा या गर्म जान सकते हैं, उसी प्रकार हम हाथ पर जान सकते हैं, इन उंगलियों के किनारों पर हम जान सकते हैं कि ये ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ परमात्मा की प्रेम की शक्ति फैली हुई, और अब हम परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। अब ये सब उंगलियों पे जो आती है ये कौन से चक्र हैं और इनका संबंध कौन से चक्र से है, और किस प्रकार हमारे अंदर कौन सा दोष है और दूसरों के अंदर कौन सा दोष है, इन चक्रों को किस तरह से ठीक करना चाहिए, ये अगर आप सीख लें तो काम खत्म, फिर आपको और कोई परेशानी नहीं। लेकिन इतने जोर से पहले कुंडलिनी ऊपर आती कि आपके दोष वोष कुछ दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। तो फिर कुंडलिनी वहां जाती है और उस जगह कार्यान्वित होती जहां कोई सा भी अभी ऐसा प्रश्न रहा हुआ हो या कोई ऐसी कमी रह गई हो जिसे ठीक करना। फिर उस कुंडलिनी को कैसे उदीयमान करना, ऊर्ध्वगति पे रखना, ये आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको केंद्र पे आना चाहिए। कोई लोग तो 7-8 दिन में ही बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई लोग 1-आध महीने में होशियार हो जाते हैं, पर ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए। नहीं तो जैसा कि एक बीज है उसको अंकुर फूट जाए और उसके बाद वो बेकार हो जाता है, इसी प्रकार एक आत्म साक्षात्कार भी बिल्कुल बेकार इंसान, हालांकि वो आत्म साक्षात्कारी है किंतु वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब आपके अंदर प्रकाश आया, जब आपका दीप जल गया, तो दीप का काम होता है प्रकाश देना। अगर आप प्रकाश नहीं दे सकते तो ऐसे दीप को प्रज्वलित करने से भी क्या हुआ, उससे क्या फायदा हुआ। लेकिन जब आप दूसरों को प्रकाश देते तब आप वास्तविक में, जिसे चिदानंद कहते हैं, उसमें उतरते। उस वक्त आपको पता होता है कि आप आनंद के सागर में डूबे चले जा रहे हैं। कल आपको मैं एक के बाद एक इसकी क्या क्या स्थितियां आती उस पर भी बताऊंगी, और हो सका तो आपको चक्रों के असंतुलन से कौन सी बीमारियां होती ये भी कोई डॉक्टर बताएंगे। लेकिन आज इतना समझ लें कि पहले अनुभूति कर लीजिए, उसके बाद आगे की बात। आप सब लोग कृपया सब लोग आँख बंद कर लें और दोनों पैर जमीन पर समांतर रखें। अब लेफ्ट हैंड हमारी हो रही, राइट हैंड हृदय पे रखकर अब आँख बंद कर लें। और पहले सबसे पहले जाने कि आप कोई दोषी नहीं है,
बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि वही चक्र बार बार काट रहा है मुझे, इसलिए मैं कह रही हूँ आपने कोई दोष नहीं किया, आप में कोई खराबी नहीं है। और ये भी नहीं सोचना कि हम के लिए तैयार नहीं है, ये बड़ा कठिन काम, कोई कठिन काम नहीं है, होगा किसी के लिए, हमारे लिए नहीं है और ना आपके लिए भी है। इसलिए इस तरह से अपने को दोष में न समझे। हमारे बातचीत में भी कोई ऐसी बात हो गई तो उसे क्षमा करें, लेकिन अपने को पहले क्षमा करें। बड़ी बुरी तरह से ये चक्र पकड़ रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहूँगी, किसी भी दोषारोपण से आरोपित होकर के आप किस तरह से परमात्मा के साम्राज्य में जाएंगे। इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी नहीं हूँ, दोषी नहीं हूँ 3 बार कह के आप अपना हाथ हृदय पे रखें। आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें, जोर से भी न बंद करें और आधी में न अधखुली न रह जाए, सर्वसाधारण आंख बंद कर लें। हृदय पे हाथ रख के एक मूलभूत प्रश्न आप पूछें, श्री माताजी क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार ये सवाल अपने हृदय में पूछें। This one will start from $1, then $100. You see, the other way around. But he told him first thing that क्या माताजी मैं आत्मा हूँ? अब दूसरा सवाल जो कि इसके साथ ही चलता है, अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। गुरु तत्व का चक्र जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर पेट के ऊपरी हिस्से में दबा कर रखें, हाथ दबाकर यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 मर्तबा पूछें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? अब इस राइट हैंड को आप पेट के निचले हिस्से में ले जाइए, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर दबा कर रखें। यहाँ पर शुद्ध विद्या का स्थान है, जिस विद्या से परमात्मा की सारी शक्ति चलायमान होती है, वो चक्र यहाँ है। लेकिन मैं आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने कहा था जिसे जाना है चले जाएं, लेकिन सहयोग में जब आप बैठे हैं तो उसका मान करिए। ये नहीं कि जब कोई ध्यान हो रहा है तब इधर उधर बातें करें या इधर उधर देखें। अब ये शुद्ध विद्या का स्थान है, ये बहुत शक्तिशालिनी विद्या है और सारी विद्याओं की अधिष्ठात्री है। इस पर अपना राइट हैंड दबा कर रखें, जो कि पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आप 6 मर्तबा मुझसे कहें कि श्री माता जी हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए, कारण कि आप स्वतंत्र हैं और मैं आप पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार की मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इसलिए आप कृपया ये कहें 6 मर्तबा, श्री माता जी हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब ये राइट हैंड आप फिर से उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें, जहां पर के गुरु का तत्व है। यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि कुंडलिनी का जागरण शुद्ध विद्या मांगते ही शुरू हो गया, लेकिन इसको अब इस गुरु तत्व के चक्र से गुजरना है। उसके लिए आवश्यक है कि आप अपना आत्मविश्वास प्रदर्शित करके कहें 10 मर्तबा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ।
श्री माताजी मैं स्वयं का गुरु हूँ 10 मर्तबा, क्योंकि यहाँ पर पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं, वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। who come to me, their eyes go on like this when they close their eyes. They cannot keep it shut. There are some people, when they open their eyes to me, they just keep the eyes open. They just cannot close it. Both are in trouble. The ones which are just keeping the eyes open all the time are the people having supraconscious minds. And those who अब ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा ये दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। उनकी क्षमा की शक्ति प्रचंड है। उसके आगे हम कोई भी ऐसा दोष नहीं कर सकते हैं जो उसमें पूरी तरह से भूल न जाए या भस्मीसात न हो जाए। इसलिए ये सोचना कि हम दोषी हैं, हमने ये गलती की, ये बहुत गलत बात है। तो कृपया ध्यान रखें कि आपने कोई भी दोष नहीं किया, कोई भी गलती नहीं की, कोई सी भी जो पिछली बातें हैं, गत बातें, उनको एकदम उन्हें भूल करके आज वर्तमान में इस क्षण को आप समझ लें कि आप आत्मा है जो शुद्ध है और निष्कलंक है। अब इस हाथ को उठा करके गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण होता है उसे आगे से पकड़े, आड़ा हाथ करके, और पीछे की ओर अपने मेरुदंड को छूते हुए पीछे की ओर अपनी गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। यही वो चक्र है जिसके लिए मैं बार बार कह रही हूँ आपसे। यहाँ पूर्णतया आत्मविश्वास के साथ फिर से कहें कि माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं, श्री माताजी मैंने कोई गलती नहीं की, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, ऐसा कहें। गर्दन मोड़ दें राइट साइड में, गर्दन राइट साइड में मोड़ के और हाथ पीछे की ओर ले जाएं और पूर्ण शक्ति से कहें कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। 16 मर्तबा कहना होगा। ये श्री कृष्ण का स्थान है, यहाँ 16 कलाएं हैं। Majestic raga. I always felt on Veena it would sound better because it has much more resonance than any other instrument. And the darbar he played, really he made whole darbar full. Also the raga like Malcolm's. All these ragas are very majestic ragas. Better played on Veena than on Sita. See how many fingers he used. अब आप अपना हाथ माथे पर रखें, आड़ा रखें माथे पर, और माथे पर हाथ रखें, दोनों तरफ से दबाएं जैसे सर में दर्द होता है। ये आज्ञा चक्र की सामने की खिड़की है।
यहाँ पर आपको पूर्ण हृदय से कहना होगा, कितनी बार की बात नहीं, कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, पूर्ण हृदय से। अब कोई कहेगा कि मैं तो कर नहीं सकता माँ क्षमा, लेकिन आप मानिए कि क्षमा करना न करना दोनों ही मिथ्या है। किंतु अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप दूसरों के हाथों खेल रहे हैं। इसलिए एक बार कह दीजिए कि मैंने सबको क्षमा कर दी, देखिए कैसा बोझा उतर जाएगा। अब आप ये हाथ अपने सर के पीछे के हिस्से में ले जाएं और गर्दन को पीछे की ओर झेल लें। यहाँ पर आप अपने भी समाधान के लिए कहिए कि श्री माता जी, अगर हमने कोई भी गलती परमात्मा के विरोध में की हो, उसे क्षमा कर दीजिए, या परमात्मा से ही क्षमा मांग लीजिए अपने समाधान के लिए। लेकिन अब मैंने ये गलती की, वो गलती की, ये गिनते नहीं बैठना। अब आप अपना हाथ पूरी तरह से तान लें और तान करके इसका तलुआ जो है इसे बराबर अपने तालू पर रखें। तालू से गर्मी निकल रही है बहुत लोगों के, कोई हर्ज नहीं। उसको फिर जोर से दबा करके और 7 मरतबा बहुत धीरे धीरे इसकी त्वचा को, इसकी चमड़ी को आप घुमाइए। अब ये हाथ नीचे ले लीजिए धीरे से, धीरे धीरे आंखें खोलें और हमारी ओर देखें निर्विचार में। अब देखिए अधिकतर लोगों के कोई विचार नहीं आ रहा है। निर्विचार समाधि इस तरह से संपन्न होती है क्योंकि आज्ञा चक्र को जब कुंडलिनी लांघ जाती है, जिसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी सविस्तार। अब आप मेरी और लेफ्ट हैंड जरा उठा के ऐसे ली, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड सर के ऊपर एक 3-4 इंच पकड़े और खोजें यहाँ कुछ ठंडी ठंडी हवा आ रही या गर्म आ सकती है। यहाँ पर किसी किसी के बहुत ऊंची निकल आती है कुंडलिनी, लेकिन तो भी 4-5 इंच पे आप खोजिए। अब यह हाथ, इसको ऐसा करें। अब इस हाथ से आपको अपना सर्टिफिकेट देना है, आप ही को कहना है कि आपके आ रही नहीं, कोई नहीं कहेगा आपके लिए। आप देखिए आ रही है ठंडी हवा धीरे धीरे। अब फिर इस हाथ को मेरे और करिए और देखिए क्या ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर फेंक के, गर्दन ऊपर फेंक के सवाल किया जाए, क्या माँ यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या माँ यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? क्या यही वो रुतम भरा प्रज्ञा है जिसे कि रूह कहा जाता है? 3 बार सवाल पूछ करके आप हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर,
सर में से या हाथ में से ऐसे है, दोनों हाथ। काफी लोग पा गए, धन्यवाद। बहुत लोगों ने इसे पाया। जो लोग कल आए थे वो आसानी से पाए, और भी कल आइएगा सब लोग। जिन्होंने नहीं पाया वो भी पा लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। किसी के एक हाथ में आएगी पहले, फिर दूसरे हाथ में आएगी, किसी के सर में आएगी, लेकिन ये आपका अनुभव है। अब जिनको नहीं आया है इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोई दोष है, किंतु हो सकता है कि कोई न कोई जगह कुंडलिनी रुक गई है, सो उसको फिर से एक बार चालना कर देंगे, और आशा है आप सब लोग पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी हो जाएंगे। हमने कल भी कहा था और आज भी कहेंगे कि हमने आपको अभी तक कुछ दिया नहीं, तो आप हमारे पाँव क्यों छूइएगा। इस वक्त हम आपको कुछ देंगे, तब फिर आपका सब कुछ स्वीकार्य है। Of the discourse, kindly consented to be with us again tomorrow evening, as she told you. For those of you who wish a deeper and a more meaningful understanding of the Kundalini, you are certainly invited to be back tomorrow. As you know, the cards are at a premium. It is very difficult to accommodate everybody, but the practice that have followed yesterday and today has been that those who did cards waited at 6:30, and every single seat that was made available to those people who did not have the good fortune to have cards. So we shall look forward to all of us being together to enjoy this experience tomorrow. Just to inform you that there is a provision on the back of the pass which you have with you, in which you can enter your name and your degree of further interest in Saha Yoga. Once you have entered your interest in Sahaja Yoga, there is a box outside in the lobby into which you may drop it, so that we can then correspond with you about your further or your wishing to take it up as a meditation practice. The souvenirs have been issued. Souvenirs tomorrow are fresh. Those members who do not have them today will obviously take them when they come to the hall. I'd like to take the opportunity on behalf of all of you to thank Mataji for having spent this evening with us and having such a great experience for all of us, and to pray that she will be with us again tomorrow many, many times in the presence of this truly lofty experience. Could we thank all for having come here? Thank you very much. Good night. And now, लक्ष्मण श्री माताजी नमो। और वही लक्ष्मी नारायण आकाश में जाएगा, तो फिर वो आकाश में वो अपनी शक्ति सभी नस नाड़ी को छोड़ती हुई बाहर आ जाती है, चक्र फिर बंद हो जाता है। अगर हमारे अंदर वो क्वालिटी आ गई है उसकी, तो वो शरीर से बाहर रमण करना चाहिए। रमण करने का मतलब है जो भी आप मांगोगे वो ही देगी। और यहाँ कोई हृदय से मांगे कि माँ अब हर घर में कुंडली माँ का सम्मान,
जो सहयोगी हैं उन सबकी इज्जत हो, पूरे संसार में माँ जो सहस्त्रार के सहयोगी हैं उनकी पूजा हो, क्योंकि जब माँ ने आपके शरीर को दिया है और ये शरीर आपका अपना नहीं है जो आप नाम लेते हैं कि मैं ये शरीर श्री माता जी निर्मला देवी आपका अधिकार समाप्त और हमें माँ जैसा बोलना है, माँ ही जैसा चलना है, जैसे हमारी माँ जैसा ही प्यार करना, तब ये शरीर निर्मला देवी कुंडली माँ का है। श्री माता जी पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में नाभि को शुद्ध कर इंसान, दुनिया का हर इंसान संतोषी, अपना भी अधर्म है ये सब समाप्त हो। और पूरे विश्व के सहयोगी एक गुरु सदगुरु रूप में उभर करके आए और पूरे समाज, देश और संसार के सामने खड़े हुए। माँ हर सहयोगी को पूर्ण गुरु पद दीजिए, हर माँ बहन बेटी को पूर्ण गुरुवी पद दीजिए। उनके खाने से, बनाने से, बोलने से कुंडली माँ का जागरण, जहाँ भी वो जाए माँ वही मौसम वातावरण उनके अनुकूल हो। जिस घर में जाके बैठे उस घर का वातावरण उन्हीं के अनुकूल। माँ ये भौतिकवाद, ये ट्रस्टवाद, ये सेंट्रलवाद अब सब समाप्त हो। केवल और केवल सहस्त्रार के सहयोगी सहयोगिनी पूरे संसार को बदलने का कार्य, जैसे माँ आपने साकार रूप में पूरी दुनिया में विश्व निर्मल धर्म स्थापित, ऐसे माँ आपके सब बच्चे आप जैसे बन तो पूरे संसार को बदल, पूरी मीडिया केवल सहयोग को दिखाए और कैसे दुनिया को बचाया जाए सहयोग द्वारा। Наше обычное состояние – это какой-то излишне напряженный, резкий образ жизни. Early in the morning, we read the newspaper, which is the most horrible thing. जुडिशरी है सब बंद हो, जितनी हॉस्पिटल है सब बंद हो, केवल आत्म साक्षात्कार का बोलबाला। दुनिया का कोई भी इंसान पैसे के लिए तंग ना हो, इच्छाओं के लिए तंग ना हो। हर इंसान के घर में शांति हो, प्रेम हो, भक्ति हो, श्रद्धा। कुंडली माँ का ही बोलबाला हो। माँ बिना कुंडली जागरण के ना किसी का व्यापार काम हो, ना गृहस्थी हो। कुंडली माँ का सभी जागरण, सबके अंदर इच्छा जागरण। हर इंसान आत्मा के आनंद में आत्म साक्षात्कार की शक्ति, हर कार्य खुशबू आए
तो चेतन किया। Ekadasha force is centrifugal by which they are thrown out. Sahajoga हमारे जीवन का हर पल तेरे अनुकूल, हमारी मां कुंडली के अनुकूल हो जाए। इस शरीर का मां रोम रोम जैसा तू चाहती है वैसा ही चल। ग्रह लक्ष्मी साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री ग्रह लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मां तू ही ग्रह लक्ष्मी है, तू ही बेटी है, तू ही मां है और तू ही पति। सब कुछ तू ही। मां हर घर में, दुनिया के हर परिवार में मां ग्रह लक्ष्मी के रूप में सबको खुश करे। बेटी के रूप में खुश करे मां और मां के रूप में हर परिवार में खुश आता है। राजलक्ष्मी साक्षात। is in a way very important. साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला नमः। त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री कुंडली मां नमो नमः। अब सभी लोग जो भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इस नाभि को रोजाना 5 मिनट कम से कम वाइब्रेशन देने हैं, क्योंकि हर आदमी हर से जो भी यही रुका हो। अभी साथ को So nice to us. त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री लक्ष्मी मां नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गुरुपद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री कुंडली मां नमो नमः। पूरे हृदय से मांगे कि हे कुंडली मां, अब तेरे फोटो को दुनिया ने बदल दिया है,
में माँ का पूर्ण रूप था और चेतन था, आज वो फोटो पैसे वालों ने बदल दिया। अब माँ कुंडली माँ के रूप में आशीर्वादित करो हर इंसान, 500 तत्वों के रूप में हर इंसान को आशीर्वाद। माँ दुनिया के हर इंसान को गुरु पद दीजिए जो जन्मों से गुरु, सदगुरु पद दीजिए, सदगुरु भी पद दीजिए। वो है स्वादिष्टान चक्र। माँ तेरे ये ही चक्र पीले रंग का संस्कार दिखाया है जो कि कुंडली माँ की का गति आशीर्वाद करता है। और इस चक्र से हमारी जो राइट साइड की नाड़ी है जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, पूर्ण आशीर्वाद चित आकाश में और गुरु तत्व पे रहे और बार बार माँ से आकाश से मांगे कि माँ आ जाओ मेरे गुरु तत्व। पूरे परिवार को माँ गुरु तत्व जागरूक, पूरे समाज का जगा, पूरे देश का गुरु तत्व जगा। हज राजनीति हर इंसान जो भी है उसके अंदर गुरु तत्व जगा। समाज के बारे में अच्छा सोचे, अपने शरीर के बारे में। पाचन क्रिया ठीक, वो आकार नहीं है और आपके क्या दाएं हाथ सामने करेंगे, बाएं हाथ लीवर पे रखेंगे। माँ इंसान के अंदर विश्व धर्म, कुंडली माँ का धर्म, और किसी चक्र पे नीचे ध्यान नहीं लगाना है, उससे परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि अब कुंडली माँ जो है वो सहस्त्रार और आकाश में रहना चाहती है और आपकी प्रार्थना अगर हृदय से है वो वापस आएगी और आपके शरीर के काम श्री माताजी श्री निर्मल कुंडली मां नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु निर्मल धर्म साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री कुंडली मां नमो नमः।
पूरे हृदय से मांगे कि श्री माता जी अब जितने भी भगवान के नाम पर धर्म बने हुए हैं अलग अलग, ये सब समाप्त, केवल और केवल और केवल कुंडली माता। साकार रूप में मिलावट कर सकता है इंसान, लेकिन करने से ही हम जान लेंगे कि हम इस मानव स्वरूप से भी एक कोई कह सकते, क्योंकि जब माँ साक्षात तो पूरे विश्व की कुंडली, हमारा शरीर कुंडली कार्य कर रहा है। देखने से कुंडली उठती है, आपके शरीर को देखने से दुनिया का लाभ होता है। पूरे संसार के सभी गुरु वली, फादर, गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं, वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और to do everybody trying to pranayam. There is no need to do pranayam or anything to stop it. आपको आता है कोई संस्कृत और हर समय एक नई नई चीज। अब उन्होंने निकाला कि आयुर्वेद के लिए इनकी क्या जरूरत है? त्वमेव साक्षात् श्री कुंडली माँ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री कुंडली माँ नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री इस प्रकार कुंडली कुंडलिनी साक्षात् सहस्त्रार्थ में आने पर उसे चाक कर माताजी, श्री कुंडली माँ नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुंडली माँ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री कुंडली माँ नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुंडली माँ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री कुंडली माँ नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुंडली माँ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री कुंडली माँ नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुंडली माँ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री कुंडली माँ नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुंडली माँ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री कुंडली देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुंडली माँ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री कुंडली माँ नमो नमः।
त्वमेव साक्षात् श्री कुंडली माँ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री कुंडली माँ नमो नमः श्री कुंडली माँ नमो नमः श्री कुंडली माँ नमो नमः। अब इस मंत्र को जितना आप लेंगे उतना ही माँ कुंडली तो आशीर्वाद देते निराकार इनका चित्त ज्यादा है वो लास्ट माता जी मंत्र भी हर चीज अब आपकी कुंडली ही आपको मंत्र से बदल और कुंडली माँ बहुत शांत है और जब तांडव में कर आ जाती है तो इंसान तांडव में कर तांडव ऐसा तांडव नीचे गिरी कितनी नीचे पैरों से धरती माँ पवित्र सिंहासन वातावरण और अगर उसको कष्ट हो जाए पूरे देवताओं का सिंह जोड़ने लगता जो कष्ट देने वाले हैं वो परम चेतन जो देवताओं का सिंहासन खुलता है फिर वो बक्से नहीं जाएंगे और बहुत सारे सहयोगी वो सब यही कहते हैं ध्यान में नहीं था ध्यान में नहीं उनको आती है जो संतुलन हमको ध्यान उस समय करना चाहिए जब हमारा शरीर रिलैक्स संतुलन हम खुश बहुत सारे हम सहयोगी हमारे कर्तव्य को देखते हैं हम इस अवस्था में ध्यान हर सहयोगी यही चाहता है कि मेरी पत्नी ध्यान करा मेरा पति हमारे घर में सब ध्यान ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जो संत है वही ध्यान करते हैं और वो दुनिया को बदल अगर हम ये सोच के ध्यान करें आपका ध्यान भी वो ध्यान आपकी स्थिति से करेंगे वो आपको देख रहे हैं कि आप कितने आदमी को सताते हैं अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो ध्यान क्योंकि आपकी कुंडली आपकी कुंडली के अनुसार परिवार चलेगा नहीं चलेगा तो उन्हीं की कुंडली को बढ़ने नहीं देगी आगे रोक देगा क्योंकि भगवान की शक्ति इसलिए आई है केवल ये भगवान को निभाएगी दुनिया के कार्य आप चलेंगे बहुत संतुलन में चलेंगे अति भी नहीं होगी तो इति भी नहीं
हमारी उन सबसे गुजारिश है जो ध्यान में नहीं उठ सकते तो अपना जब दिन में आराम हो जाए, शरीर खुश हो, उस समय वो ध्यान करें। ये जितने करेंगे 4:15 बजे ही, 4:15 बजे वही ध्यान कर सकते हैं जिनका शरीर संतुलन में है, जिनकी इच्छाएं संतुलन में है, जिनका कर्म संतुलन में है और जिनका खाना संतुलन में, जिनकी कमाई संतुलन में। केवल वही 4 बजे का ध्यान कर, दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे, नींद आएगी। जब आपका ध्यान परफेक्ट हो, आपको ध्यान के बाद भी नींद नहीं। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है, शरीर में कोई तकलीफ है, तो हमें ध्यान उस समय नहीं करना है, हो जाता है। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाना है, एकदम से ये शरीर चलेगा नहीं। जब संतुलन में रहेंगे तो सुषुप्त नाड़ी जब चलती है तो देवता 24 घंटे हमारे शरीर में रमण, इस शरीर में फिर वो आना चाहते हैं। आकाश को छोड़कर आपके शरीर में विश्राम करना चाहते हैं। इस शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसको ज्यादा सताना नहीं, ज्यादा काम में लगाना नहीं और ज्यादा निठल्लू भी नहीं रहना। काम करना है सहयोग को ज्यादा और अपना बुनियादी काम कम। इच्छा करनी है, सहयोग भी करनी है कि कितने लोगों को मैंने आज परमात्मा का आशीर्वाद दिलवाया या नहीं। और दिन में एक ही बात चेक करनी है कि मेरा चित्त कितने मिनट, कितने घंटे परमात्मा के निराकार हो आनंद में। हर पल ये अपने को चेक कर, हर पल पूछना है कि माँ तू कहाँ है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना खाना नहीं खा सकता, सो नहीं सकता, चल नहीं सकता, अपना काम भी कोई है वो भी तो नहीं कर सकता। तो इसको अनन्य भक्ति हो, जहाँ केवल तू ही तू रह जाए और मेरा और मैं समान। तो आपसे कोई चीज ले भी रहे हैं परिवार को तो छोड़ दो, कोई पैसा नहीं दे रहे तो छोड़ दो, कोई रोटी नहीं दे रहे तो छोड़ दो, क्योंकि अब आप संत हैं, गुरु पढ़ते हैं और गुरु भी पढ़ते हैं। क्योंकि जो लेंगे वो उस चीज को इस्तेमाल नहीं करता। जितना आप छोड़ते जाएंगे नाभि और गुरु तत्व बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो हमारी कुंडली नाभि से ऊपर नहीं जाएगी। हिंदुस्तान में नाभि का बहुत ही ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा। हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस फोटो में माँ की वाइब्रेशन है, इसमें इस वाणी में वाइब्रेशन है माँ की। क्योंकि दुनिया ने इसको काट पीट करके काफी गड़बड़ की है और जिन्होंने काटा है इस वाणी को उनका ही अवगुण वाणी में आ गया। माता जी का गुण उसमें नहीं रहा। क्योंकि जब हम किसी कपड़े पे, सफेद कपड़े पे कलर चढ़ा दें, सफेद कपड़ा नहीं कलर ही
ब्रह्मा साकार में थी तो सफेद कपड़ा, निराकार में चली गई, सबने उनके कपड़े को अपने हिसाब से बदल दिया। किसी ने उस कपड़े को रख लिया, पीला रख लिया, और किसी का लाल रख, तो वो ही गुण आएगा। इस आदमी ने अपने हिसाब से माँ के फोटो को बनाया है, उस इंसान का अवगुण उसमें आ गया है। इस एडिटर ने वाणी को एडिट किया है, उसका अवगुण उस वाणी में आ गया। इस एडिटर ने आत्म साक्षात्कार तो उसमें माँ का जैसा पहले गुण था, पहले शक्ति थी, वही गुण रहेगा। इसलिए अब हमें खुद ही अगर फोटो का शौक ही है, एक फोटो बहुत सुंदर बना, 10 फोटो ना रखें घर में, केवल एक फोटो रखें, बहुत सुंदर रखें, जिसमें ब्रह्म शक्ति हर समय रहती। ये खुद ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देख लिया कि ऑल्टर में कहीं वाइब्रेशन है और कहीं, तो हम सबको एक फोटो अच्छा सुंदर दिल्ली जाकर के हम कर सकते हैं। साकार निराकार का मतलब त्वमेव साक्षात् श्री साकार निराकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री कुंडली मां नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री साकार निराकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री कुंडला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री साकार निराकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री कुंडली मां नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री साकार निराकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री कुंडली मां नमो नमः। अब ये मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा कुंडली माँ के रूप में लें। माँ का नाम भी इसलिए जोड़ना पड़ रहा है कि बहुत सारे से बदल। अब एक सहजयोगी जो माँ में रमन करता है और माँ उसमें रमन करता है। साकार रूप जो है आपका ही है, और सहजयोगी का रूप साकार, और उसमें निराकार में जो सहस्त्रार चेतन हाथों से पैरों से और सहस्त्रार से निकलता है वो निराकार। तो अब आपका फोटो जो है वो माँ निर्मला देवी का, अब आपका फेस सब उन्हीं का है। अगर हम ईमानदार हैं तो उन्हीं का है, हम सच बोलते हैं ये शरीर इनका है, अगर आप सच का साथ देते हैं ये सब उन्हीं का शरीर है। साथ बाहर के लोग जो इस फोटो को भी देख ले चेहरे को, उनकी भी कुंडली जागरूक हो, जैसे हम दुनिया की कुंडली हो वो साकार। लोग निराकार में ज्यादा है, वो माँ को ज्यादा अटैच है, साकार में और जाना पड़ेगा निराकार। ज्यादा से ज्यादा मंत्र कुंडली करें। जब कहीं सहयोगी है तो नहीं समझते, उनके सामने निर्मला देवी का, ताकि उनका चित्त शांत रहे और वो परेशान।
हमें डिप्लोमेसी के लिए चेतन बहुत सुंदर है और टाइम का बाउंड नहीं होना चाहिए। आप 3 बजे भी ध्यान कर सकते हैं शुरू, ऐसा नहीं है कि 5:30 बजे। दुनिया के लिए हम करते हैं ताकि हमारा ध्यान तो सहजोग की दुनिया का अच्छी स्थिति है, वो हर समय ध्यान में ही मगन रहता है। हमें उसको टेस्ट नहीं जितना ध्यान बात की तैयारी करें और काफी सभी पूरे हृदय से दुनिया में से और बार 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 माँ से माँ पूरी दुनिया को बदल दो। सत्य हम सबकी हृदय से विनती है, पूरी दुनिया कुंडली कर दो, पूरे हृदय से विनती करो। अब हम सब आप ही करेंगे। और इस भवसागर में धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक महा ओम जय जगदीश। पापा जी सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माताजी, जय निर्मल माताजी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माताजी, जय निर्मल माताजी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माताजी, जय निर्मल माताजी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माताजी, जय निर्मल माताजी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माताजी, जय निर्मल माताजी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना।
उसको, माँ सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, माँ कर दिया उजियारा, कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता, इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। निर्मल माता जी, जय निर्मला जी, दिल में सदा माँ दुआ, दिल में अब मधुर सुन लो, माँ मधुर सा सुन लो, इसको देना, माँ दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबका देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश, जन संकट जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। थर्सडे जहाँ होता है वहाँ पे जाते कम हुआ, थोड़ी तबीयत थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर पूरा कम नहीं। दुख बिन से मन सुख संपत्ति घावे, आवे कष्ट तन का, ओम जय हरे। पिता मेरे शहु में स्वामी शहु में की, तुम और न दूर बिन और न दूर। Said we have had करूं मैं इसकी जय जग रे, तुम
स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म तुम सभी स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के तुम पालन कर मैं मूकामी मैं मूरख कमी कृपो हर। ओम जगदीश हरे। अगो सब के प्राणपति सबके विदयम कुम जय बंधु। अपना हाथ तुम ठाकुर मेरे पर माथे पर तुम रक्षक मेरे द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु भी अपने आप को मानते हैं वो सभी को आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका प्रैक्टिकल भी दें, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। लाइव देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो साक्षात आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय हो। बोलो अवतारों की अवतार की जय। परम पूज्य श्री निर्मला देवी माताजी की जय। तीनों लोकों की स्वामिनी की जय। 84 लाख योनियां बदलने वाली की जय। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली की जय। बोलो श्री परम पूज्य माताजी वर्तमान महाअवतार की जय। गंगा मैया की जय। प्रणाम कर
ध्यान में बैठे और हमेशा सहस्त्रार का ही मंत्र लेना चाहिए। और सहस्त्रार का व्यक्ति हो, अगर सहस्त्रार से ऊपर चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए, सहस्त्रार तक तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ माँ से पूरे हृदय से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो हमारी विनती हुई थी वो स्वीकार का मतलब है जब आपके वाइब्रेशन में है तो सभी देवता, सभी देवी गण आपसे प्रसन्न हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। हमें हमारा ध्यान आप तभी बंद होंगे जब आपको स्वस्थ आता है। किसी भी क्लास को ट्रेनिंग बना सकता है, उसके पास काम है, तो दोनों हाथ आप खोल दीजिए पूरे हृदय से। बदल दो माइक, बदल दो। जो आज हर इंसान को वो जूता निकालना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी इसमें आधा परेशानी और सुबुद्धि भी आदि तकलीफ को देती है, और जो धरती में बैठे हैं वो ब्रह्म शक्तिमान समय की चलेगी। ठीक है, और शॉर्ट्स पहन के रखते हैं और जूता निकालते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये दो चीजें ऐसी होंगी जो मेमोरी को बढ़ाएंगी और ये दो चीजें ऐसी होंगी जो मेमोरी को घटा देंगी। आपके हाथ में खेल होगा। माताजी जो समाधान आशीर्वाद दिया और जो हमें गुरु हमारे, उसके लिए हम से मुंह में हमें लगाया है। मर्यादाओं को जो विनम्रता ने निर्भीकता दी है, अब आप अपनी कुंडली मां वो सहस्त्रार से वही निर्मला देगी। ये शरीर है आपका, जैसे दूसरे की चीज को ले लेते हैं और फिर अपना ही सामान रखते हैं, दूसरे का घर से बाहर निकालते हैं। जो दुनिया का सामान था वो इसमें से निकल गया है, और परमात्मा का सामान अब उसकी मर्जी है वो इसको किस तरह से चलाए या ना। हम हृदय से आभारी है, हमारी वाणी में मिठास, हमें गलत सुनने की आदत से बचाया और गलत देखने से हमारी आंखों को रक्षा कर। आप पूरे संसार की पूरी मानव जाति को की शक्ति दी है आपने, साकार रूप में आप माँ हम सब पूरे विश्व के से हृदय से आया, योग निद्रा में सुलाया और आलस को दूर करके हमें ध्यान में मगन किया। हम जीवन का हम सभी विश्व के सभी सहयोगी हृदय से आया, हम ऋणी हैं, हमें अपने शरण में आज शरीर को अपने अनुकूल चलाना, आज की दिनचर्या में तेरे अनुकूल रहे और पूरे संसार तेरे अनुकूल हो जाए। पांचों तत्व तेरे अनुकूल। माँ इस संसार में चारों तरफ सत्युग की जय जयकार हो, जितनी भी भौतिकवाद की
वो सब समाप्त होते दिखाई। पूरी दुनिया में सत्युग में बदल, पूरा कारोबार सत्युग में बदल जाए। चारों तरफ ब्रह्म शक्ति के वातावरण, जितनी भी नशे की फैक्ट्री है, शराब की ठेके हैं, ये सब बंद हो जाए, एकदम बंद हो जाएंगे। भारत सरकार इस चीज पे नियम लागू करे, पूरे विश्व में नशीली चीजें सब समाप्त, हृदय से विनती है, स्वीकार। जय श्री कुंडली चाल का बंधन ले लें। आज शुद्ध इच्छा दी है, शुद्ध कर्म दिए संसार को, तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सहजों की सहस्त्रार पे हाथ रखो। सहजों की सहस्त्रार पे साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला बैठा रहे तो नीचे बैठो। साक्षात अभी ठीक हो जाएंगी दोनों। साक्षी भाव तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश कोटि मनुष्य इस सब
माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह अब जब आपने शुद्ध विद्या मांगी है तो मेरे घर में पूरी शांति। और देखना सुबह आप कैसे फ्रेश उठते हैं। चल रहा है, बात नहीं हो रही, जिससे बात कर रहे हो उसी की बीमारी आएगी। उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसा ध्यान हो जिससे अंग वो बहुत से लोग हैं वो से नहीं चल मोटर से मोटर दोनों हाथ सामने कर लें और 5 मिनट के लिए हृदय से प्रार्थना करें। कृष्ण माता जी, इस गांव में आपका प्रेम सबको मिले और यहाँ से पूरे कलकत्ता में, पूरे बंगाल में आपके प्रेम की शक्ति, हमारी कुंडल माँ की शक्ति, कुंडली माँ की शक्ति पूरे बंगाल में जितने भी अमानुष लोग हैं, तांत्रिक, मांत्रिक, नक्सलवादी, माओवादी, वो सब समाज, जो सबकी स्त्री हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उन सब की विजय हो पूरे बंगाल में। माँ, जो हमें आपने अपने चरण कमलों से आशीर्वाद से गुरु पद दिया है और आज हमारे शरीर में कुंडली के रूप में वास करती है, रोम से आनंदित करती है, उसके लिए माँ हमारे पास शब्द नहीं। हम कैसे किस विधि आपको धन्यवाद करें। बस हमारी एक ही विनती है कि पूरे संसार में जहां जहां भी मां तेरे प्यारे बच्चे हैं और केवल तुझको ही, अपनी कुंडली मां को ही अवतार मानते हैं और अपने शरीर को आपको समर्पित कर दिया, जिन्होंने मां अब उनको ऐसा परम पद, गुरु पद दीजिए कि उनके बोलने से संसार में बदलाव आए, उनके हंसने से पूरे विश्व में बदलाव आए, उनके हाथ के खाना खाने से पूरे हुनर भी मानव जाति में बदलाव आए
उन बच्चों की भी पूजा हो, उन स्त्री पुरुषों की सबकी पूजा हो जो आपको, केवल आपको ही मानते हैं, आपको ही शरण में रहते हैं। ऐसे जहां भी महायोगी हैं, योगिनी हैं, उन सबको आप आगे लाइए। जितने ट्रस्ट हैं ये सब बंद हो, जितने सेंटर हैं सब बंद हो। अब केवल वही लोग आगे आए, चाहे वो झोपड़ी में रहते हैं और चाहे वो बहन में, और वो दुनिया को आपने जो आशीर्वाद दिया है, देवताओं ने जो आशीर्वाद दिया है, उसको लेकर के पूरी दुनिया को बदले और पूरे संसार में अधर्म के सामने खड़े हो जाए और जो सत्य धर्म है, विश्व निर्मल धर्म, उसको आगे बढ़ाएं। और आपके इस कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए जितनी भी मीडिया है वो सब आपके चरणों में झुक जाए। जो आपके महान बच्चे हैं उनके चरण कमलों में झुक जाए और पूरे संसार में सत्य विश्राम। वहां यहाँ जो भी कार्यक्रम आप होने जा रहे हैं उनमें आपका पूर्ण आशीर्वाद है। सभी देवता हम सबके साथ फूलों की वर्षा करें और उस एरिया को, बच्चों को पूर्ण आशीर्वाद मिले, जिससे वो एक महान गुरु, महान गुरु बने और संसार को सत्य बने। हमारी पूर्ण हृदय से विनती है, देवी मां स्वीकार की, कुंडली मां हमारे विनती को स्वीकार की। हम शरणागत हैं, हमें शरणागत है मां, हमें शरण। बार बार जब भी आप बंधन में बार बार विनती करें, मां हमें शुद्ध इच्छा दी, पहली बंधन मां शुद्ध इच्छा दी, हम तेरे ही प्रेम में रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरे में मां हमें शुद्ध कर्म दीजिए, बोलने से अच्छा हो, करने से अच्छा हो और हमें चर्चा करनी चाहिए हो जाए। इस तरह से हम ईश्वर के रास्ते पे हम बढ़े तो निश्चित रूप से हमारी इंसान के पैरों से कुंडली का बहाव रहता है, वो बहुत कुछ कोटि का इंसान है, चाहे दुनिया में कहीं पर खत्म हुए और तीसरे मां हमारा चित्त फिर यहाँ से जो सवाल तेरे निराकार में हमेशा आनंद रहे, स्वयं का आनंद में रहे। अनुभव है, हमें संसार की किसी को समझ आ जाए, किसी को ना आए, बहुत सारे लोग उस पर कार्य करें तो चिताप में रहे, कहीं चले तो चिताप में। 2015 से पहले मैं मां पूरे विश्व में ऐसी संस्था है आपने पवित्रता स्थापित की है, इसके लिए हम सब हृदय से आभारी। हमारे यहाँ श्री माताजी जो हमें सुबुद्धि दी, शुद्ध इच्छा दी और ब्रह्म ज्ञान दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी। माँ जो हम सबको, पूरे विश्व को संतोष दिया है और सब दिया, उसके लिए हृदय से आभारी। श्री माताजी साक्षात्कार पे मैं आऊंगा, हमें सच बोलने की शक्ति दी, सच पे चलने की शक्ति दी और सच्चे लोगों को पकड़ने की शक्ति दी, उसके लिए हृदय से आभारी। इसलिए श्री माताजी जो हमें प्रेम की वाणी दी है, इसलिए दृष्टि दी, जब ईश्वर के नाम पे हमारे सुनने की शक्ति दी, उसके लिए हृदय से आभारी। श्री माताजी जो पूरे विश्व को निर्विचार कर दी है, हर इंसान अब तेरी तरफ देख रहा है, अपनी कुंडली मां को देख रहा है और उसी में आनंद ले रहा है, उसके लिए हृदय से आभारी। श्री माताजी जो हमें निर्विकल्प स्थिति दी है, हर समय हमारा सोते वक्त, जगते वक्त चित्त आनंद में रहता है, सहस्त्रार में रहता है मां, उसके लिए हम जन्म जन्मांतर आपके ऋणी हैं। आपने हमें चुना संसार में से अपने कार्य के लिए, अब मां हमें शरण में रखना। हम आपके मां के पेट में गए, शरीर छोटा, मां का जो मिलन हुआ, उससे जो चर्चाएं हुई, हमारा संस्कार बन गया हमारी यात्रा में। फिर हमने जन्म ले लिया, हम चारपाई पे आ गए, बेड पे आ गए,
माता पिता हमारे मिलने वाले लोगों ने जिस तरह की एक्टिविटीज हम मुझसे नहीं बोल पाए, जिस तरह की एक्टिविटीज हमारे बंद हो गई है। मैं भी थोड़ा सा राजनीतिक और व्यापारिक रूप से व्यस्त हो गया। आप सब लोग बड़ी मेहनत की और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ कैसे पहुंचे। तो आपके हृदय की पुकार थी इसलिए हम पहुंचे और हमने माँ को भी ऐसे देखा था और माँ ने बात कही थी कि जब आप मेरे तो हमारे संगत मिलकर बुरे लोगों से हमने तो गंदे विचार बन गए। नहीं समझते। आज हम सब लोग बहुत उच्च कोटि के माने बैठे हैं और साक्षात अवतार में हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम माँ के पेट में गए, आज भी ये कहते हैं नहीं पीछे छोड़ा माँ इसका समझा नहीं हमारे परमात्मा आपने शरीर धारण करके अपना कार्य करके और अपने बच्चों को आशीर्वादित करके और फिर शरीर छोड़ देते। अब उन बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो वास्तव में उस संस्कार बुरी संगत मिलकर बुरी लोगों से हमने बुरी बातें बच्चे सरकार अब होता है तो फिर जैसे ही हम पैसा देने में गए शरीर छोड़ा माँ का जो मिलन हुआ वो हमेशा जो चर्चाएं हुई वो हमारा शरीर छोड़ती है पिता आशीर्वादित करते हैं कि तेरे लिए कभी कमी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम सब लोगों को परमात्मा ने आशीर्वादित किया सहकार को। फिर हमने जन्म ले लिया, हम 4 भाई पे आ गए, बैठ पे आ गए। हमेशा गर्व करना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए जिस तरह की वास्तव में ही माँ के लक्ष्यों पे आ जाते हैं तो फिर हम ही और हम ही अपना आगे बढ़ाते हैं, हम ही अपना रहे हैं। देखो उनका शरीर बन गया नहीं, जब आपको आयुष्मान हाथों से आते हैं उनका शरीर पैरों से आते हैं उनके पैर सर से आता है सर उनका माला किसके का जो मिलन हुआ उसमें जो चर्चाएं सभी तो अलग अलग दिखाई देता फेस अंदर तो एक ही है। तो ये हमारा सौभाग्य है और आप सब लोग बहुत खुश हैं और आप सब लोग महान बनेंगे। आपकी ऐसी पूजा यहाँ को सम्मान करेगी, इज्जत देगी और उस समय आ चुका है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मीडिया पकड़ रही है सहयोग को। जिस समय पूरी मीडिया पकड़ लेगी तो आप सब लोग एक महान रूप में पूजा होगी, जैसे श्री माता की पूजा होती थी ऐसे ही आप लोगों ने ये आज से 45 साल पहले जिस तरह की जैसे मेरा हम एक बार कंडक्ट तो वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कृष्ण भगवान का मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण भगवान की बात करनी है, किसी मुस्लिम बात नहीं करनी। तो हम प्रोग्राम ले रहे थे जैसे आए हैं ऐसे सतारा की बात है, बहुत बड़ा मंदिर था। तो वहाँ सब बाल कटा के और उनकी रह थी बेचारे परेशान, कुछ जेंट्स रहे बीमार हो, वो श्री कृष्णा के मंत्र का जाप करते थे। जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमें जैसे आज आपने किया ऐसे ही बहुत सम्मान दिया। नौ शरीर के सामने जैसा हमारे मेरे जैसे सम्मान हुआ तो जैसे हम बड़े होते हैं हम जैसा हो चाहते मेरे से अच्छा हो अपनी संतानों मेरे से ज्यादा पढ़ेगा क्या मैं हमारे अंदर जो दिव्यता है वो
हमने पानी इतना क्या बस मैंने ये कहा श्री माताजी आज तो डंके की चोट में बोल रहा है और ये जवान तेरी हो जानी चाहिए, ये मेरी निकलनी चाहिए, ये मेरी बात खत्म है। क्योंकि जब बाल्टी में एक कटोरी का पानी डालो तो उसे उसमें पानी में निकाल दो, जो का तो निकल ही नहीं सकता, तो मिक्स हो गया। ऐसे ही जब हम समर्पित हो जाते हैं, अपनी कुंडली के अनुकूल हो जाते हैं, तो हम ये शरीर माई है, ये देवताओं का शरीर है। हमारा शरीर तो पहले देवता थे ही नहीं, शरीर कुंडली छुप। पूरे संसार के सभी गुरु वली फादर गुरु ग्रंथी और आध्यात्म के जितने भी गुरु और गुरु अपने आपको मानते, आज संदेश दिया जा रहा है कि सत्युग टीवी पर आप आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसका, क्योंकि विज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है, और तब आपको 51,000 के चेक से और नारियल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। में जो उसे विचार सुने उससे वो इतनी दब जाती है, उससे परतें ऐसे लग जाती है गंदगी की कि वो उसे ढक लेती है, हमें एहसास ही नहीं होता ईश्वर क्या है। और जैसे ही हम लोग ओम का जप करना स्टार्ट करते हैं, ईश्वर का स्मरण करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे जब हम जप स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे जो हरकतें, जो हमारे अंदर गंदी एक्टिविटीज हैं जो हम करते हैं, वो दिव्यता हमारे गंदे कर्मों की वजह से, प्रारब्ध की वजह से, गंदी संगत की वजह से, जो हमने देखा, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है, ये कैसे बदलाव है, इसको कौन पढ़ेगा? भाई माताजी का फोटो है, तो हनुमान जी का फोटो ऐसे शिव जी का पढ़ते ऐसे लग जाती है गंदगी की, जिसमें मेरे वायरस ढक लेती है। ईश्वर क्या है? जैसे ही हम लोग जप करना स्टार्ट करते हैं, ईश्वर का स्मरण करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जब हम जप स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे गंदी तो हम चेक कर लेंगे कंप्यूटर पे बैठ के और उसको प्रिंट निकलता है। वो दिव्यता हमारे गंदे कर्म की वजह से, प्रारब्ध की वजह से, गंदी संगत की वजह से, जो हमने देखा, जो हमारे अंदर आत्मा के जो आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है, उनको बोलने का कोई बात नहीं है, इतना खुश है, इतना खुश है। वो तो मुझे भी मालूम था कि आपके अंदर के आंसू खुशी के हैं। আমরা মনে মনে চেষ্টা করতে যে মা বুঝে যারা একবার করে ওখানে আসে, কিন্তু কোনোদিনও কাউকে বলার সাহস হয়নি কথাটা, কিন্তু মাতাজি ঠিক শুনে নিয়েছে মনের কথাটা, আর আমাদের সঙ্গে সত্যি করে দিয়েছে। সাহস হয়নি কোনোদিন যে বলে पहले दिन वो चेतन को बोले थे क्या कौन है चेतन? अच्छा ये चेतन, अच्छा मैं सोच रहा हूँ जेंट्स चेतन है, चेतन बिटिया का नाम चेतन है। अच्छा जब बोले कि क्या गुरुजी को आने के बाद से पूरा रो रही थी, दीदी आप मालूम नहीं, हम हर जगह जा रहे हैं, हमें ये नहीं है किसी की लंबी कार में जा रहे हैं और वो उसके घर में, मैं घर में इसलिए ताकि मुझे थोड़ा सा कब्जा कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं, लेकिन मैं होता नहीं। श्री माता जी कुछ करते थे लोग, लेकिन माँ चोरी से निकल जाती थी वहां से। जब लोग आते थे ना आप जैसे, कभी कभी तो रिक्शा लेकर भी निकल जाते थे, किसी को पता